हेलो हेलो गाइस, नमस्कार एंड सत श्री अकाल सबको। क्या हाल है आप सबका? व्हाट इज अप? क्या हाल है गाइस? आज फाइनल डे। लेट्स सी। आज सोल का लेट्स सी क्या, आज तो कमबैक होगा सोल का 110%। व्हाट्स अप गाइस? क्या हाल है? क्या हाल है आप सबके? दे क्या हुआ? हो गया? शाउट आउट टू आकाश गेमिंग शाउट आउट टू यू मेरे भाई। क्या हाल है गाइस? व्हाट इज अप? व्हाट इज अप? क्या हाल चाल? एक सेकेंड। क्या लगता है, क्या सीन है गाइस? कमबैक आपको क्या लगता है, बताओ? कमबैक होगा? मेरे हिसाब से तो होगा जरूर। ऑल गुड सर, आप बताओ? हम भी बढ़िया मीर भाई, एकदम बढ़िया। फूडी अनलिमिटेड दोस्त है बस ब्रो। फ्रेंड्स। हेलो जय गुप्ता भाई, हेलो ब्रो। बताओ भाई, क्या हाल है? चलो। हेलो गाइस, व्हाट्स अप गाइस? हाँ ठीक है ठीक है। एक एक जो भी आ रहा है वो पहले स्टार्ट करेगा स्ट्रीम। मैं सेम मूवीज को भी बोला था। सही है सही है। क्या लगता है ओवेस, आज कमबैक होगा तेरे हिसाब से? मेरे को तो लगता है होगा। हाँ, जीतना तो इम्पॉसिबल, कमबैक ऐसे टॉप टॉप 5 के लिए ना लड़ सकते हैं। यस। ओवेस। गेम तक समझ जी, रहे हैं कि हाँ जी। जो कैसे क्या करना है, तो होपफुली आज कर लेंगे। कैमरा अपन ला देते एकदम नीचू। रुक मैं आया। हाँ हाँ, कर लेते, चालू कर ले। ओ बाबा रे। शाउट आउट ब्रो, बिग शाउट आउट टू यू ब्रदर। मेरे को भी देना यार। ओए शाउट आउट ले नहीं देना यार। रुक यार, कुछ फोन और चार्ज पे लगा लूं अपना। कुछ और चाहिए। हाँ जरा एक 20 लाख भेज जल्दी, कल भेजना रहा था तू भेजा नहीं है मैंने। कुछ और कुछ और कुछ और में 20 लाख ही बोला मैं, और तो कुछ नहीं नहीं उसके कुछ अलावा और कुछ नहीं और चाहिए नहीं। कुछ और लेना लेना भाई देख लो समझ गाइस, गया इसके लक्षण देख लो। देख रहे अरे हो? क्या क्या भाई, क्या की बात कर रहा हूँ भाई, इतना गंदा लड़का है। उर्दू रुको रुको, चलो वो हिंदी वाला देखता है। छी ब्रो छी, you're such a गंदा पर्सन। एंड यू? आई एम गुड गाय। रियली? और वो ट्रॉफी देखकर आपको कैसा लगा? ये Well, रहा। thank you so much for having me here, अहमद। और अगेन मैं तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहूंगा अपनी तरफ से भी पबजी मोबाइल वर्ल्ड इनविटेशन के इस आज के तीसरे दिन के एक्शन के अंदर। एंड जाते हैं हाँ ट्रॉफी भाई, जो कि बहुत सारी टीम्स को लेट्स से सी फर्दर एक्साइट करती व्हाट है कि मैं आज हैपेंस। इस ट्रॉफी को जीता हूं, और जो जीत के काफी करीब तो है, टाइम है हमेशा चालू ट्राई होने करेंगे को। कि कहीं ये ट्रॉफी हमारे हाथ से निकल ना जाए। सो एक मिली जुली मैं अच्छा समझता हूं टाइम कि है। एहसास जज्बात होंगे ऑडियंस के दिलों में भी, और साथ ही साथ जो प्लेयर्स हैं, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स क्या खेल रहे हैं, बता उनके अभी। दिलों में भी आज आज भी मेरे सबसे इसी बट तरह जल्दी हमारे रैप अप कर देंगे ये सोल से लोग, अपील जहां तक मुझे करूंगा लगता है। कि बहुत कुछ हेलो होने जा नीरज रहा शाह है भाई, आज क्या से। हाल है क्योंकि भैया? पहले स्पॉट में और दूसरे पायदान में सिर्फ 12 फेस कैम पॉइंट्स का राइट कर लो, डिफरेंस है। लिस्ट नहीं इनफैक्ट दिखेगी। ऊपर के राइट जो में ही तो है। 8 स्पॉट्स हैं, जो राइट करूं 8 कि लेफ्ट करूं टीम्स हैं वो पहले बताओ। पेज के ऊपर, सिर्फ 54 मैं राइट पॉइंट्स में का ही तो है, ये डिफरेंस है राइट है हाश भाई। 9 से हाश 1 तक का। सो कहीं ना कहीं इसको नारो डाउन किया जाएगा बहुत हद तक। मजीद भी बातें हम लोग आप हेलो लोगों से डिस्कस जरूर इधर रखना करेंगे। है हेलो क्या? सोल के बारे में बात की जाएगी, 52 के बारे में भी बात की जाएगी, कुछ ऐसी टीम्स के नाम भी लिए अभी जाएंगे ठीक है, लेफ्ट जिन्होंने में। बहुत ही बुरा परफॉर्म किया क्या डे 1 के बोलते अंदर, फिर बेहतर परफॉर्मेंस की, लेकिन डे 2 में ते आकर उन्होंने ते बहुत मैंने तो ही ईयरफोन खरीद लिया ज्यादा बस। अपने पाँव की कौन ईयरफोन सा? में हड्डियां मारी हैं।
सोनी का कोई फॉर्मेट तो आ खरीद चुका है। के आ गया मेरे पास। 18 टीम्स और रुक 18 देखो तो ही तेरा लोको मैचेस का आज स्ट्रीम के दिन कौन आखिरी सा 6 ईयरफोन मैचेस खरीदा है खेल तो लिए देखो। अरे जाएंगे सोनी का और एमडीआर 3 क्या मैप्स शुमार हो तो रहे है ना। हैं। वो तो रैंगल खेला एमडीआर है तो तूने और वहाँ स्टैंड ऑफ। वो उसमें इसके भी लिया बाद था ना जब अपन ये गए थे। शो एंड नहीं होगा। इसके बाद हाँ टॉप 5 वो टीम्स भी वो सोनी नहीं एमडीआर ही नहीं था ना। खेलती हुई नजर नहीं नहीं, आएंगी। वो सोनी नहीं था, बिल्कुल जी, वो था फॉर्मेट सेनाइजर। एक्सप्लेन कर दिया जा सेनाइजर चुका है आदि की हाँ। तरफ से। और आज के दिन भी कल की तरह टोटल 3 मैप्स होंगे, तू जिसमें ईयरफोन 3 पहना है मैप्स हैं मतलब। जो कि 6 दफा टोटल खेले जाएंगे। 6 मैप्स खेले हाँ जाएंगे, 6 मैचेस खेले हाँ जाएंगे। और ज्यादातर हाँ, हमें रैंगल देखने को मिलेगा। उसमें 3 माइक भी दफा चल रहा है अल्फा पता मिरामार खेला है। जाएगा और 1 दफा सैन और अरे खेला टॉप जाएगा रे। तीसरे मैच अरे के मेरा तौर के नेक ऊपर। पेन सो नहीं होता। स्टार्ट तो जो तू है वो मतलब अगर अभी अपने खेलेगा भी स्टार्ट तो से गेम शुरू हो तो रहा उससे ही होगा खेलेगा। आज के दिन का एज यूजुअल। और बहुत ही गेम फेयर कौन चांस सी? रहने वाला है हर टीम के बीजेएमआई। लिए अपने ये एक स्टेज अभी तो सेट कुछ करने के खेल लिए, रहा ही नहीं हूँ स्पेशली ना, आज के दिन तो एज वी क्या। स्पोक अबाउट यस्टरडे एज क्यों वेल नहीं खेल रहा है? कि तू तो आज बोला का था दिन कल, मेरे को बोला था आज आ जाएगी आज गेम, क्या हो सेट गया? किया। हो गया ना, वाईफाई चला गया था यार। क्या रे वाईफाई, रिफ्रेश कर लो गाइस, हो जाएगा सही। आवाज आ वो रहा तो है सब वैसे? जाता ही रहता है क्या। अबे इधर वाईफाई का बहुत लफड़ा है बे, तभी तो मैं इसके लिए स्ट्रीम अरे नहीं मैं तेरे करता को बोल हूँ। रहा था, तू बीजीएमआई क्लासिक खेलता है क्या? खेल लेंगे, क्या हो बता। ऐसे ही पूछ रहा था, मैं सोच रहा था मैं स्ट्रीमिंग करूंगा तो। खेल लेंगे बे शाम में, लेकिन खेलेंगे कल से। तू बता शाम में मतलब नाइट टाइम पे खेलेगा? कितना, कितने बजे, टाइम बता, टाइम बता रे बीड़ू भाई। मेरे को बोल मत घंटा फिर है, से, मेरा नेट से तुम लोग सब यूट्यूब पे कर रहे हो, तुम स्ट्राइक पड़ी तो। बंटाया भी देखो, हम तुम्हारे ऐसे लोको वाले हैं नहीं, हमारे पास लोको का डील नहीं, तो हम यूट्यूब पे कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं बंटाए, बताओ। तो है बट फिर भी स्ट्राइक पड़ी तो अलग। हाँ क्या पता, देखते हैं, आज लास्ट डे वैसे भी। लेट्स सी। बाकी अगर कोई स्ट्राइक वीक पड़ा तो ओवेस है ना, ओवेस को बोल देंगे, ओवेस जरा ओएस 2 मिनट क्या में कर रहे बात हो? ओएस करेगा। कुछ नहीं कर, ओएस कुछ नहीं कर ब्रो। साले। ओएस कुछ नहीं कर। अच्छा। हाँ हाँ रिपन भाई एकदम बढ़िया 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 है भाई। बाकी सब बढ़िया, यस जैक्स नो मेरा भाई एकदम बढ़िया। तुसी दसो शान भाई, अरे खेल लेंगे यार वो भी। हाँ आकाश भाई ओके भाई, काफी टाइम बाद लाइव, यस बीरो। अनीश खान थैंक यू सो मच। काफी टाइम बाद लाइव आए हैं भाई। और भाई कैसे हो? हम एकदम बढ़िया, आदित्य जैन। टीम इंडिया बूम बम आज, लेट्स गो टीम इंडिया बूम बम, फुल बूम बम। हम्म। यार डिस्कॉर्ड पे भी अपना डाल दे क्या, रुक जाओ, डिस्कॉर्ड पे डालते हैं अपन, काम करते हैं, आप लोग के क्या बोल सामने रही डालेगा। पब्लिक? लिंक 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 लिंक, ठीक है। डिस्कॉर्ड कहाँ गया अपना, जनरल चैट, एवरीवन लाइव ऑन वाईटी आ जाओ, सेंड नाउ। डिस्कॉर्ड पे भाई जन्मों अरबों सालों बाद हमने डाला है मैसेज एक। किधर गया इसका सर्वर, स्नैक्स का भाई, गुम हो जाता है, मिलता नहीं है को। हाँ भाई रेगनेट भाई ठीक है भाई, ऊटे केला रे। हाँ ये रहा, डन। हाँ भाई, शाहनवाज शाहनवाज भाई खेल लेंगे यार। सेवन सी कब से है मैच सर? उसका आफ्टर पार्टी में भाई, आफ्टर पार्टी जो होगा ना अभी नेक्स्ट, इसके बाद इवेंट, उसमें उसमें होगा। फन गेम्स है वो। राम राम जी, राम राम रेगनेट भाई, राम 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 राम। गाइस लाइक और सब्सक्राइब नहीं हो रहा है क्या? लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार फटाक से जरा। न्यू स्टेट खेलो, न्यू स्टेट
न्यू स्टेट भी खेल लेंगे भाई। आज का दिन देखते क्या होता है। ए बाबा भाई चालू कर दो यार, मैच चालू नहीं कर रहे। ओह अपनी सोल आ गई भाई। अभी क्या चल रहा है भाई यहाँ? حياك الله معنا جوي بوي، نورتنا في المسرح. قبل ما نبدا المباريات اليوم زي ما احنا عارفين هو اليوم الاخير، ودنا نعرف انكم او زي ما احنا عارفين انكم انتم अरे अरे सुमित चौधरी थैंक यू भाई। अरे चैंपो 7C भाई क्या हाल है, क्या चल रहा है? ठीक है नाइट्स गेमिंग, तुम जाके खेल लो भाई, जाओ तुम खेलो, तुम ट्रॉफी लेके आओ, फिर बात करेंगे तुमसे, ठीक है? तुम्हारी यार बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें, ठीक है? तो तुम चुप रहो जरा, ऐसा शांत रहो। Well, speaking of teammates, we had a nice conversation with Never Alone, one of your players on ऐसे Discord. 7C का Our नेम main तो फिर stage, his क्यों main नहीं focus खेले is वो to लोग keep सर? us अरे वो लोग safely right ये now वाला in खेलेंगे भाई, Saudi. दूसरा So, वाला क्या बोलते हैं, what I have to ask you is आफ्टर basically, पार्टी। what is it going to take for you and your team to keep it here? गाइस एक सेकंड ना, زي ما احنا عارفين بالامس سوينا مقابله مع نيفر الون احد من لاعبين فريق فالكونز، وكان السؤال الموجه له انه ايش اللي ممكن انكم تسوونه عشان تخلون التروفي هذا يجلس في السعوديه وما يطلع منها. فودنا نسالك نفس السؤال، ايش الاشياء اللي ممكن انكم تسوونها عشان تتاكدون من النقطه هذه؟ اكيد هدفنا الاول هو انه اللقب يضل في السعوديه، واللي راح نسويه هو راح نكمل طريقه لعبنا اللي لعبنا فيها اول يوم وثاني يوم، وان شاء الله انا بحس هاي البطوله اكثر على المونتاليتي، فنحاول انه نخلي المونتاليتي قويه لاخر البطوله ان شاء الله. He's saying they're going to try their best to make sure that this trophy stays in Saudi Arabia, and the only thing that they're going to do is to keep playing आ the गया same गाइस, आ way गया, आ that गया। they played ओ जरा yesterday and the कुछ day before. काम था। And he feels like the most important thing about this tournament is अरे to युवराज keep सिंह them भाई focused जानते हैं हम, on that ठीक है? Humbly तुम experience. इतना काहे पागल हो गए हो भाई Clearly, साशा what के you're पीछे? doing is बाबा working रे। because sometimes teams can slip into playing a little bit more passively when they're in the lead. हाँ So keep भाई playing aggressive, दानिश keep भाई getting those कास eliminations to कास ensure that we'll see you ऐसा at the top होता। of the table at the अरे end of यार the day. एसी But you know what? We're थोड़ी going देर to have to go ठंडा कर back देता over हूँ, to the आवाज desert आएगी भाई, because वो we are एसी हमारा going खराब हो into गया our थोड़ा। first map very, कोई very नहीं, shortly. ज्यादा आवाज नहीं आएगी वैसे شكرا आप لك लोग جوي को। بوي. वही घाई वेलकम घाई बैक। बोल रहा तो हूँ शाम भाई, को लोग इंटरव्यू स्पैम आप मत लोगों करो ने सुना प्लीज, और टीम डू फाल्कन्स नॉट के स्पैम प्लेयर इनफैक्ट कोच थे उनके प्लीज और गाइस। ऐसा उनका ये कहना था कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि जैसे हमने कल के दिन परफॉर्म ये किया वैसे पीछे हम क्यों हो आज जाता है, मेरे को समझता नहीं है। के दिन भी परफॉर्म करें। लेकिन आज के दिन टीम लाइक और सब्सक्राइब कर दो गाइस फटाफट, लाइक एंड कोच सब्सक्राइब। जो है सेनेटर, उन्होंने कहा था कि हम हम्बल रहेंगे ओएस का डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो। अरे है ये डिस्कॉर्ड में ही है भाई हम लोग, ये टीम देखो। स्टारवोर्ड स्पोर्ट्स से तीनों ही मैचेस में भुगतती है। इनफैक्ट उनके कॉन्फिडेंस को इतना शाटर किया जाता है, सारी बातें करेंगे, लेकिन ओवरऑल लीडर बोर्ड हमारे सामने आ चुका है। थोड़े से एदाद मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। 8 का है 88। टीम फाल्कन्स और टीम स्टारवोर्ड स्पोर्ट्स के दरमियान सिर्फ 12 ही पॉइंट्स का डिफरेंस मौजूद है। बहुत ही ज्यादा 6 मैच एक दूसरे और के करीब ये दोनों स्क्वाड्स मौजूद हैं। और इनफैक्ट आरएसजी का टीम फाल्कन से पहले पायदान के लिए उनको 20 पॉइंट्स चाहिए। पहले मैच के अंदर आरएसजी फुल ने भसड़ अगर होने वाला है 20 गाइस आज पॉइंट्स तो। निकाल लिए बूम और बाम। टीम फाल्कन्स, अगर हम वर्स्ट केस को देखें टीम फाल्कन्स के लिए, इनिशियल्स में अगर वो एलिमिनेट हो जाते हैं Spamming will lead to timeout. Yes, guys. चेंज होते हुए नजर आएंगे, तब्दील होते हुए नजर आएंगे। वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स को 30 आज का क्या प्रेडिक्शन रोनक भाई? आज का प्रेडिक्शन है सौरभ भाई कि सोल कमबैक करेगी अपनी। मेरा प्रेडिक्शन तो ये है, जो स्पॉट है उस पर आप नॉक बताओ। मौजूद है। सो उनको 34 पॉइंट्स चाहिए पहले मैच के अंदर। ब्रो नासा ने तो पोस्ट नहीं डाली आपकी ज्वाइन करने की। ओ मैं अभी फोन करता हूँ सो कहीं ना कहीं वो लोग को, पहला पेज अभी बोलता हूँ बहुत जरा ही डालने ज्यादा को। टोचन देता हूँ contested उनको, जरा इसमें रुक जाओ। होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और आपकी बात के साथ एग्री करूंगा यहाँ पर, लेकिन मेरे लिए जो यस सबसे ज्यादा भाई, मैं समझता 9th का हूँ भी कि 81 मानी खेज एक फुल जो एकदम रैंकिंग है वो टॉप थर्ड 10 पोजीशन आना पे मौजूद आरएसजी है, बिकॉज़ आरएसजी ने कल के बढ़िया मैच में खेलना जिस पड़ेगा तरीके टॉप से 10 आने के लिए स्टारवुड गाइस। स्पोर्ट्स को सैना के मैच के अंदर टारगेट किया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड। 6 मैच है, 6 मैच में फोड़ देंगे भाई अपने भाई लोग। फाल्कन और टीम स्टारवुड स्पोर्ट्स हाँ हाँ अमित भाई ठीक है भाई।
ना उनको टैम्पर जरूर करते हुए नजर आएंगे ब्रो हमें, उसकी लेकिन at the end of the और day, ओएस जीटीआर अगर टीम आरएसजी के लव अगेंस्ट आरपी वो फाइट मस्ती जीत दैट्स भी वाई उसको जाएगी तो बोलो उसके जल्दी पास खेलने के लिए। कॉन्फिडेंस अरे भाई होगा कि वो अगली फाइट में क्या रॉकेट करें, कर और दो, मेरे स्पेस मेरे शिप उड़ा दो भाई टीम चैट बाइस में, बनती हुई नजर आएंगी। स्पेस सो शिप उड़ा दो आरएसजी गाइस। सारे कंपटीशन को एक्साइटिंग बना के रखेगी, एज आई नो, बिकॉज जिस तरह अरे जो ऐसे लोग पहले पॉप को फॉलो करते हैं, रेगनेट कंटेंट भाई ये को पॉपिंस फॉलो ये सब करते जो हैं, लोग हैं ना ऐसी उनको टाइम आउट कोई मत दो, भी उनको सीधा टॉप के ऊपर होती है तो रिमूव कर टीम दो, उसको इतनी ऐसा मार सीधा पड़ती है लात मार के कि बाहर वो करो, ये लोग नहीं चाहिए टेबल अपने के जो को। है वो बॉटम पे होते हैं, हेटर्स और नहीं उनके चाहिए जो भाई अपने को, स्ट्रैट्स काउंटर स्ट्रैट्स पप्पू हैं वो हेटर्स कई बचकांडे बेकार लोग हो नहीं जाते चाहिए, हैं उनको सीधा टॉप निकाल इंडिया देने के का। अंदर, एंड यही चीज जो है वो हमें आज के दिन आरएसजी करती हुई भी नजर आएगी, एंड आई एम प्रीटी श्योर हम पहले ही मैच के अंदर देखेंगे। लेकिन स्केड्यूल की तरफ दोस्तों जाएंगे, आज के दिन के मैचेस किस तरह से हमारे सामने अनफोल्ड होने वाले हैं। रैंगल से शुरू किया जाएगा, देन गोइंग टू मिरामार, सैनहॉक, देन रैंगल, बैक टू मिरामार, एंड द फाइनल वन विल बी रैंगल विक्ट्री। और अगेन मैं साउंड समझता हूँ दो कि थोड़ा स्टार्ट और, भी एक साउंड इम्पॉर्टेंट चीज चाहिए। है, और ये लो, स्टार्ट रैंगल से फिनिश रैंगल के ऊपर होना, ये चीज और ज्यादा इस मुकाबले को एक्साइटिंग कर देगी। ये देखो बिल्कुल फिर ऐसा, लेकिन पीछे हो गया, ये सब पीछे कैसे हो अवाम जाता है। इंतजार कर रही है कि कब हम जिक्र करेंगे 52 ई स्पोर्ट्स का और टीम सोल का। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अभी भी ये पहले तेरे प्लेस से पर एको जो क्यों आ होता है बे सकते हैं स्लेयर? इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक अच्छा मैच, एक हाँ बे अच्छा स्लेयर, हेलो हेलो, पता नहीं कहाँ कहाँ ही गायब हो जाता है। वो तीसरे स्पॉट पर भी एलिमिनेट होते हैं। इनफैक्ट चौथे स्पॉट पर भी मैच में एलिमिनेट जीटीए होते हैं। स्ट्रीम्स 6 करो पॉइंट्स प्लेसमेंट और के लेकर डेली जाते खेलो। हैं ऊपर युवराज सिंह 4 से भाई 5 जीटीए पॉइंट। अगर स्ट्रीम वो में करूंगा, मेरे को पीसी अपग्रेड कराना है यार, और जाते एक हैं मॉनिटर मिनिमम, लेना है। तो कहीं ना कहीं स्पॉन्सर कर रहे हो क्या? क्या बताओ लगाया था बे सकते हैं उसके? आज के दिन। तो एसन पहले पेज पर आना मुश्किल नहीं किसके? है। आई रिपीट, पहले पेज पर उसके आना मुश्किल बंदे नहीं के। है। और इसकी वजह मैं आपको कौन सा बताता बंदा, हूँ। मैं देखा नहीं। हमने पहले दिन देखा था कि टीम DWG के प्लेयर्स ने एंड किया था 22 पॉइंट्स के साथ पहले दिन को। एंड जस्ट आप ये बात जरा मेरी सुने, अच्छा ये, दूसरे हाँ दिन बे का अख्ताम उन्होंने 107 पॉइंट्स के साथ किया है सन, और डिफरेंस पता नहीं क्या 85 हुआ पॉइंट्स का उसको, कुछ बनता हुआ है। रहेगा, मतलब उन्होंने 14 खून भी पॉइंट्स पर निकला मैच रहेगा। निकाले हैं। सो तू इंग्लिश वाले में देख रहा है क्या मैं वैस? कश्मीर अभी आओ, भी हाँ इतना ठीक अरे है, इंग्लिश मैं वाला ज्यादा मैच फास्ट देख है लूंगा। बे, ऑब्वियसली आगे है इंग्लिश ही तेरा। इसका भी देखूंगा मैं। एक फैक्टर इन प्ले बहुत अरे बड़ा वो है उर्दू यहाँ पर। में ब्लैक बहुत 52 के होता है। लिए, टीम सोल के लिए भी, और ये पीछे है जितनी भी बे टीम्स वैसे, यहाँ पर खेलती हुई नजर आ रही है, गाइस लेकिन इंग्लिश वाला पीछे का है। बात नहीं है, उधर वो लैग बहुत होता है। Start. They could be jumping in to be within this ये fight. सही This है is यार something that the गाइस। top वो 5 teams, उसको they have been नोज extremely ब्लीड strong. हुआ And होगा। what I've been most ओके, impressed with has actually been Damonski's चलो comeback भाई from पहली day गेम one शुरू to होती day है, 2, लेट्स well गो able to improve from day चलो 1 to day 2. भाई, And this is लेट्स an गो, absolutely लेट्स insane फकिंग first गो। play by here for Rangel. लेट्स The most southern फकिंग play by गो you can possibly have. पब्लिक। Going most going all the way over to south. हार्ट Middle to स्पैम close कर the दो middle. गाइस Then सोल के लिए is going to फटाफट, the circle as well. रॉकेट And उड़ा now दो। crazy one where the play by the super foul way, and the circle just goes all the प्लेन way to उड़ा है the और रॉकेट भी उड़ेगा further अभी। edge, so potentially north or ये somewhere else. What I'm going to be ओके, looking at is with such a south playing path, right? Yeah. तो I'm सिर्फ looking at शेख that भाई south कर East लेंगे Coast, यार। how they're going to अरे be उधर playing this. गर्मी This is a इतनी team that होगी ना, usually tends to इनको play जमा slow नहीं because होगा। they don't have to worry about a lot of Exactly. teams being towards the south. I feel like some of the teams might not want to rotate as much and might just want to go to farm, go to Melta, go to shelter, go to those kind of locations instead of trying to go all the way up to Yasnaya and Hello? Mansion. So I'm really intrigued to हाँ see what the first circle's going to be. घर पे कोई It था will नहीं, maybe make some of काम these करने teams वाले आ push गए। up more. हाँ And then हाँ, Vampire तभी तो Esports, तू कुछ तो we कर रहा talked था about it रूम में। yesterday. I was hoping that they मेरे को would तो इस जाना बार पड़ा था कश्मीर बहुत आओ, अच्छा, फिर मैच घर पे खेलते कोई हैं। है took this hit, नहीं। right? हाँ When they समझा saw समझ what गया ना South अभी। अभी Korea गर्मी समझ थी और गया। the 24 अरे hours हेक्टर, फर्नीचर वाले आए थे तो मेरे को but I बाहर am जाना पड़ा। intrigued to see that फर्नीचर वाले आए थे कि कोई और आई थी? aggressive नहीं नहीं हाँ हाँ हाँ, top players फर्नीचर here. वाली आई थी। टाइम लेता ना, Being able to take it. Putting अरे 24 भाई। आराम किया क्या था थोड़ा, पता, meters क्या on the चिल पता wall करके 5 खाना मिनट वाना खा has के। 5 मिनट ही very होता much हो been प्लेयर। actually ओह नहीं ओमेगा खाना वाना देख, खाना हो गया। ओमेगा देख then डेड the सेंटर first में circle is बैठा going है, to come माँ from ओ कसम। भाई west side. It's क्रेजी going to जोन be बना है। quite हाँ, an easy one here. The रौनक vast क्या majority पता of 5 मिनट the में हो west जाता हो in play प्लेयर। still have school खाने के लिए टाइम लगता है ना। so it's going to अरे fall out. भाई, Experience चल certainly मैच thanks for पे joining ध्यान us दो, here चलो for the टीम official इंडिया ओपी, लेट्स smartphone गो। partner. लेट्स गो गाइस। लेट्स गो ब्रो, top अच्छा जोन भी players बना है there भाई। earlier. मेरे को अच्छा We have to फीलिंग आ talk रहा है, about फर्स्ट Star गेम अच्छा जाएगा। Esports. Actually, यस that यस, man is फिंगर्स just on a क्रॉस्ड। tear. He's currently leading in regards to damage with 5,463 damage, but he's actually not leading when it comes to फर्नीचर ill. तुड़वाने The वाली आई person है। that's leading is from RSG. Is going to be Sandian. तुड़वाने वाली They're बोलता in the top lane. It's going to be nice. I'm also
I'm really intrigued to see how Falcon Team Falcons भाई is going to be playing today. I Yeah. feel like they're going to have a lot of pressure being the home team. अरे currently up फिरोज today. खान भाई उर्दू वाला थोड़ा पीछे चल रहे I feel like हैं, ये वाला सही they है. need to just dismantle. Yeah, it could be, but also the buffer that they have down to 5th place and even 6th place that they're some of the teams chasing.
अरे ये क्यों लोडिंग आ गया अभी? 44 points lead to the teams that are chasing on 6th place and beyond there. That is quite a good lead. And we were talking about a hypothetical cutoff yesterday after the first 3 games. It could be around 150, 160 point marker. So they don't need to do much to be the first team to cross that. And still 12 points lead down to Stalwart too. I am really excited and ecstatic to see Falcons' potential for today and how well they are going to be able to take it on. Also, potentially gatekeep or deny some of the other teams that क्या we लगता है feel कितने like kills are होंगे? क्रेजी है कौन पहली बार सुना भाई पता है of नाम course, the main 100 objective kills is second. getting that पागल 100 है क्या? kills second. तो पहले क्या था मैंने अभी फॉलो पुराने प्लेयर है क्या तो हाँ हम लोग जी सर में खेलते थे, तेरे को पता है? हाँ तब इनका नाम टीम का नाम क्या था Absolutely, and फाल्कन। I'm hoping that they don't तेरे change भाई it ने to मेरे anything that 2 2 has 3 been 3 बार because 1v3 of करके this. I रखा है। mean, हाँ they मुझे are लगा in वो first परफॉर्म नहीं place करते थे इतना for a reason, but when we go talk about points, और तेरे को पता two है ये teams, अपने रीजन Vampire में Esports 100 on day पॉइंट से 1, they लीड were से able to जीत के get आई है। 86 points, Crazy, and then bro. RSG yesterday on day 2, they were also able to get 86 points. खेल तो Which वैसे means RSG that का they तो need माँ to be कसम careful from those 74 teams kill that were साला. esports. हाँ bro. Damn one Kia. This was आज team थोड़ा you were पोजी just पॉइंट ले mentioning too. They came out of nowhere. They could end up तो getting 86 चाइनीज points. टीम It's को आता Team है Falcons. I कैसे don't want. खेलना है। I kind of want to put it out there, तो but I अर्ली am फाइट्स gonna का have आदत to भी say होता है भाई it. हाँ. If वो they तो do end सब up चीज having का a आदत bad है, day, सब they चीज। could end up getting out of the top 5. And उनके यहाँ जो ultimately, टूर्नामेंट ऐसी yes, नहीं you होती want to ना get कि the first 2 place. गेम You नॉकआउट want to get the राउंड prize ऐसा सब money, नहीं but होता you है। also want to be able to move on to इसलिए the उनको after डर नहीं party. रहता, समझ रहे हैं? All right, let's see what Morph is अपने अभी doing जो and how टूर्नामेंट they're होती है checking 2 in. गेम नॉकआउट होता है, 3 3 Playing नॉकआउट really होता अपन है well, this guy, इसके। especially the गांड coach, फटी में super रहते हैं nice फिर. guy. Meet him in the gym. He's putting in the good अभी work, धीरे and धीरे सही हो रहा hopefully है, these मतलब guys 6 are able गेम हो गया है। to be one of अभी those फिर से teams थोड़ा that फुल can स्टॉप be लगा within है. that वो striking फुल स्टॉप distance and पहले potentially हटना jump चाहिए. into the top 5 with that, because they are just, I would say, भाई स्नैक्स को 19 भी ज्वाइन करो points भाई, हम behind the स्नैक्स top की 5 डिस्कॉर्ड average, पे which is बैठे। one good team. We've स्नैक्स seen ही नहीं है plus बताओ. 30 points being स्नैक्स done का है पता नहीं। from the winning teams with the amount of eliminations we've seen and so forth. So it's definitely doable. And these first couple of games that we have the pleasure of casting, it's going to be super important for setting yourself up, because when there's only 1, 2, 3 games left, तो अभी that's पहुंचे where वहाँ you're पे. going to have to play much more strategic depending on what you see on our total leaderboard. Oh, definitely. It's going to set the tone to how the day is going to go. Right? गाइस आप गेम लोग भी नहीं है चैट तो में प्रेडिक्शन बताओ. Start being really aggressive. RSG and on become different really level. heavy, Yes bro. as we saw Vampire तो Esports किधर भी have चले in जाते that एक तो day लोग 1 भाई. match 1. But you were talking about Morv. I mean, when it came to Morv, it was a bit of a lackluster in the first 2 matches on day 1, but then they were able to get that chicken dinner. And yesterday, I feel like they definitely became a lot more consistent. नारुतो गेमिंग They यार ended up कल with ही तो 2 बताया second था. place अभी हम finishes लोग and थोड़ा 1 पीछे चल रहे हैं ना. third place finish. इसीलिए Which, भाई. that's great. All these teams need थोड़ा right नहीं now बहुत पीछे is चल to, रहे वैसे तो. on the first game, if possible, don't wait until the second 2 game. साल. Try to get that one 2 huge साल game. क्या Just होता है put you in भाई. contention. It's going to give you a confidence boost. And I'm very big when it comes to mental, because it can play very heavy on इंडिया में these teams, पॉलिटिक्स especially being in Atlanta events. A lot of वो these तो कभी players नहीं are खत्म used to होने का playing भाई. online. For them to be here, for them to feel the crowd too, because I know we are going to be hearing that crowd of Saudi Arabia, especially Team Falcons, Christine in the first place. That's going to get to them at some point. Yeah, ये बहुत अच्छी टीम है, डेली they definitely have this home turf heroes White buff, card. the buff of the White crowd. card. You see also sometimes some of the videos. कैसे हो IW. स्टेयर भाई they got बढ़िया their भाई rich आप बताओ jump कैसे out हो into बढ़िया the बढ़िया 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 है भाई हम. ओके बढ़िया ओके है भाई. right now with the बढ़िया अभी Yeah. अल्फा 7 ही है ना That's a जो really interesting one. 88 They're और moving it esports हो right गई now है. close to virtual gaming squad. हाँ शायद nervous वही of है. the situation they are, and Yafa's गेम side साउंड gonna इंक्रीज be करो. dropping off or gonna be dropped off. अरे as मैं भी well. कर Guys, देता I don't हूँ. know. It's actually कर staying here दिया with तो. Alpha Luigi 2. Now Oh, Box and back to potentially in a fight versus already. B2B. Break is running up already to Polo and J-Wait. भाई तो सीधा चढ़ Great, गया trying to ऊपर. figure out. He does decide to back off a little bit. I think he अब realized खाएगा this ये. is not going to be a good idea. They are going to take on the fight. Polo does get some damage on him, and I think at this point, back to back is just सीधा back gonna off भाई. And I'm glad we got a chance to see back Three to man back है ना. right there वही. in Atani Esports earlier, because चौथा I किधर wanted है? to get a chance to मर talk गया ना about them. स्टार्टिंग Teams में. that are currently at the right level, Falcon. it's not impossible, right, for them to try to make it to the top 5. But in a way, it kind of is. So a lot of the other अभी teams भी towards the top इंटरनेशनल need to में be आपका careful ही with रिकॉर्ड है. those teams at the bottom. अरे And भाई 2 ऐसा साल नहीं. में ओवेस के 2 लड़के हो जाते हैं. 2 क्या 4 भाई. SouL ended up eliminating Stalwart अब Esports बोल रहा. twice, back to back. 4 in भी Myanmar कम and बोल रहा Erica. भाई. देखो So खुद ही even बोल though रहा. these teams 4 भी might कम be लड़के बोल. 13, 14, 15. अरे मॉर्फ आ गई. Those आज are तो the teams at लूटते the ही top है need to लोग be ऐसा. careful, because they Thank could you. steal points from them
and it could allow maybe some of एक the लड़का other तो teams मेरा that are रौनक है, currently देख not लो in the गाइस, top 5 इतना to बड़ा move हो up. गया। अरे क्या We didn't कॉमेडी talk to की the है depth of the lobby right now. हंसो रे हंसो You're able to take तो out समझ लो ऐसे some of the कितने teams हैं। that are definitely in the देख top रहे right हो हंस now. लो गाइस थोड़ा हंसो That is बोल रहा है। super impressive to see, of course. Multiple teams coming out of so many regions. That's also obviously कहना क्या player चाहते है, हो about एक प्लेयर है। PMWI here. So many regions प्लेयर represented. ऐसा बच्चा है कि उसके multiple पहले river पैदा हो nations. गया। तो रौनक भी उसके पहले ही पैदा हुआ है आप ही सोच लो And, कौन next week किसका we're gonna be बच्चा joined है। by Moderators, of course. Bigtron, BTR joining them. Huge fan following. इसको Huge मेरे पैदा होने से पहले पैदा किया हूँ, वो history करके for मैजिक this team करके। as well for years and years behind now. अबे यार Yeah, मैप the नहीं rest दिखा of the रहे tournament लोग is यार gonna be- And Galaxy currently is in a good situation for them, 6th place right now. They फुल do ये लोग need सोडोस to पे get दे to मैप दो खाली भाई something And I'm pretty sure running for Enigma them. Galaxy is going to be looking to carry that momentum from the end of the day yesterday. For sure. बट Yeah, डरते भी first नहीं हो देख place, I mean, लाइटनिंग देख no, सीधा 4th place finish, Oh, 2nd that's place finish, 7th place finish. They With won't 9 be able- elims as well. Yeah, it wasn't just like they were going for placement points there. We're looking to get the action. I think it was on Miramar that I saw it. I thought they were going to be able to win it, but they were just playing a little bit too patient for me. I'm hoping that today they do decide to make फुल the भगाया है shift भाई a little एनजीएक्स bit वाले लोग faster, ने because I felt like Miramar. I like us Miramar game did sound not increase have those एनजीएक्स two डबल घर पे actually doing जाएगी that, but they पक्का। just played it way too वहीं slow. So बहुत जाती hopefully they है। were able to go watch some VODs, come back. But now I want to see what this new circle is going to be looking like, because yeah, we had a heavy South Plane. Yeah, And it's look at all hard to the predict as well. yeah, and I'm looking at some of Oh. the teams. I mean, we have Oh, Atan 52 Esports up in Severny that are going to have to come down Centur. for rivals too. long And rotations. this right here is Wait, going to दोनों watch benefit tower के लिए huge जा रहे for. हैं I think it's going to benefit huge for Vampire Esports. ओमेगा भी वहीं जा रहा है The question is, बे of course, how are they rotating in? How are they कोई going to be आपका planning साउंड ahead? बहुत Of लो है, course, a आपसे ज्यादा submission रौनक का आ shift रहा है here. साउंड। It's going to be hard. Longest There's going to be a मेरा lot आवाज of कम pressure कर on दे the थोड़ा north and eastern side. So the question is, if you're able to get in early, how ठीक है। deep can you go? How much terrain can you 400 get मीटर दूर बंदा from the मार रहा है। southwest side? Because if you're able to go on a deep rotation, get some good macro बहुत going from अच्छी the very बोली है, get-go, फुल you're पे। able to get some of those compounds हाँ। that might be free close to the center, but on the western side. So that's really the question for me. बस अभी कोई अंधे Those ऐसा teams that पागल are जैसा rotating स्लैम early, नहीं are करे they बस going to take some of those high वो priority जगह पे संभाल compounds भी सकते हैं। in case it shifts that way? Now Donuts on screen with Enigma Galaxy. Shots are coming out. Hamadi is going down with a knock going there. Wait, that's Right, very knock unfortunate. But हो Donuts is one of the teams that are chasing इधर right now क्यों the top पता 5. भाई? क्या And बता we hear a few guys clapping. And now the मिनी से Enigma मार रहा Galaxy है just losing one player. मिसाइल I फेंक think के it's- मार I रहा है think it's smart though out of the team to just give up on it. And Oh, then we do have अरे! that one Kia being able to get 2 अरे knocks जी right भाई। there from Lightning. huge कोरिया हो गया। reckons that is going to be an important one here. Not a big priority to be fighting over this area, though. It's very much in the northeastern side of the circle, but it is also about rotations, about those pull-ups, and you want to defend your terrain, of course. फुल Reckons कल्टी ले रहे deciding हैं to move out on the east, and they're going to be rotating out somewhere else. I can tell you Reckons. who's happy right now after that engagement. Team Falcons. For sure. They're like, Falcons. yes, Falcons please. seeing बोलता everyone Falcon fighting each खुश हो other, and गया। this is staying focused live now. TJB shots coming in. That's one shot taking the car. It's going to take the coupe and go away with that one. Virtual भाई games. नया हेडफोन लिए क्या? team that's नया going ईयरफोन 60 लिया plays, I know हेडफोन they're लिया। going to look into make some kind of noise here. So hopefully that will be the case in there. We gotta. ये फॉरेस्ट मस्त खेलता है भाई इसका Virtual कल भी gamers बहुत are मार रहा था trying to hopefully climb up the ladder a little bit. See, maybe they can get close to the top 5, if not make some highlight plays. And here we go, Enigma Galaxy just passing by. Vivo हाँ Team वे from अब Brazil. से मेरे को Wow, इधर उधर ही जाते हुए दिख रही है yesterday. Right now, I Crazy है mean, bro। Vivo Key are So currently finally in रुके। 10th place. They did have a great 2. And they could possibly, with Vivo Key, I think that's a team that could possibly strike for that top 5. ये वीवो Yeah, किट for का sure. की टीम है One of the teams, of course, that I've been following a lot. Covering Vivo BPL Kid. Brazil. Insane players, mechanically Visual so gifted, all of them. Definitely one of the teams I would love to VK. see going into the after हाँ ये party. देखना Also team I वीवो would love to see Brazil, here in the last day, Adrian, ब्राजील the first player in the PMPL spring that was able to get the Brazil. triple MVP. ओस Highest भाई damage, टीम स्पॉन्सर highest स्किन करना है डिसेबल नहीं मेरे को, की क्या है। बोलते हैं Elimination. सबको नया नया आईडी दिया है ना। And highest healing स्किन है in ही नहीं। a single match. Yeah, I mean, अबे ये अच्छा है वैसे we, They're that- be Yeah. dancing, yeah, for sure. yeah. You know that with, हम लोगों को with तो the समझ setup, जाता just प्लेयर wait, उड़ता just wait until next week रहता and है। we'll tell you Player how का it's going to कपड़ा। be working. They're going to be loving it because they're Okay, just okay, such Brazil an की team aggressive है, team, okay. and I think it's going to just allow them
अरे यार क्यों किंडा बफर हो रहा है ईयरफोन भाई? and give them the chance किंडा to ईयरफोन लिया भाई. win किंडा once क्या more. होता है भाई? For sure, our next cycle is going to be popping very soon. We are seeing here वो coming जोन on the side. निकते There's a lot of कौन space in the east, a जाता lot of open space in the सोल पे सेंटर. south too. And the question is, if the next circle pops north, south, where it's going to go, it's going to be very important. If it goes center, though, a lot of teams are going to be happy. Oh. It's going to go kind of एज हो south. गई सोल पे So, नीचे गया. good amount of teams right now would be having a good situation if they did some of those long rotations out on the बस eastern जगह side मिल जाए or भाई on the western इनको. side to try to get in on that southwest open area that we right now know are open. And statistically, the players also know is open because of those continuous अबे लोग southern दिखाते ही नहीं पता Yeah, है. and I mean, if you're Enigma Galaxy, you're happy with that shift. अरे Enigma यार, Galaxy तो का engage rotation- ऐसा नहीं They होता were able है. to locate themselves in a यहाँ perfect जब तक spot, and engagement now it's नहीं going to be होती ना, being able to defend where they're currently ये at. सब We saw rotation some वाली teams being teams able को to और do वो that सबको perfectly दिखाते yesterday, हैं. which was with Star Wars Esports. I want to see Enigma Galaxy. I mean, a team that's just so close to the top 5. Hopefully they can finish up. As we do see USG here going up against Vivo Kid, and look at this. Donuts being able to get some knocks right there, and hopefully getting the finishes. They need to be careful. They're currently getting shot. I think they might be able to get third party from 52 Esports. A lot of fights going to happen here around the quarry and this area. as क्रेजी well. जगह इनकी ब्रो. नहीं बट ये थोड़ा ट्रैप भी नहीं है. आ सकते Which मतलब is तुम अभी available नहीं on आ a lot of सकते real जगह. अबे estate is ऊपर available right now. अगर See ऊपर को ADM जोन sitting करता है on the नॉर्थ southern खेल लेंगे. अभी यहाँ पे ट्रैप हो compound. रहा Shots are प्लेयर coming ने in. मारा था Nice ना एक yellow टीम as को well, मेरे को joining याद that है one इसलिए बोल too. रहे हैं. Donuts are going to be going out in Yes, 18th yes, place. yes, 2 yes. eliminations for them though, so they're going to get a bit of scrap for points, but that is not the amount that they need बॉम्ब फेंक के to ही be खत्म able हो to जाता है. secure top 5 spot. Very good for the rest of the teams right now. They're eliminating this early. They're holding on to one of the valuable ये spots. सांगवान भी नहीं है स्नैक्स भी नहीं है Back to कहाँ back गया coming out है of North America. USA, of course, Someone they are 20 मिनट में आ रहा है. कौन सा ईयरफोन लिया? मैंने लिया ऊपर पे करना था, अभी मैं का बोला situation. मैं They need to be करता हूँ. मेरे rotating. भाई They को बोला have लेके far, आ जा far तो ahead उसको of लेके them. आया सो. Yeah, I was thinking Donuts was trying to get some easy points right there. क्या and क्या ended up क्या back बोल fighting रहा है? with 50. किसकी स्ट्रीम कर रहा है? हाँ, मैं वाईटी भाई मैं कहा तुम्हारे ऐसा रूटर लोग को. This is a team, I mean, पुअर ब्रो. they're currently not performing Me to poor, what they bro. would like to be Big performing, people. and hopefully at some point they'll be able to showcase because they are the बच only गया. hope of NA. They are back-to-back PMPL NA winners. And here we go, Falcon now finding themselves in the same position that Donuts was. हाँ No, पीछे no, से खा it लिया was बे back मौत even से. more because they have to worry about now 3 teams, not just Vivo Key, not just 52 Esports. We're also seeing more taking some shots to Falcons. भाई गलत that's फंस गया not बेचारा. the way you want to start your day for the team that's currently in the first place. That's super unfortunate. Diego and the boys from Vivo Key are वो inside. You can see rotation on the थोड़ा minimap गलत top right, चीज़ they भी are है. on the edge of the new circle, so they are also बीच considering में जा what's रहे going to be थोड़ा on रुक this के team, जाते हैं how we're तो gonna get फिर. into the next circle. It's very unlikely that's going to end on them. Falcon right now have taken some terrain further into the circle, but they are in a kind of rough spots, hiding behind cars, hiding inside the shacks. A ton north of that, outside the circle, they're going to have to make a macro rotation, try to get into that circle. And the question is, how are they going to fare and how deep are they going to try to get? हाँ जोन भाई. Here popping very soon. Logos are a little bit big, but we have बना an थोड़ी idea है. where most of the बन teams रहा है. are. SouL sitting in a very good situation. Vampire sitting in a very good तो कहाँ situation. जाता है? And as you said before, अबे ये लोग Enigma टीम Galaxy का एक तो sitting इतना pretty बड़ा good. लोगो करते हैं Yeah, जोन ही Enigma नहीं Galaxy, दिखता I है mean, they सही couldn't से. have been even more blessed by that circle. Now, are they going to be able to get blessed? I'm pretty sure if they do end up getting blessed, we're going to see some claps. ओ ऊपर को गया. Oh, Barely. little ठीक bit है. north, but they're on the बट edge. ये लोग के लिए अभी वही सीन है. It जोन में works. ये You लोग can को see, है you ना. can है, hear edge we'll पे. be able to hear those claps if they do end up benefiting them. And it's going to be interesting how they're going to be able to contain that spot here. ये We मॉर्फ are- वाले से खाएगा we see फैल्कन वाला Another team, ऊपर I से. mean, as we do see Team Falcons here taking some shots at other teams. ये Team गॉब्लिन SouL नो. is actually a pretty Okay. good spot. They do end up, one of the players does end up getting knocked, but they should be able to pick them up. And Atani Esports, they're going to be in a very hard spot right here. Yeah, for sure. Joko trying to smoke up, trying to use the utility try को to make sure that they can stay alive here on the edge Ah. of the circle, northwestern side. More teams Okay, are going to be game moving play in. होता है bro, Four यहाँ rivals पे on screen bro, currently. crazy. हाँ भाई. Malaysia, बहुत मजा आ they're रहा going है to be देख के. jumping into the shack. They are in a pretty damn हेक्टर ने चल नॉक दिया. अरे नॉक फिनिश कर दिया. right in the नाइस. center right now, so they could play that ओमेगा नॉक slowly. Now किया. SouL, नाइस some नाइस shots नाइस. चल. towards TJP, Stalwart too. अरे बढ़िया वाइप कर दिया. TJP, my, that is so well played here by Team SouL 7. And I'm Oh, loving last what I'm one seeing they from go Team VP SouL. I mean, I talked about it Ah, earlier. चल, This is a wipe तो हो team गए. that's taking the aggression. It doesn't matter. I finally feel like they're starting to get more confident with themselves. And this is what I was talking with earlier. This is a team that some of the teams at the top चलो need to be लेट्स careful गो with लेट्स गो. because they are सोल. getting confident. We saw what happened to Star Wars Esports. I'll repeat Hello. myself ऊपर जाना because it was tricky just होगा, so ADS पे impressive जा सकते हैं what they but were able to हाँ do to वो the point that फिर some of अभी the ये जोन Twitter ऊपर को account कटेगा तो ये was लोग को making पुश memes out of it, and I करना was पड़ेगा. loving it. इनसे फाइट So करना hopefully we पड़ेगा. can continue to जा see सकते those हैं, kind of कर सकते हैं. performances from Team SouL अभी aggressive and पे Vivo खेलेंगे Key. तो निकल They were able to Hmm. spot one of the players there from Team मॉर्फ Falcons. का And बंदा आ currently गया. he's just
He's hoping that they stop shooting him because there's only 2 players, and look at this. More Atani Esports
No, I thought Hoga Atani BC. Esports here was in a pretty bad spot, and we can see more of Rocky making the push and trying to engage a little bit closer. Really good shots coming out of Morph. Fantastic अबे aggression. अबे Rocky here उसके मुंह पे है भाई. can potentially take him on right now. Push through that. Shots are coming in. Smokes are being deployed. Rocky potentially could be seeing him. Finds him. France goes down, and Morph is advancing on Ayrton. Yeah, and I saw Choco still alive. I know that's a Wipe play कर that दिया. wants to end ultimately. भाई, damn bro. Ton Esports. Now we're seeing Team Falcons. Yusuf barely staying alive. We also see Vivo Key trying to pick other players. वो भी रेस हो जाएगा. एक फिनिश हो गया ना बट नॉर्थ का. इन लोग समझ भी नहीं आ रहा है इसका. They are so skilled from South America, from Brazilian region. That hopefully, I'm really pushing for them because I'm also South American, so I'm a little bit biased, but I'm really hoping that they can make it to the after party. All right, Falcons, what can you do here? Yusuf, last player live right now. Cielo is taking him on. He has taken him very low as well. UMP could be pushing into the shack. Yusuf trying to defend it, but he's going to be taken down. That is very impressive. Falcon भाई मर गई. That means Falcons is going to be going out in 14th place, of course, and also saw Morph going out. Just before that, Morph did get a good amount of elimination. They're going to be racking up some of those points. edge खेलने का try करते तो हो जाता है. It's Wildcats right now. आराम से खेल सकते थे अच्छे वैसे. बीच में zone टफ होता तो edge ही खेलो ना. बीच में 14 किल चिकन का लेट स्कोर है. अरे भाई 14 किल चिकन आज आपके मुंह में घी शक्कर भाई. Anything can happen. I'm loving what I'm seeing from some of the other teams. I mean, I'm loving what I'm seeing from Vampire Esports. They have been there for such a long time that they're hopefully going to have enough of the loot, right? This is one of the things that we saw some of the other teams getting into trouble yesterday with just staying put on just one spot. They were able to, yes, make it towards the final two circles, but when they started getting into the engagement, longest they just elimination didn't have Hector. the utility. They didn't have a lot of stuff in regards to meds. And now, with this right here, Damwon Kia couldn't be happier. Damwon Kia really happy for this. They're trying to defend that right now, and they're sitting in the center compound in the circle. Right now, a lot of teams are going to be fighting for that quarry rim on that south side of the circle where we see Vampire right now. We have so many teams down there. Reckons, Bucks down there, Stalwart, back to back. So many teams are going to be fighting for just, you know, one half of a compound and a little bit of a ridge. So we're not seeing probably more than one or two teams that's going to be surviving that outcome right there. Also, the North, teams are going to be fighting for just a little bit of sliver of that fields that we have. Full Riot sitting happy. Yeah, 7 out of our 13 teams right now currently towards the south. We see back-to-back. J7 being able to hit some shots right there. Hopefully his teammates are able to they're going to realize that just they're all grouped up and maybe they'll start shooting those vehicles to get the explosions. We know he has that Lux getting shot by J7. J7 right now on a tear. Really nice pick up of Stalwart also on screen. J7 continues to put damage onto Istanbul. Wildcats goes down to 13th place without an elimination. That's going to be a rough one for them. But Stalwart is pushing right now. They're aggressing this. They saw the knocks come out. And they know that J7 potentially could be only one guy because they only heard Box one versus RS का last player बचा है. Defensive. Can he find J7? Oh, Vampire Esports भी भाई SouL कहाँ है फिर? आप दिखा दो बे. That was a great Molotov. J7 able to back off, and I don't think Pico was able to spot him. Polo also able to set himself up behind the rock, getting those angles. And here comes a bit of a push there from, I think it was J-Way trying to push up. You can see J7 wanted to get more into the action. He's able to get one knock. Can he get the finish? He's going to be able to get the finish. Top laying down. And SE actually getting third party. भाई RS भी मर गई. From some of the other teams behind. This might be but हाँ पता नहीं बे दिखाई नहीं रहे. Down top is currently having the height advantage. J7 being able to get some damage there with the nade that he threw. Can he get last बंदा है ना ये मार देगा ST वाला तो. Heal up and I think he is going to have enough time to heal up. Come on, trade. Let's see if J7 can get along with this Bison right down here. Goblin ने knock किया. Nice near. Utility, that is a really good deny from him. J7 of course. अबे बहुत compromised position. अरे नहीं from Vampire as well right now. More is coming in from them. Stone finding multiple with the grenades. Utilities be also being deployed. Left से भी खाते ही बे. Really well played by Stone. Aggressive. Gets down Hector off the knock. And now he's going to run into the Molotov. That's unfortunate. Goblin finds one though. Returns. SouL goes down. That's super unfortunate for them here in 9th play because back-to-back elimination right there. Vampire has to try to survive. They're under a lot of fire, fighting for this terrain here we were talking about before. Zone तो देख Doan giving पे पूरा. कोई ना nice try दो. From that engagement, I know that. अरे you are a spy एकदम बढ़िया भाई. तू बता कैसा है? क्या हाल चाल तेरे? मेरे तो हाल एकदम बढ़िया. अभी तो बढ़िया नहीं है. पकड़ लिए वो पेस.
has pushed him. And same thing with M1K. I mean, this is team. Two out of the current 7 teams. इन पे तो पूरा जोन है भाई Kia टुवांग has 4 players alive. Virtual Gaming Squad also has 4 players Dawang. alive. उन लोग के chicken है, ये तो chicken कोई नहीं लेता। कोई बग्गिया लोगों मार रहे थे। One time out, I think. Yeah, and as I was talking about before, only 2 teams survived this mayhem on the southern side of Vampire Esports और कोई ले ही and नहीं सकता। And as we were Nah, saying this before here, Nick उनका ही McAllister chicken able है। to take that shag away from Fall Rivals. We didn't catch it, unfortunately, but as Seven pointed out here, this is really important. सब लेकिन उधर ही स्लैम करेगा भी पता है। करेंगे हाँ तो वो एक बस even harder for the teams chasing. एक Vampire taken down by Song though. वो 2 नॉक कर दिए भाई Stone, जूरी में। Ravenclaw gone down too. That is super unfortunate, and Shreds is just the last player that is not knocked at the moment. पीछे से पुश कर दो। ST के राइट पे आएगी WP। Vampire just very unlucky too there, and I think बहुत he was किल trying to मिलेंगे make it भाई। farther with that one minute of crashing into the vehicle. Full kill kill। You can see Stone there just finally. STR ने चोरी कर लिया ऐसा kill DWG का। SouL Esports, I mean, this is a team. It's been quiet. They did end up just getting one of the players knocked, but they're gonna see if they can maybe pick him up. Then M1K, they're sitting perfect right now. And as you were saying, ये नेट डालेगा ST पे। currently just has 1 player, but they do have 8 ilms. That's going to be big for them as they are trying to break into that top 5. Vampire Esports trying to make it up, trying to use that smoke wall, and so far he's barely been able to. You can see M249 मार रहा है मैं माँ कसम। 52 Esports. Yeah, exactly. And भाई SouL is ST going to be survive trying कर to ली survive देख the रहा situation. है रेस भी हो गया वो। Place with the eliminations. That was Adrian being able to close that out from Vivo Kid. Important for them. Stalwart right now on the offense, but Shreds is helping this defense that M1K is trying to set up in the south. ये शैक वाले से खाएगा He's उनको बच trying to गया। आ गया get नीचे। deeper into the zone, trying to survive for as long as possible while 52 and Virtual Gaming Squad. बट देख रहा है ये Side, as you कितना see how फटाक the से उधर distance पीछे of चला गया Virtual नेट has पे been डाल put के। up to 52, but they are right now on their bellies trying to survive. Deployed smokes. Virtual Gaming Squad is moving out on the east side of this compound that he is able to hold, but Juni is finding another one with a fantastic use of utility right now. More Molotovs are coming out. Utilities भी सही से यूज कर रहे हैं। But if they can secure this winner chicken dinner, भाई ये जूनी तो क्या मार रहा है वहाँ कसम। You can see Juni right there being able to knock down top. They are aware Oh, of everyone फुटेगा वो। gonna try to rush him. अरे बच गया। Barely getting missed by that nade, and I think SouL Esports भाई might be फिर बच गया पता है cover फिर for बच this, गया। as they don't really have to worry about that many people. And something that I was currently looking at too is Vivo Kid Adrian. He won the engagement with the last player from Nick. Innings That's खत्म हो gonna गई be huge for this team because they are trying to hunt down some of the other teams that are out. Wildcats, I mean, I think they're gonna have zone points. They've भाई। already been out. Morph as well, they're already out. उस They're बार going to be बीच able में to बंद नहीं आया climb तो up वहाँ in से a big अभी way when it comes down competition to होगी Roll क्या Esports. So देखते हैं भाई great rest पता out here नहीं from लगा। Vivo Kid. And another team, I mean, I feel like they've been a little bit quiet after we talked क्या about हो गया पीछे कहाँ चला गया? third party earlier. 52 Esports. बढ़िया Only अरे 2 क्या elims, बात है but they do भाई। have 3 players तुम भी alive. बढ़िया And in all तुम the भी action बढ़िया। that we have been seeing here, Avenger, क्या कर रहा they're है just आजकल waiting patiently. They're रिवर्स doing, I वैसे। feel like, what Dan1Kyo was doing earlier. Exactly, and the question is here with this circle, as you see in the minimap, it's भाई actually VTS पूरा एकदम 52 is the माँ only कसम। team on the northern side. Virtual Gaming पीछे Squad था does मेरा have the भाई। information on them. They know that they're there up north, and Yafaz is hiding so many shots, so many bullets. भाई onto आ Vivo भी गया Kid ये out in क्रॉस in बच गया। 5th place though with the eliminations. That's good for them. Question is, how far अब can दो Virtual जगह से Gaming पुश Squad आ take रहा ये है। this? लोटस पे डाल रहे हैं। सवाल That के key लिए are going to be भाई able to defend this compound. Guys, Dan1Kyo are going to have the enough utility to be able to take advantage of all of बच this. गया। Here we go, Virtual Gaming Squad trying to get different angles. Are they going to be able to break into that? They also have to be careful with Star Wars Esports that was on the other side earlier. I think Star Wars Esports has been able to rotate a little bit more. And now you see 52 Esports getting a bit more involved. तीस ये भी आ hasn't गया। lost a player. Virtual Gaming Squad still has all their 4 players. फॉरेस्ट को देख मुक्का मारा और के बाहर चले Star Wars गया। Esports, meanwhile, they're like, okay, you guys take the fight over there. We're going to be sneakily moving up to your compound. Yeah, 52 definitely just trying to survive, trying to make everything just happen in front of them, because if they can survive a bit longer, they are going to be securing themselves even more. भाई मेरे को क्यों लग रहा है इनकी फाइट हो जाएगी एसटी चिकन निकाल लेगी। Says no, they find Taku. Gaddafi steals it. And more shots are coming out towards Pharaoh. I think that's him down as well. 52 out in fourth place. इनकी फाइट हो जाएगी दोनों की भाई VGS और 4 guys alive. So is M1K. ओह दो नॉक निकाल दिया वे माँ कसम।
Forrest being able to knock down 2 players right there. That was huge. Down 1 Kia Junior is going to get knocked. King shot. ST chicken bro, ST Here we go. chicken. Star Warriors Sports now moving into action as well. Damn 1 Kia getting some of the players knocked. Virtual Gaming Squad being able to clutch it up as well. Oh बेंचोद भाई क्या knock दिया है? SouL will play here, swap to the barrel after playing with the not having more bullets with the UMP. Can he make something more happen, or are they gonna be taken अबे down? nice try बे, nice try भाई, but क्या मारा उसको भाई? Second place here for SouL. He's alone, and Virtual Gaming Squad has 3 members now, 4 members standing, and they can just push aggressively to secure this win. And I believe in top. We've seen it before. We've seen some 1-4s. Can he do it? He does the first one. Can he knock the second one? He's gonna take some shots. बहुत लोग हैं. अबे but finish कर दिया उसको, finish कर दिया. असम shift हुआ वापस, बिजनेस वापस शुरू. अरे भाई, good luck bro. No idea. Good luck for you. Alive, as I said, we were talking about it. Teams throw But ST भाई कहाँ से क्या निकाल ली बे? They are gonna try their best to push towards that top. भाई वो बंदा क्या मारा बैरल स्विच करके भाई साहब. गलत है भाई, गलत है. From Virtual Gaming Squad on the first game of the last day. Yeah, so amazing to see Libya being represented here. Virtual Gaming Squad, of course, super amazing. SouL के लिए बहुत compromise position था बे वो वाला. 8 kill लिया टॉप ने. Continue this trend here. They could be jumping in further top and maybe be within आ गई री ST ऊपर. हाँ फर्स्ट तो आ गई ना, सेकंड आया अभी. और कितना किल था? 12-13 किल था. जीजीस पोपोय भाई चिल करो तुम, अभी वो खेल रहा है तो देखो. पिका का स्नाइपिंग देख के स्लेयर हुआ इमोशनल. स्लेयर नाइस ब्रो, 26 पॉइंट ले लिए इन लोग. कितने पे थे इन लोग? 13 पॉइंट पीछे थे, 13 पॉइंट पीछे थे उनसे. The match. A fantastic job by them to close things out, but honestly, Big fan. There's so many different things we could talk about here. Damn, Nice, having almost a god compound for forever, it felt like, as the zone kept shifting on top of them, but they weren't able to close it out. The thing about Damon's compound, and we were talking about it with Colaris, like that compound is a godsend if you can get 52 स्पोर्ट्स भी मस्त एकदम वहां से लेट के आ गई. ये पॉइंट कितने गेम पॉइंट मिले ST को? क्या 26 मिले ना? 26 मिले. हाँ नाइस ब्रो. वापस से फर्स्ट पे चली गई. क्या बात करना है बता भाई. रियोरश बता दे ब्रो. सिग्मा गैलेक्सी भी थोड़ा ऊपर आएगी. डाउन भी आएगी. टॉप 5 में ही ऊपर नीचे होगा बस. That then becomes their downfall because all of these teams are pushing in at similar times to try and thwart their efforts. So as much as down 1 Kia, बट स्टॉलवर्ट वहां से ऊपर से भाई कैसे नीचे आई. उनका एक प्लेयर नॉक हुआ, बच गया वो 3 मैन वहां से. बढ़िया निकाले बे. I feel like, to be fair to Damn 1 Kia, though, they did a really good job initially by ST कहाँ की टीम है? कुमार पलरेचा, यस ब्रो. मंगोलियन टीम है ना? मंगोलिया, यस. Hey, stay back, don't come at us right away. And then, as you said, Colaris, 3 teams. रहने दे, मैं कहता तो अरे भाई अंकुश दास भाई. It's a bit of a greed play by Damn 1 Kia. Like, of course, it's difficult to get together from that 2-2 split that we were mentioning here. They tried, I think. Yeah, they had like a little bit of a smoke between those buildings, and you really saw the Forest wanted to leave that side to regroup with two other players, but Genie was stuck, so he just like wanted to stay in the 2v2. Guys, like और सब्सक्राइब नहीं हो रहे तुम लोग से. One team I did want to mention, by the way, was actually going to be फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दो गाइस, जल्दी. आज 381 के हो पाएंगे क्या? सब्सक्राइब करो यार. तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार. सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसा चलेगा? ऐसा कैसा चलेगा बताओ. लेग्स मारा हूं, ऐसा दर्द दे रहा है ना. क्या? क्या लेग्स मारा है? नाइस. नहीं क्या बोला तू? लेग्स मारा कल? हाँ भाई. जिम में जा रहा है तू? हाँ. कौन सा? कभी से जिम जाना चालू कर दिया तू? 6-7 दिन हो गए. ओ देखते अभी कितना. उधर भी कर रहा था ना 5 स्टार होटल पे. क्या सब उधर होटल में सब जिम वाले बन गए थे भाई. हाँ वहाँ भी किया, फिर आते यही ज्वाइन कर लिया. सही है भाई. कल बहुत ज्यादा ही लेग्स मार लिया, पूरा पेन हो रहा है ना ऐसा अभी. एक दिन में कैसे को रोनाल्डो बनना था क्या? भाई दुखेगा तो सही ना भाई. दुखेगा तो सही. मारेगा तो दुखेगा ना भाई. तेरा पेटीएम नंबर कौन सा है? पेटीएम पे पैसा भेज रहा है क्या रियो? भेज दे फटाफट भेज. बताता हूँ तेरे को.
मैं किसी के मैसेज इग्नोर नहीं करता जी। अब यार ये गेम चालू होते होते क्या करें अब। मैं तो वैलो खेलने जाता हूँ जब ये चल रहा होता। हाँ ये सही है, वे कर डीएम सकते हैं। खेलते चलाओ। डीएम हाँ वही। डीएम का एक गेम हो जाएगी पता है। नहीं चुप, नहीं एक गेम नहीं होगी, गेम डीएम होगी। तब दो तक डीएम उनका जितने होंगे। तब तक उनका वो हो जाएगा, दूसरा मैच खत्म हो जाएगा अपना। एक गेम खेलने जाएंगे तो। अरे हम 13-0 जीतेंगे बे। अच्छा ओ ठीक है भाई। ठीक है कल रौनक को कैम करके मारने में मजा आ रहा था। कैसा है बे भाई, बी के उधर भाई तेरा टीम ए पे है और तू बी के उधर बैठा है, वाह तो जानबूझ के वैसे बोल के खेला था मैं, देख भाई इधर बैठता हूँ। देखो वाह। वीरू को क्या चला जा रहा था, वीरू को कैसे मारा, राइट कोई साइड बे ट्रैप सर्दी रखा, हो गई है क्या? हाँ लेफ्ट साइड डब्बे के पीछे बैठा हुआ था। वीरू आया नाइफ पीछे रखे, जैसे ट्रैप बहुत का गन निकाला। वीरू इसमें ना बाइंड में बोल रहा है तू। नहीं 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 भाई, बाइंड में में। तेरे को तो बहुत गाली दिया वीरू। पर बाइंड बाइंड में में मस्त मैंने मारा। शॉटगन मारा तेरे को मैंने। ऑफ नूब। लेके बैठा था, आना आना माइंड में ऑनलाइन आओ। तो भाई वो फेड ने दिमाग खराब कर दिया था। ऑनलाइन आओ, एस्केलेशन खेलते, आ जाओ। अबे हमारे पास वो दीप भी था जो एकदम नहीं मारा था, सिर्फ फेयर नहीं था टीम। क्या अरे दीप फेयर तो था टीम साले। नहीं था हम लोग देखो तीन ओवेस भी फुल पोटेंशियल में नहीं मार रहा था कर। अबे क्योंकि बट खेला ही एक महीने बाद। आना स्लेयर ऑनलाइन आ। हम लोग तीन ही था, आ रहा हूँ, मेरे खुलने में टाइम ले रहा है यार, रुक जा यार। अरे यार हाँ भाई, ड्रीम्स भाई, ठीक है भाई। खुलने तो दे भाई। अरे जेडन अरे ब्रो, जिसमें जीते अपन उसमें तो मैं मारा। हमें भाई ओवेस ओवेस के इसमें जाके ले लो शॉट आउट। ले आना नो क्या प्रॉब्लम अबे कर आ इन गया इंडिया, मेरा स्पैम ये भाई, ओपी इन इंग्लिश ऑल टैब चैट। दब अरे गया। अरे थैंक यू ब्रो। आ गया, इनवाइट कर। दैट वेनम पंत। एस्केलेशन। यस यस, एस्केलेशन लेट्स गो। वो लगा डीएम लगा था ना यार। भाई एस्केलेशन में मजा आ रहा था कल। वही नया कर दिया ब्रो, एजेंट्स का स्विच करने का। मेरे पे सारे मेरे पास रेडियंट पॉइंट भी 260 पड़े हैं, 100 नहीं भाई देख। मेरे पे 15 ही पड़े मेरे हैं पे बस। 175 है। मेरे पे 15 है बस। उससे क्या होता है बे? इजी खरीद गन लूंगा ना। अपग्रेड करने के लिए रहता है वो, मेरे पे खरीदने से कोई मतलब सारे नहीं गन उसका। अपग्रेडेबल वाले हैं और सारे अपग्रेडेड है भाई। बक्की भी है मेरे पे। Match बक्की। found. आयरन बक्की है मेरे स्लेयर पे। को एक गाली थी, अभी नहीं बाद में देंगे उसको, गेम में जब कैंप करेगा ना तभी देंगे। ये 7000 यूसी अरे तो वो कितने में स्नाइपर वाले आएगी? टाइम तो बस तेरे को पता ही था मैं उधर था। सुनना 7000 यूसी कितने में आएगी? 7000 यूसी कितने में आएगी? यूसी मतलब इसका वैलोरेंट का। Warm up. पता नहीं याद। एप्लीकेशन लगाना ब्रो, उसमें मजा आता है। किसमें? एप्लीकेशन। अबे ये भी मस्त है बे। इसके बाद मतलब सेकंड मैच के बाद लेंगे। तो 5 तो रेज है। खुलने में तो टाइम ले रहा है। चल सारे, चल सारे, चल सारे। ओह शेर। ओह क्या दिया है? Let's go. Fight. अरे अरे उसकी माँ का। Too late.
पिच्चू अबे यार हटे अबे यार एक को मारा क्या दिया है यार उसको मार दिया भाई हगास अरे काट भी दिया हाँ अबे मैं खा लिया फिर सी टट्टी अरे भाई चिपका दिया मार प्लेयर निकल के चार में से मेरे हाथ कैसे मालूम भाई अबे ये तो भाई ये भारी है वे मार्जिन के कहाँ से आ रहे हैं अरे फ्लैंक मार के मारना पड़ेगा तो चलते रहेगा मेरे को हाँ ना किस जगह रॉकेट करता है नीचे में 10 को बर्ड करता है अबे 20 से जाना पड़ेगा रे चक्कू फाइट चल रहा था मरा तुम ही मर पीछे से दिया है अबे भाई गन हाँ अबे यार अरे यार जस्ट करना ही स्टार्ट हो गया मैच चालू हो गया वैसे भी चालू worthless जी राइट क्लिक कितना गंदा है वे अबे क्या बे हाँ जा रहे भाई जा रहे अबे यार अबे 2 हेड मारा इसको
विच कर दिया जा रहे भाई रुक जाओ बस काट रहा था मैं साले चाकू खाया जो अरे कौन खा लिया चाकू फिनिक्स अबे भाई डैश मार रहे हैं इन लोग ओह इसको काट नर्ड भाई जीत गए लोग जीत गए रे हाँ जी एफेट क्विट अरे क्विट भी नहीं हो रहा चलो चलो मैच 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 में जाओ मैच स्टार्ट हो गया कर दिए बंद हो रहे फाल्कन एक किल भी ले ली हाँ भाई हमेशा उनका एक हाँ स्टार्टिंग में किल ले ही रहे एसटी का ली ओ भाई 50% off of PMWI packs. Get a set straight away and buy chances to drop PMWI treasure. चलो चलो लेट्स गो कितने दिन तक बिजी रहोगे देखते हैं अभी In the region of the top 3 teams will have a chance to win a prize maximum of 1 award per user. Yeah, exactly. You can obviously check much more of that out in game while you are playing. But right now we are focusing on the games. Reckons right now fighting a ton. The Chinese team. अरे क्या है coming out of Latin America, the Mexico guys are going to be having कोई a bit नाइफ of a rough वाला time किसने because नहीं all देखा Reckons अरे only भाई have guts. Okay, मेरे पे Blue 3 लोग आए नाइफ खाया है देखा मैं देखा ना हाँ 2 बार खाया हूँ So close quarters combat is definitely an advantage for a ton in this situation here. The first guy मैं इतना potentially going to दूर be था meeting anyone. फिर भी Could be नाइफ लगी Bruno. He looks like to भाई be मेरे को मस्त one लगता है down. भाई एस्केलेशन Chuckle कल खेला always तो taking मेरे a को little bit of बढ़िया लगा damage. Reckons are playing very closely knitted together here. You can see them moving together as a RNG squad. And that's what I losses really जाती है love. क्या That accuracy of being completely next to each other will mean that there's going to be re-knocks happening and you're going to be having कहीं to भी get your कूदते revenge हो तो immediately. Double key on 3-2. Coming out of re-up. Yeah, and I'm glad you pointed out Valle Slayer Valle Del Mar so close together because what I saw there from the setup, Tani Esports, I mean, Senatexa was a little bit too far back from me. I don't know what kind of angle he was trying to get there, but if RC अभी ये लोग जॉयस्टिक से ही ये करते हैं गाड़ी चलाते हैं बहुत सारे लोग it will take him a bit too long to actually get to help out his teammates. जॉयस्टिक वाला ड्राइविंग रहता है ना जो I mean, it is going to be one of the top 3 teams going up against one of the bottom teams. मेरे को भी नहीं समझता भाई कैसे जमता है वो if Atani Esports can पेटीएम चेक spoil कर the पे party for RSG, a lot of stuff could change in the leaderboard, and I'm pretty sure Kalaris, Maxman, and also Jason. अरे भाई विशेष भाई थैंक्स थैंक भाई just anything with 1000 रुपया anything भेज that दिया these guys can dive आज into, बहुत they प्यार आ will रहा है तेरे को love मेरे that. ऊपर It's में just विशेष crazy to see. क्या चाहिए They're तेरे sitting को in there in the green नहीं नहीं room for थैंक the यू challenge. थैंक They're यू just फॉर like, दैट there's आई papers वाजंट everywhere. बीरो It's just flowing थैंक्स around, लॉट numbers, गाइस numbers, विशेष ओपी कर numbers. दो It's यार just चैट like, में oh, we're just coming थैंक here यू to विशेष have the बाय game, see what's happening in the action, but they're just focusing on every single numbers and digits here to see who's going to be the top 5, who's going to win, who's going to get all the MVP rewards as well. And look Goblin. at this. Vicious, sorry, vicious, nahi vicious. As some of these teammates do, 3 of the teammates from Team SouL do end up pushing forward. He's going to come down to who's going to get the first knock. Hector, you know they know exactly where some of these players. अबे इनका यहाँ कहाँ फाइट हो गया बे Who's going to be able to throw the first nade out? नहीं Hector not being able to get it, and guess what, Skirb from भाई TJB being फिनिश able to मत get the कर first knock. I love what we're seeing from them already. Utility being put out here in the tower of the church. medkit मार रहे हो उधर It's a really high priority situation for these guys right now. It is dead center in this next circle here. Hector pushing in with the UMP. Little one helmet, little one vest. But he's going Goblin to का है बे Omega, Kist, Tingsker, they are close to each other, trying to defend this. भाई push कर रहे They are हैं going to make that push They are forward. pushing it Can they be able to- aggressive. Come on, Hector. Tingsker goes down. Team SouL being able to trade at least one out there. Now this is the time where the other players from Team SouL need to be able to push that. You can see Asha trying to actually do that, but he needs to be careful. अबे यार गलत सीन हो गया बे That angle. Yeah, exactly. Lin is holding that defensive angle, so SouL cannot push straight into the tower. And they're going to get the rest off. Omega's going to bleed अबे वो out. रेस भी हो That's गया a हट huge advantage to TJB in this situation here. They are going to be keeping all members alive of the team. And Team SouL is going to Goblin go ने down एक to 2. फोड़ा चल Stingsker goes down. That's a huge one for them, though. Goblin अरे बट comes इसके in. राइट में Oh रे my God, गॉब्लिन this के is a huge turnout for SouL. Goblin playing extremely well. Can they get Lin down too? Multiple shots coming in. He's actually getting so low. Kist pushing out too. Goblin is going to be able to return it too. अरे यार वो It's actually SouL that's going to be inning out.
going down completely, and TJP यार looks like they're going to be able to अबे pull out all गॉब्लिन four उसको मार members सकता था from this बे situation here. साइलेंस से उसको मार Goblin रहा था almost being उसको able लगा आई to गेस take नॉक the हो गया fight होगा there to win. मे Like, I बी think he got maybe to like मे बी 5 ऐसा हो हाँ सकता मुझे है भी ऐसे HP. उसको लगा कि नॉक हो गया छोड़ दिया हाँ होगा वही वही वरना ऐसे नहीं छोड़ वो 1 एचपी था बे Anywhere. And by the way, विशिस यस विशिस Star Wars Esports ended up losing one of the best players, if not one of the best players. हमारा क्या तो क्रेजी क्या 1v4 करे होता देख भाई वापस लाइक अभी इसका इस टूर्नामेंट का बेस्ट 1v4 अरे होता अरे है थैंक यू फॉर अभी गॉब्लिन क्रेजी थैंक यू विशेष फॉर अनदर 400 भाई मेरे को बात बता क्या प्यार आ रहा है यार तेरा धंधा चल रहा है क्या बहुत बढ़िया अगर सही चल रहा है तो बहुत अच्छा है यार खुश हूँ तेरे लिए भाई बट अभी यहाँ पर थोड़ा स्कैम हो गया अपने साथ रुकिए मैच के बाद बात करता ठीक है 1 सेकंड के लिए लगा नॉक हो गया फिर लेफ्ट घुमा बट फिर वो रियलाइज कर नॉक नहीं हुआ वो इसलिए वो एंड में बीच में फंस गया बेचारा बहुत गलत ट्राई किया ब्रो मजा आ गया यार कल अबे लड़की ने लोग चर्च पे कहाँ पर फाइट हो गया बे एक करके होता है ये लोग क्या करते हैं पता है सबसे पहले तो गॉब्लिन के एरिया से क्लोज ही नहीं किया लेफ्ट चले गए देखो पता है हम लोग को तो पता है क्या सोल हम लोग को पता है सोल क्या करती है डायरेक्ट चर्च पे आती है डायरेक्ट एक बात बताओ वेस्ट देखो याद है इन लोग गॉब्लिन का एरिया था ना वो लेटा हुआ था अगर राइट साइड से पुश करते हैं तो गॉब्लिन नॉक भी दे पाता है एक ऊपर वाले को अगर छोटे करके तरफ से पुश करते हैं कुछ भी लेफ्ट तरफ कर दिया तो गॉब्लिन का देख भी नहीं पाया गॉब्लिन का यूज ही नहीं हो पाया वहाँ पर पूरा वेस्ट Oh, Los Leones ending. Oh, it could be going somewhere in the middle though. We'll see if it goes some hard shift towards the west of the east later. Right now though, TJP looking pretty damn good. We are in a situation where some of the high ground compounds and the churches that TJP fought for is actually quite high priority. So let's see if they're going to वो वैसे आरपी में कुछ नहीं करता खाली लड़कियां पटाता है बस लौड़ा में आता ही नहीं आरपी वही आता भी है तो भी यही करता है लड़कियां ही बनाता है गॉब्लिन नहीं आता यहाँ यार and they could potentially be breached. Yeah, and I was just noticing action there with the 32 elements. लवलेश भाई चिल करो जान पटाता ही है और क्या करता है By the way, to run over your teammate if you do switch seats or get out of the car. Don't tell your teammates I told you this though. I don't want to be I don't want to be the one that's guilty for people starting to team kill in game. And here we go, Box Gaming. Being able to pick up the teammate that was down. TJP feeling hot after that engagement that they have earlier. They already have 4 elims under their name. You can see Skirt there getting some damage. And Xiao, is he going to be able to get He does have the boost going for him, and he should be able to get this knock. If he's able to step to the side. अरे फोड़ दिया उसको बहन चोद भाई बट खुद मॉली से नॉक हो गया उसका नीचे हुआ ना बॉक्स का ही प्लेयर उसके ही मॉली से नॉक हुआ ओह क्या फोड़ा भाई क्या नेट डाला है इसने ओवेस याद है अपनी ओवेस नहीं दिखाना था वहाँ पे याद है अपनी बॉक्स का फर्स्ट टाइम फाइट हुई थी वीकेंडी में क्या मारे थे ये लोग अपने को माँ कसम भाई बट इनको बहुत मारा हूँ हमने वो मस्त प्लेयर था बॉक्स लुइस इनके और हमारी इधर फाइट बहुत होते थे फार्म भाई 2 नॉक और एक को 1 एचपी कर दिया था इस बंदे ने लास्ट वाले बंदे ने यार ये इन्होंने यूटिलिटी यूज ही नहीं किया ब्रो गॉब्लिन ने नेट से नॉक किया था बट अक्षत फिर वहां पर जब ये गया ना जायो को नॉक दिया फिर इसको 1 एचपी किया फिर इसको लो किया फिर दोनों बीच में फंस गए थे ओ यार जब ओमेगा नॉक हुआ ना तब अक्षत और इसको हेक्टर को साथ में जाना चाहिए था हेक्टर के लिए ट्रेड हो जाता वहां पर समझा हेक्टर एक नॉक कर दिया था ना नीचे अक्षत होता ना तो सही हो जाता वहां पर वही ट्रेड हो जाता तो उधर ही जीत जाते वो कंट्रोल मिल जाता ना सीडी का पूरा वो ऊपर का और कोई मरता भी नहीं है इनका चल अभी क्या है अभी अपने का तो यहाँ से बैठ के बोलना आसान है भाई उनका भी प्रेशर अलग है ना वहाँ पर वो तो है
बोलना हमेशा आसान होता है. So many teams on the east, on the edge and on the ridges of Los Leones. They're really hoping for this circle to go east. A lot of teams coming in on the northeast as well. So the question is, where does this next circle go? We're going to see Shorty, Damonkia, and Liquid Galaxy. Falcon और ST दोनों ऊपर north से आ रहे हैं. Have a huge advantage for that one. Let's see where RSG कहाँ है? 52 on the south. RSG Los Leones के अंदर. Back to back has taken the trade of Chimacera, and Vivo Key is just on the northern side. 7, where are you hoping this one goes? Los Leones. Oh, it goes center. It's pura central, That's bhai. just the least hype circle we could have, but it means so. If at this exact situation here, there's so many teams coming in from the east and west, and there's already some good teams that are having some of these compounds. They are not that much real estate available. So it needs to be taken. देखा गाइस कल इसका गर्दन दुख रहा था, आज सर्दी हो गई. इसका रोज कुछ ना कुछ होता रहता है. गर्दन दुख रही है, गर्दन तो इसके साथ रोज कुछ ना कुछ होता है. भी दुख रहे थे. इसका हर रोज का है भाई, कुछ ना कुछ हो इसका. कुछ ना कुछ इसके बॉडी में होता ही रहता है भाई. I think Atani Esports still going to be on those buildings that we saw them earlier. Ended up losing Chaco. We saw RSG. नहीं बे, गर्दन मेरी पेन हो रही है, सर्दी मुझे. Yes bro, yes. पहले न्यूज़ पे अरे bro, welcome to सर्दी मुझे. our family. तब से ही है. ओवेस का पेटीएम. ओवेस का पेटीएम नंबर. ओवेस पेटीएम नंबर बता दे रहा. Tournament in the PMWI 2022 here in Saudi Arabia. We're playing with 18. ए ओवेस. बोल. पेटीएम नंबर बता दे रहा. मेरा. That's just wild. कौन सा नंबर? पेटीएम नंबर भाईले. कौन कर रहा है पेटीएम मुझे? हाँ. कौन कर रहा है? रियो रश गेमिंग. भाई 8369672346. लो भाई, ले मिल गया. जाओ भाई जाओ, कर दो इसको पेटीएम करो भाई. कितना रुपया कर रहे हो भाई? रौनक भाई कैसे हो? हम एकदम बढ़िया भाई. तुम कैसे हो? अभी आएगा तभी देख लेना. और जाओ अलीबाग. ये अलीबाग के वजह से नहीं है. मैं आज टीम लिया. Yeah, with Wildcats, I mean, this is a team that when we started today, I think they won in 7th place. They are going to continue to. भाई कल ऑडियंस के इसमें मैं देखा था और सीट बैठे थे वे. खूब पब्लिक डाली भी थी हाइलाइट्स. If they were to get a knock, they were just going to cause some more damage and wait to see where the circle is going to end up because I think they were inside that circle. 4 rivals. बॉक्स कवर्ड पॉजिटिव अभी बढ़िया मिल गया ना इनको. उनके पास बुरिया में भाई 4 किल और सेंतूर में बैठे हैं, मस्त मजा कर रहे हैं बॉक्स वाले. ओ क्या नॉक दिया ब्रो. Guess what? You were talking about Atani Esports. Are they going to push? ने पिला दी उसको. Four rivals might actually make that push. क्योंकि मेरे को फोन आने लग गए. Edge here on the ridge of the northeastern side. Now visible Wildcats. They have to use time to rest. They have to use time to use some of this healing here. PTM so they're taking away some of this pressure. Let's see where the zone goes. Next circle is going to pop shortly, and I can basically not see the map, but I know we're in Miramar. I see there's a little bit of space in between Vampire and Wolf in this situation, but the logos is obviously huge for this situation. It will go north. No, we're just west of Los Leones. We have a lot of open high ground that actually shifts towards here, just east of Chumacera. That is really, really, really interesting. We have a huge apartment complex compound that could be an interesting fight as well. I need to go have a conversation with that monkey because right now, my goodness, they are just getting absolutely blessed with the circles. And the turnaround from day 1 to day 2 has just been so impressive. It's really good to see them, especially with the last game as well. They were not able to win it, but they got a huge chunk of change of points from that one. Right now in 4th place overall. They're putting distance between themselves and the other teams that are trying to chase to get into the top 5 so they can get to the after party where they're fighting for $1 million. इसका हेल्थ इतना कैसा कम हुआ? ना तो हेड खाया ये. Yeah, I'm currently looking at it. There's so many teams still towards Los Leones. I mean, we have Wildcats, we have a ton, we got RSG. क्योंकि हेड भी नहीं खाया उसका, हेलमेट पे भी डैमेज नहीं हुआ. And I am looking towards the south, Enigma Galaxy. This is a team that needs to make a push towards the circle because once all the other teams decide to push in, it's going to be check करने बोल, check कर बे. You right now, TJB is so sad that they didn't stay inside the church that back-to-back right now have. We are seeing Wildcats shots on to Rick and that is really great. Thank you so much. On to Double D, that means thank the you so Wildcats, much. Thank you so much, Vishesh Patodia, for the
aggressive push is coming 2000 in. rupees We're gonna be coming ATM. over to full अरे Love you, अरे bye. विशेष भाई का लगता है फुल एकदम धंधा चल रहा है सही हाँ, से फुल पैसा ही पैसा है भाई। क्या भैया बात थैंक है यू भाई। भाई जॉब वॉब पे रखते हो क्या? हाँ मेरे को भी रख ले भाई। प्लेयर तेरे को आना है? हाँ मेरे को भी रख लो भाई। स्लेयर के पास बहुत पैसा है बे यार। अभी तो कोई BGMI प्लेयर बना नहीं करेगा। हाँ भाई अभी सब जॉब करेंगे भाई। Wildcats, they are getting third Thank party you, Vishesh by bhai. a ton of esports, Subside me, but they thank you so want much. those ELMs, and guess what? RSG right now getting eliminated by Lugs. Lightning is down. अरे ऑल इन वन क्या हो गया भाई? चिल करो भाई। Let's see if he can maybe clutch that. Is he gonna get it? Is he gonna get it? Could be a good one. Not enough damage, and Wildcats are looking to recoup from this situation here. Can they get the revives off? Can they get the first? हाँ भाई गंगा गुरुम भाई तुम चले जाओ खेलने। Takes down the lightning player here for RonaK and तुम चले जाओ खेलने भाई काम करो हैं। And X-Ray gets the first vehicle elimination, as you see on the left side there. GC. उदय कुमार भाई देखते third party work for a ton, and they're going to be moving in aggressively in this situation too. They know that they're hurting. They saw the fight with RonaK going on in the kill feed. GX versus Enigma Galaxy right now. We're currently not able to see it on screen, but they are losing some players in a fight that they're getting between with virtual gaming squad. And to be careful too, because 52 esports might be in the horizon for them. GC staying quiet. Is he gonna be able to get away भाई with इसको this? देख कैसे बैठा है And is he चुपचाप। gonna try to get any knocks? I think he's भाई gonna खुद play का it गैस safe. करना फोड़ ले I'm बस ये। actually gonna just wait a little bit longer until I can Gas get की one भी knock छुपा हुआ है from it, but he needs हाँ he needs to make those decisions quickly because he is going to be in the zone, and Hey, that zone kill ले is going to भाई। start hurting, and he's going to have to move Knock quickly. finish कर दे Right इसको। now would be the time if you're going to take क्या a shot. कर रहा है अभी यार? जाएगा वो आगे भाई उसका POV दिखाओ यार Falcons प्लीज। gonna be able to get this knock. There are not lappies अब able इसको to हेल्थ win देख it. माँ Falcons कसम। really needs to win What this. is How are really- they पैसे gonna be भाई। able to recover from it? Damar shooting up the car, making sure that nobody's there. अरे रे गलत चल गया। Molotovs coming all over the place here. Falcons trying to make the best out of this situation. बॉक्स देख मस्त मजे ले रही है बैठ के Damar बीच में। goes down. That's हाँ super बेबी। unfortunate. Yusuf and Powerful, last two players. भाई And they're now अगर outside सोलो the फाइट blue. जीत जाती On the other भाई side, we have Vampire waiting. मजा आ जाता Rivals. भाई। Pembroke is going to try to get the best out of this, get the points confirmed for this situation. अबे वो RSG का प्लेयर नहीं दिखाया अभी तक इन्होंने क्या किया। जिंदा है अभी भी। कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई। अभी भी जोन के बाहर है पता है इस जिंदा भी है। Is going to be paying close attention to what happens Falcon. Vivo आ गया जोन में आ गया वो। by back to back, but this is just such an important fight. I think Team Falcons is going to be able to pick up Damar, which that is going to be great, but Baru 7 from 4 rivals just waiting patiently, and as you mentioned earlier, Vampire Esports is going to be waiting. भाई after Falcon के लिए this तो fight. बहुत hard They है। need to make some decisions quickly, and here comes the smoke. Here's going to come the push from Team Falcons. Is he going to be able to get the knock? He is going to be able to get the knock in the finish. Powerful. अभी आगे एक और फाइट होगी Falcon की। GC getting the knock against Frenzy. Look at all of this. There you go. भाई देख वो पेल दिया मैं। For his team, as they were almost eliminated earlier. That's so unfortunate for Morph to lose a player like that in that situation to RonaK. ये डिप में लेट के भी फर्स्ट एड मारेगा। But now they're down to just 3. Let's see if they can do something more about it. GC finds Rocky. It's just destroying the games of multiple players. Falcon, Yusuf finding Stalwart. Virtual Gaming Squad out there also in 13th place. अरे भाई इसको ऊपर से पड़ी बे। Such a hard push here for the Falcons. Just hope that भाई 14 मीटर बे खाली जोन बट कितना डिफिकल्ट देखना यहाँ से वहाँ जाने के लिए भी इनको। There's a lot of teams that are gonna have many angles on you, so hope नहीं बचेंगे भाई। हाँ. Buggy and just try to go for it. You can see Vampire Esports waiting. They know that there's a team that's gonna try to make that push. Luckily for that, अरे वो चर्च वाले from Team Falcons, गांड but I मार feel like देंगे that पूरा। vehicle is gonna get a little bit damaged, and now it's time to start zigzagging it. You are currently shooting at SouL Esports. You need to worry about back-to-back because back-to-back currently has all the 4 players. उतार दिया। Yusuf not able to. भाई ये तो गलत फटेगा बे। Was able to make it. I wonder if he's gonna be able to get in the right location, and the Mart is gonna try to make it over there too. As powerful. इसको यहीं डिप में रुक जाना Trying to heal up, and here you go, kill switch. वो फट ही जाना है भाई क्या ही कुछ नहीं कर सकता। Such a hard rotation for Team Falcons. But I would really love to see them गलत drive सीन at the भाई। same time, so they would have had multiple targets to shoot at. उनका थर्ड बंदा कौन है? हमारे साथ थर्ड बंदा स्लेयर है। स्लेयर को भी पेटीएम कर रहा है क्या? इसको पता है मैं लूट पे शिम कर। इसको पता है भाई उनको भी थोड़ी देर नीचे आएगा मारने। Recoup a little bit of the points later. They have 5 eliminations already. भाई RSG का प्लेयर अब भी जस्ट मरा। RonaK goes out in 11th place here with 4 eliminations. Yeah, and with Team Falcons, that's just going to be a hard spot right there for Powerful.
He's going to be so exposed if for some reason Vampire Esports does decide to look that way, or Star Wars Esports decides to look that way. भाई मैं He's just going to तुम्हारा play फैन patient, हूँ trying to not make any बांग्लादेश के noise. And तुमसे दे बात करना नंबर चाहता हूँ करो ना ऐसे ही करो बोलो क्या हो रहा यार है तेरा भी नंबर बोल भाई पेटीएम क्यों बोलना मेरा फोन नंबर ही है अरे बोलना मत मुंह दे से भाई बोलना मत दे क्यों दूं मेरे को तो भाई अरे फोन आने लगे पेटीएम नंबर बोल क्यों बोलूं तेरे को जॉब पे रखने के लिए चाहिए भाई नहीं चाहिए ओह नहीं चाहिए बोलता जॉब पे मैंने क्या बोला भाई इसलिए यार के पास बहुत पैसा है शेयर को तुम बोलोगे ये लो पैसा शेयर बोलेगा ये नहीं सब मैं स्कैम तुमको वैम सुनते देता हैं हूँ मेरे को कॉल आके मेरे को गाली दे रहा है कोई Multiple teams on the अरे मेरा fight तो on the नंबर south लीक है side इसलिए trying मैंने to get दिया into the ऑलरेडी circle. मैंने यूट्यूब पे वही नंबर डाला मेरा भी हुआ वही है मेरा भी वही नंबर तो फिर बताना See multiple तेरे पे है तो वही डाल देना चूतिया है अरे तू बोलना मुंह से बोल बोल क्या है जल्दी बोल रुक इसको बंद करने दे 8017387488 जाओ भाई जाओ Atan, Morph, जाओ रियो Goblin, रिश भाई जाओ are all going to be fighting for just a little bit of terrain. भाई that गॉब्लिन maybe ऑलमोस्ट can निकाल दिया accommodate था only 1v4 one team. भाई In बहुत this बहुत fight, if they're going to make मुश्किल the था fight उसका right दोनों here, गन Vampire रीलोड Esports पे and भी आ SouL गया ना Esports, बे they need to hurry up अबे because वो now एक बंदा back-to-back एक has एचपी made बच that गया था rotation. यार वो And मर they're जाता just तो उसका solid. क्लच Look था at that हाँ right there. One of the players from back-to-back. मेरे स्क्रीन में kills लैग हो being गया able उस to get टाइम the पे वो knock. मेरा भी लैग हुआ था Stop मेरा it. भी लैग हुआ था अजीब जब सा ही दिखाया था सब कुछ हाँ लैग नहीं वो एक वन साइड जिगल दे रहा था नहीं वो नहीं गिर बट गया था ब्रो ऐसा लगा मेरे स्क्रीन में तो बट बहुत अजीब फ्रेम्स में आया था वो ऐसा हुआ था अबे पिका ओ भाई एकदम पीछे हो गया बे मैं मां कसम Monkey lost 2 players and again अबे ये पाकिस्तान की टीम सरवाइव कर लेती है बे जोन मतलब कैसे ना कैसे करके accommodate 2 players back to back already inside the zone, defending this push from them. Vampire also defending the push from Atan. More shots. Player check कर रहे He goes down as well. And now it's just send a Texa. So on Atan, that is going to try to survive the situation. Yes, sir. Here we go. J-Way still alive. He does have Forest right there. J-Way hops in the vehicle and somehow is able to escape that Forest. मेरे को भी भेज रहा है स्ट्रीम पे यूट्यूब पे नहीं कर रहा विशेष भाई 1000 रुपए भेज रहा है यही है क्या जॉब रखने वाला हाँ भाई चलो मेरे को भी हायर कर दिया चलो भाई हम तीनों हायर हो गए ना हायर हो गए विशेष डन फिर हम तीनों जॉब पे आने के लिए तैयार कल से भाई दिक्कत वो नहीं है बहुत लोग अभी जगह बता देना हम पहुंच जाएंगे कल क्रेजी जॉब ना eliminated. 6 plays, 3 eliminations to them. Vampire looking really strong in this situation. Also back-to-back 4 guys strong on both of those teams. Box have been suffering a little bit from that. Box है ना मेरे को लगा box मर गई थी. They have this to work with. The question is, can they take this further? Something that I love Vampire ने पूरा नीचे का एरिया ले लिया है. Does have a great player in Stone. He has a great angle, and they're gonna have just that ledge full of cover. They're gonna be able to position themselves inside the zone. Vampire Esports is gonna have big upper hand here, especially with that ledge that they have. Nobody's gonna be able to see Shaq it. And you can see Molly. Box Gaming is gonna have to push into back-to-back. नहीं लगा बे उसका Molly I guess बाहर गया. Player there from Morph as well. Oh. Texa from Atan Esports being able to get the knock. Yeah, huge for them to push in. And there's so many teams that are going to be pushing into the south, or from the south side into the circle. And the south can only maintain one team. There's not much space for this. Atan and Box is भाई box के लोड़े लगा दिए इन्होंने. multiple things here. That means that Box is going to go down in 4th place. Morph also went out in 5th. Box not able to make it, but a B2B वाला भी जाने नहीं देगा उसको आगे. One of the veterans when it comes to PUBG Mobile Brazil. He has a lot of experience with this. मर गया zone से ही मर गया वो. Back to back. Kill नहीं दिया देखा. Do this. Atan Esports eliminated. It is going to be a 4v4. Who's going to get the first knock? Back to back. Oh, being able to get the first knock. They're currently trying to get some angles. Polo, you can see Polo in the back just healing up. They are both currently waiting, trying to get angles. J7, this is going to be huge for his team if he is able to get the angle and get the knock on the team, on the player from Vampire Esports that's in front of him. Stone को knock कर दिया तो खत्म फिर होगा सी. This is huge. The question is who gets the next benefit. We have one more circle to be popped, and it's going to decide
basically who gets the advantage here in the last part of the game. We are up to a 4 versus 4. It's rare to ओवेस see तो this जानता situation, शायद but लूफी some वाला players आईडी which है back to back could make something happen here. They लूफी already वाला have कौन सा 9 आईडी रे eliminations as well. कौन Your सा heart is pounding right now, लूफी so वाला we're आईडी hoping for the best क्या outcome है for वो you boys. क्या बताओ ओवेस तो जानता You can't see शायद my smile, लूफी but I वाला have a big आईडी smile, okay? I'm hoping समझा that नहीं we भाई do get at least a ये कोई chicken नहीं dinner here, just for some bragging rights for NA, Oh! even if they मेरा do पैर somehow end up being in last place, which if they get the win, it's not gonna happen. Come on. नियो हिट I believe in 500k them. चेक इट अरे Can अरे क्या they बात है pull this off? And guess what? The circle नियो बोलते हैं goes in favor of B2B पे सर्कल हाँ It's kind of the center. smack It's down kind the of middle, shared. right? It's kind of shared. I would say Vampire might be a little bit closer, but it's very shared. It's very much in the open space here of the middle. There's a dead tree, a crate that could potentially be inside. सर्कल ही नहीं दिख रहा है बे That comes off from VP this को top crazy सा वो side करना ridge. पड़ेगा bro. They're gonna have a really hard time aggressing onto Vampire. Smoke wall The भाई team और that wins ADS this game is the team that is using the बहुत tough best होगा. utility here. Makes the ये लोग best खुद ही amount of smoke smoke. डाल And रहे I हैं really उनके want मुंह to see पे from back to back to offensively smoke off the ridge that Vampire has. Then they can take the advantage. भाई आया away from सर्कल Vampire. आया सर्कल see आया Polo trying to make a move. If Polo is able to Smoke भी नहीं है look क्या at himself, VP there you पे go. डाल? He is able to look at himself. You are gonna have J-Way right now. The way किसका back to number है? back अबे is but set up. अभी and ये obviously VP Vampire वाले Esports एकदम actually has that much utility फंस because गए of all the other fights that were taken Hello. on earlier. This is gonna be a great fight, and it's actually gonna come down to the first. Now you can see Killswitch right there hopping off. If I'm you, Killswitch, I'm gonna just pop off all the tires from that. चल Buzz चल चल and चल just चल use चल it as coverage. You can see they अरे reposition भाई themselves a little bit शैडो closer there. गेमिंग Now they're gonna शाउट be आउट टू inside यू the पर circle. ऐसा मत स्पैम करो भाई Get a तुम chance and assume of that. J-Way is going to have an angle. He is going to be able to see him. J7 missing some shots. He needs to be able to connect with this. And I think he might just get a chance to move up to that tree. He might not be able to, actually. Vampire soon might be forced off this. अबे ridge here. फुकट That's the only शॉट offensive ले they लिया have वो at the पता moment. है Flu take a lot of damage. अबे नॉक कर दिया Takes down Flu, बट but एक को नॉक destroyed कर दिया quickly उसने by Shreps. And there's nobody with utility at this moment. If not, we would have seen some nades falling. J-Way does get spotted. Ravenclaw. चूतिया गाड़ी के बाजू में फूट गया भाई अबे आखिरी बंदा बचा है Vampire Esports currently down Polo. This is one of the MVPs of an A. Can he get this clutch? 1v1 है 1v1. He gets some shots. Can he get the other ones? Come on. खत्म Polo, can you get this shot? Yes! भाई क्या चूतियागिरी किया भाई ये लोग ने ओवेस लोग ने गाड़ी से फुट गए दो बंदे भाई एक फिनिश हो गया दो नॉक हो गए भाई माँ कसम अभी हक दिया था एंड में ऑलमोस्ट भाई Talking about earlier, Martin. We said it. Some of the teams भाई वैम्पायर का चिकन था ओह हक दिए लोग skills are going to try to showcase what they got, what they're here for a reason, and try to steal some points from the top 5 teams. And also, they're going to push themselves so आ जाओ वैलो आ जाओ यहाँ तो मैं आ रहा रुक हूँ मैं जरा नीचे घर मैं भी कुछ खा के आ रहा हूँ रुक मैं भी कुछ खा के आया Super well played by back to back here. Rough what we saw from Vampire though. I feel like गाइस बी राइट बैक फटाफट मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ ठीक है जल्दी जल्दी तक किधर जाना मत लाइव बोल रहा हूँ लाइक और सब्सक्राइब कर देना फटाफट हमारा भाई आया फटाक से You can see Vampire Esports was using a lot of grenades, a lot of smokes too, so ultimately ended up just hurting them in a big way. Yeah, exactly. And we're going to have one more game to cast you and I. It's going to be sound like your favorite map, but we are going to go to a very short break. But stay tuned. Once we get back, the desk will tell you exactly what you've been thinking about all this time. NA. مع التحديث الجديد لستي سي بلاي تجربة جديدة للكل. لو جوك دايم تحديات نافس وانضم للبطولات، استكشف الشات والتايم لاين وتسوق من متجر التطبيق. الليدر بورد على تفاعلك بالتطبيق والجوائز الأسبوعية والشهرية على نظام النقاط تنتظرك. ستي سي بلاي مهما كان جوك هذا محلك.
Yeah, welcome back. Nice indeed. As back-to-back take themselves a chicken dinner. Before we can fully dive into this match, though, Sony Xperia, the 1-4, made in collaboration with professional esports players to help bring you the best smartphone for your gaming experience. Also, the official smartphone partner here at PUBG Mobile. Gentlemen, North America, let's go, boys. I'm the only American here. They're on the map. The question is how far they moved to the standings, but before we can even get to that, let's take a look at our match rankings. That's what Americans Brought to you do, by right? STC. Yeah, Boxing exactly. and other things. Yay, America. I mean, we are the back-to-back baseball champions of the world, football champions of the world. The World Series, exclusively containing American teams. Yes. Only Americans can call it the World Series. Exactly. Anyway. But back-to-back, 28 points, right? We've been talking about them towards the bottom of the table. If I'm not mistaken, they were actually the bottom of the table. Yes, they were. They were. But this is a big win for them, and a much-needed win. Again, there's still a lot of prize money to be won. Realistically, for them to move up the leaderboard and get top 5, probably not realistic, or I can say with confidence it is not realistic. I don't like saying impossible. Almost impossible. right there. I don't expect that to happen. But, as you said, still some extra money to win for these guys. And you're in a position where I think a lot of the teams at the bottom have nothing to lose, right? You just go out there, get those eliminations, get those extra placement points. If you can get a win, perfect. But I think that should be the focus from a lot of the teams at the bottom of the rankings. Well, I think the excellent thing about this tournament structure as well is that actually the bump-ups in prize pool, almost every single place, is quite significant, yes. So there is still a significant amount for these teams to play for. For back-to-back getting 28 points, that's effectively almost a third of some of the team's points that are they're pushing up towards, right? Sure. So that's a big win to be able to get them back on the road again here, and coming in from that west side and actually having full dominant control over it. That bodes well for them in the next coming games. Yeah, I mean, we were talking about J-Way and J7, the positions they were playing towards the final areas there, up against Vampire Esports. Some really good off angles being held, Max. Yeah, it was actually really close between all of these teams, but the one angle that I thought was very interesting was not back-to-back, it was actually Mike, also in an Estonian game, right, that is playing for Vampire Esports, Yes. and the moment that circle started closing up, he could not play on that off angle anymore, and they were just playing from one singular angle, and that allowed the entirety of back-to-back to start pushing and flooding that area. That's it, right? I mean, when you look at the two positions that these teams had, yes, technically Vampire, they have that ridgeline to be able to work with, but when the circle constricts the way it does, all 4 players have to be on the same angle, meaning that back-to-back has far better angles to work with on just one solid location as opposed to having to deal with all 4, 1, 2, 3, 4, of the other angles from back-to-back. And that's the interesting point, right? We talked about it yesterday. If you get still a bit of utility at the end, like one nade there, you're done. That's pretty much like hold on to the nades until the late game. It's important. Yeah, very important. To be fair, I think it was J7 that actually blew up the vehicle and knocked Mike or Stone down. If I'm not mistaken, towards the end, right? He just shot it, he was knocked by the time, so it was somebody else, I think, but was it? It's by the by. Yeah, he was. So J7 was knocked, and he was moving forwards. See, for I thought I information. saw that as well, but maybe it was J-Way then. Someone in the back said it was J7. It wasn't J7. He crawled you know what to call him forwards. out. He's not calling out one of the I casters don't care. who said it. He crawled forwards for information, which is actually extremely important. When you get knocked, if there's no chance of rezzing you, crawl forwards, try and see exactly where they are, so then you can relay your information to your team exactly where to fire. We're taking a look at our highlights by Sony. Another team we have to touch on really quickly. Reagan's Gaming, not faring too well. Team Falcons as well, not faring too well. I mean, we're seeing a lot of these top 5 teams go out early. Damwon Kia able to make the front page, though, of our match standings brought to you by STC, so they're able to help climb up the leaderboards a bit more. Yeah, I really have the impression in this third and final day here for the main tournament, at least of PMWI, teams are willing to go that extra step, right? Go extra aggressive to maybe change their rotation a little bit. Like, they are willing to make that change to, as you said already, Kalash, like, try and get that extra prize pool in the rankings. Like, that should be the focus at the bottom. Not focusing for top 5, that is out of the question. Focus on that prize pool increase. 1, 2, 3 extra places. That's a really huge amount of money that can be coming your way. If you want to touch on the money aspect of it, right? 18 plays gets $15,000. Yeah. 16 plays gets $20,000. That's already $5,000 extra. That's huge. Yeah, that's massive. And then you look up towards the higher ranks, right? I mean, you look at, let's just say 13th place, which is $27,500. If you're getting up to 9th, you're almost doubling up to $40,000. Like, it's a lot of money for these teams. In one day here at this tournament, it's not out of the realms of possibility that you do have a few banger games back to back. And we saw it from RSG yesterday, moving from 9th to 2nd or 3rd or something like that. But the fact that that is doable and capable here on the international stage shows that you can move up
hugely in terms of the money earnings overall here for PMWI. Well, speaking of overalls, we're going to look at overall standings in just a second, but I once again need to give a shout out here to Dr. Suleiman Al-Habib. Again, one of the sponsors to make sure this event is possible, and of course, make sure we can see this awesome competition between our 18 teams here. And of course, our team's coming up next week. But let's take a look at overall standings, get an idea of where the teams currently do stand. Keep in mind, first place, $500,000. We're going to take a look at the second page, just our last page, to make it spicy. We're going to go the opposite way. I was like, Box Gaming, what happened? How did they get first place? But top 5 as well gets into the after party showdown happening next week. But we can see here, back-to-back was last place. I believe they were at the start of the day, 38 points, just about, if I could use my memory correctly. Yes, 38 points. Well, I'm a genius. And we have been able to move up to 16th place. I mean, but they can still climb. I mean, look what. Sorry to cut you off there. 21 points between 16th and 11th. Like, realistically, they could see themselves top 10. One more big win would do it. Like, just pushing them up there with all of this being said. I mean, the fact that they had 10... is so the memory correctly. Between 16th and 11th, like realistically, they could see themselves. One more big win would do it. Like just pushing them up there with all of this being said. I mean, the fact that they had 10 placement points before this game across 12, 13. भाई 4 गेम और 4 गेम अभी सैनॉक है ना माँ कसम. Now seeing them, as I say, back on the road again. I'm hoping to see we get them up there. And we saw with how much of a lead the top teams currently have. Like, there's that sponge in coming into play very heavily. A lot of the top teams are getting very little points every single game. So what banger game you can be up there? And as you said, for back-to-back, they're already Jason. Definitely. They can make it up there. Though I'm looking on this page. If I could say I would like to team way high, it is Donuts. I do think that once again, भाई पिकाचू आ जाते हैं ना चैट में भाई. इतने सारे पिकाचू है माँ कसम. Yeah, gentlemen, I want to bring up at least one talking point here. छोड़ो भाई पिकाचू को इग्नोर करो गाइस. इग्नोर करना चाहिए इनको. And yet they're still down towards the bottom of the table. I mean, look at Donuts, Virtual Gaming Squad, TJB, and back-to-back. That's not a great sign or a great showing of consistency out of these teams. Yeah, just one hit wonder really coming out from these guys. This situation you want, consistency is अपन DM के साथ escalation. Right? If you can keep getting points every single day, even if you don't get. Oh, RSG 4th होगी. Third पे कौन है? Then third places in a row. You're pretty much set in a fantastic position. So one win is not going to cut it for these guys. Okay, we're looking up further into the list. Remember, top 5 at the moment. Third पे ही आई रहेगी, I guess. क्या नाम है वो? क्या नाम था उसका? Another $1 million on the line. You can see Enigma Galaxy. नाम भूल गया वैसे. We got to see in a couple of matches. Say the first one, remember seeing them actually bombing in over towards Denmark as well. They still can be a realistic contender. I mean, Denmark cannot go safe whatsoever. No, definitely, especially with the way that. Vampire Sports. I mean, of course, they're having that center up. 10 point का gap है Falcon और इसका. Match found. Coming in from that southwest side and trying to traverse across the hills of Miramar. Big fan होने को अरे. Beta Gaming, thanks bro. Hello Kostub भाई क्या हाल है? Guys like और subscribe नहीं हो रहा है क्या? Like और subscribe कर दो फटाफट. तब तक उन्हें क्या खेलते हैं? Escalation. मैच स्टार्ट होगा तो बता देना guys, ठीक है? Warm up. मैच स्टार्ट पे बताना. चैट में बता देना. अरे इसको टाइम आउट दो. हाँ कूद के मारेंगे तुमको भाई. Let's go escalation. Let's go guys. Fight. तीन हो गए रे मां.
या मैच स्टार्ट में बता देना ठीक है गाइस चैट में हाँ बोला बोला हाँ मैं तो एस्केलेशन खेल रहा आज स्टार्ट हो गया क्या मैच स्टार्ट हो गया हाँ ओह चलो चलो एग्जिट स्टार्ट आ गया लेट्स गो 10 पॉइंट का डिफरेंस है अभी फैल्कन और इसका स्टॉलबर्ट का is that you are a 1993, 1994 back-to-back champion for breakdancing, right about? Come on, SouL, let's go. Hey. Kalaris is trying to push for. That's a good storyline. But we are going to be ready with SouL. I am super excited for this one here. It's going to be our last cast of the day and the third game overall. After this, we'll have only 3 more games to go, which is going to be covered, of course, by our top 10 fantastic be casters, 90 points John, tak Allen, top 5 to we are going to be going from the east towards the west, and the guys are going to be jumping out of the plane where they're going to be seeing fit. But I'm looking forward to these. ये लोग फिर वही compound जा रहे हैं I guess. हाँ. Yeah, कल वाला. The first game that we got a chance to cast today, we're talking about how these 3 games were going to set the tone, right? And they have definitely set a huge tone. अरे भाई फर्जी आर्ट भाई. Yeah, they might not be able to make it to the top 5, but they are trying to move up because at the end of the day, they're trying to get a little bit more money into their pocket. So I'm pretty sure they're going to be pushing for that even more, which is gonna. I feel like it's gonna make it even tighter on the top 5. Yeah, I 100% agree. RSG गई है ना हाँ RSG और ST again fight. The rivers in play. We don't know if we're gonna go north, west. Why boot camp दिखाओ? Boot camp दिखाओ. SouL for being our official smartphone partner here for the PMWI for 2022, and of course. इसको क्या करे देख के भाई ये कूद रहा है यहाँ. Jumping in, but we are in the Stalwart Reckons fight inside the lobster here. दोनों का एक दिख बाहर उतरा. हाँ. Question is, who's gonna be winning this one? And I mean, yesterday, I don't remember. Oh, बच गया. अंदर वाले रूम में गया वो. SG, if I'm not mistaken, I'm pretty sure you'll be able to correct me. But this is going to be a huge fight. I mean, भाई स्टॉलवर्ट ये अगर फाइट हारी ना बहुत कॉस्ट करेगा इनको. And if I'm Team Falcons, I'm just going to be so happy that this is going on, as well as Vampire Esports. Overall, they're playing it. भाई SouL को थर्ड पार्टी कर देना चाहिए पता है यहाँ पर फाइट होगी ना. Towards the top of the mountain, yeah, I don't see Team SouL. Remember, Team SouL tried to surprise. या तो फिर हाँ हिल पे. If I'm not mistaken, that actually got the win on that Senhawk yesterday. If not, it was RSG. Yes, bro, Lucifer Gaming देखा मैंने. That actually got the win here on the boot camp drop. But right now, I think they're अरे भाई RonaK mod भाई. Flankers का fight पहले होगा मेरे को लग रहा है. हाँ. Than they did yesterday. दोनों बैठे एकदम शांति से. अभी ये फाइट डिलीट होगी भाई. अभी टाइम लगेगा बहुत टाइम लेंगे. एक नॉक कैसे ना कैसे क्रिएट हो देखना. This situation here, and that is not a good situation for them, of course. The question is, who comes out on top? Was actually RSG. RSG ended up winning this fight, and they ended up getting a 5th place and 11 Ilum. So a lot can happen. We'll see some fights going on. अभी TJB का फाइट दिखाएंगे तो. अबे क्लोजिंग दिखा दिया ना वो लोग फ्लैंकर्स का फाइट दिखा रहा है. हाँ हाँ. Player from Star Wars Esports, and you best believe as soon as this player start getting knocked, some of the DBS might try to pounce. ओ उसको भी हेल्प करने आ गया एक बंदा. And that's exactly what Team SouL is doing. You can't really see him on your screen right now, but instead of भाई पीछे से ना आ गया crazy bro. वो लोग देख पूरा वहाँ से रोटेट करके आ रहे हैं बे. अब इसको मार रहे हैं बस. गटर में आ गए. Make happen here. Vaz finds TJB as you see in elimination feed. Action. Oh, healing नहीं है इस पे. Stalwarts try to stay inside this bigger building. अबे बट इस पे अच्छा हाँ वो लोग ऊपर नहीं चढ़ सकते इस पे. नेट से फोड़ सकते हैं बस. Again, really closely knitted together as a team. Pika on the very top of this 3-story. And yeah. I was going to say, with Pika being there, he's going to at least be able to relay a lot of information in regards to where he's hearing footsteps, so that's going to be able to help them out. But
I'm currently looking at Team SouL. I was talking about the What rotation. scam We're है holding some of the bridges on the west side now that we have all the rivers off. SouL can play. P on the top, half HP. He does have a DPS though. Carleris' favorite gun. It's the only thing he can Guys, hit anything refresh कर लो, refresh कर लो, refresh. Hey, I have potato aim too, so I also try to use the shotguns, and I'm gonna be honest, I even can't hit anything with the DBS, so it's kind of sad. Why wait गए वे लोग? See, can he make a dream happen here, or what is going on? Back to refresh back, कर लो, they are holding. I think this is perfect for Team SouL. Just wait it out, see what's going to happen, and see if you're going to be able to third party. And I can see that they have some players that are anchored, looking at what back-to-back is going to be doing. We have seen circles that goes to that trifecta area where the three rivers kind of meet. Guys, So refresh, please. Who is going to make action happen here between StarWars Esports Wi-Fi and issue चालू है. RSG. Yeah, and the अबे ये लोग माँ कसम RSG going to be able Duhang to Gaming win it again. Regans with board से नहीं आ रहे ना पकड़े जाएंगे last time. अबे OSP कहाँ चला गया? Going out early, and that would be rough for SouL, but you know they are on top right now. They are maintaining a good spot. कहाँ If they भाग can जाते further पे that लोग? lead right now, down to Falcons, down to Vampire, and Regans themselves too. They could defend this top spot. We have some swimmers out early on in this situation. It is Damonkia that are swimming across. They're trying to get in onto the small northwestern island, the Alpha Island. And I think Pika's kind of lucky right now because with the angle that भाई Team SouL कॉप is से doing, he's not बैठा gonna है. get pushed. I mean, there is some of his teammates there, and as I said, Oh भाई Action being able to action get ने the first दिया round, है. and he's gonna get the finish. This is gonna be the opening that StarWars Esports needs. You can see Action moving into action, trying to push forward, and Team SouL is just waiting up there. You can see he's going to move up closer. Pika being at the top, if he is going to try to make a move, he needs to be careful with Team SouL. They're currently just eyeing him. They know that he's there. He needs to watch out for a third party. Here we go, Action. Look at the nade. He's going to do. He decides to back off a little bit, waiting for his teammates to get there. He's going to try to go for it again. If they got some more nades, this might be one of the perfect nades. Oh, cooked. A bit too much. All right, Pika still half HP. Needs no. Oh, that's some good shots now. Action. Oh my action with that action, down. One of the top bro. players from Regans. Damn. We're just down to 2 players. What can Double D do in this situation? Pika does make the push down. We do see some DBS. Who's going to be able to get this knock? GC is still खत्म alive. RSG फेल दिया भाई without any casualty. I believe in RSG is अबे हेक्टर ने किल भी ले लिया. eliminated. Nice. And actually being able to get some knocks and some elims there, at least at one point. बढ़िया. Yeah, it's really important for SouL to keep on and maintain. They get the points, 3 points for this. Also managed to stay alive. This circle could go their way. We could still see a boot camp ending in this situation here, so that is super important for them. अरे ये क्या fielding लगा रहे क्या Falcon की? Losing some of those placements on the leaderboard. They could be going down if we have the teams that are chasing have a good game in this one. Falcons on screen. They have lost a player. You see 4 rivals in the distance. पता है शायद. And Jumper as well. bro. Yeah, and with Team Falcon to वाले see what they're going to be doing here. They might be going for a heal off, which is usual. It's usual to see here in Sandhawk, but एक मरा भी है ना? if I'm being honest. अरे हाँ अच्छा The way the circle is playing. Yeah, exactly. And the circle is closing in. The quick भाई ST को अच्छा boost मिल गया मैच में. There's a big slightly bigger chance that we're going to go up on the Charlie Island on the southwestern one. बदला ले लिया स्लेयर कल का RSG से. चारों को देखो 3 पे DBS थी और 1 पे M7 और circle that all the islands are still going to be in play. I was going to भाई क्या लैग हो रहा है. I love seeing that replay because we got a chance to see how Pika was able to just ऊपर push down. बैठा था, He उसके was बाद the ही right moment. बंद He है did so in the team with action being able to get that first knock, being able to get that first one. ये वो कंपाउंड वाला जोन है कैंप अल्फा का. Maybe. Big. Just let's see the chemistry. It goes to show the chemistry that that team has. भाई SouL अभी पता है कहीं भी मूव नहीं कर सकती. But now, which circle अरे are gonna माँ get that कसम. It is gonna be unknown. I feel like my toxic trade is gonna come out. I want to see some water. We're loving the water that is in this one for sure. Vampire already SouL के लिए बहुत difficult है यहाँ से पता है match. Still a bigger chance for it to go south, but we could see a center circle again for this one. Vampire looks really strong for this one. They are currently trying to get back to the level that we've seen from them. You know, they do right now have the record of most points. भाई बुलाते 39 points, 24 eliminations in the very first game of the tournament. And the question is, can they maybe make another good one? I don't feel like we're going to see it on SouL. SouL is often a situation where we see so many teams fighting out in the blue. It's a very linear when we're looking at how many teams are getting elimination points. It's often very spread out across.
Yeah, and I'm with you on that. And I also feel like it's just so hectic. It doesn't really give you the time to engage with the team because you're going to have to worry about that third party. The map is definitely a lot smaller, which is going to allow those third parties to be a lot faster. And if you're not able to finish a team, I would say within at least a minute and a half to 2 minutes, you know somebody's listening out there and somebody's creating some kind of angles. Like, I mean, we just saw it perfectly. We saw what happened with Team SouL during the five of ROC and SouL Esports. They यार बहुत were able to get सर्कल at least एकदम one ilm गंदा out of बन that गया fight. बे Yeah, इनके on लिए screen we have a ton and box could potentially Kill be निकाल सकता fighting. है, But the question नीचे for वाले me घर पे भी is पुश some करना of the पड़ेगा teams that तो ये have been सब looting, फाइट से अगर जीत गए Sami तो and काफी some of kills these मिलेंगे. far अभी बट वो घर पे पुश करना have बहुत they been गंदा able to सीन get, है you know, पता है 25 first dates and are गंदा in तो the है बट circle कर तो right सकते now, हैं. they could be ऑप्शन getting नहीं होता a नहीं. pretty damn good spot to set up a healing strategy. A ton मतलब अच्छे से looking अगर like they करे पुश want to कोऑर्डिनेट करके defend तो this निकाल high सकते ground हैं. मुश्किल तो बहुत ही है and होता है potentially वो. try to get some of the घर छोड़ के elimination उस points तरफ that are चले जाएंगे sitting पानी down in के. the compound that the Bucks are ये लोग currently. पानी के उस तरफ कैंप करेंगे. ये लोग अगर back 3 is वेयर हाउस still से यहाँ से जाते ना वो gatekeeping बूट कैंप one of the फील्ड से 3 bridges. वेयर We हाउस have फिर Mob वो on रिच से screen क्रॉस कर also सकते थे. just in the चल south. He ठीक looked है अभी east, यहाँ से देखते east and कैसे ahead. करते मतलब हैं. वही है वो तो पहले अगर इन The लोग guys from हिल पे नहीं Indonesia, they're आते obviously तब. trying to हाँ. push themselves further up the leaderboard. Right now in 7th place, 103 points within striking distance of the top 5. And obviously, they want to try to get it and push themselves further into this situation. Yeah, I think they might be able to. And another team that's currently being a little bit quiet is going to be Enigma Galaxy. By the way, while we're at it, complete daily missions to earn points. And once enough points are accumulated, tap on rewards icons to claim the corresponding reward. कल है भाई Because this is कौस्तुभ a bit of an बनर्जी event कल मतलब solo कल नहीं or with ये your आफ्टर team. पार्टी में खेलेगी वो. You could do both things कभी and ये you could easily get the rewards भागते हुए if देख you're लिया. playing with your team. हाँ. Yeah, talking about देख teams, I लिया mean, भागते between हुए. August 4th and August 13th, all users in the region of the top 3 teams will have a chance वो to देखना override वही लेट maximum गया मैं. amount of rewards per user. And during that same span, between August 4th and August 13th, I'll tell you in a bit, because guess what? Damn one Kia wants to get into an action. And talking about action, भाई I ये did बहुत see पावर खेलता Fox है वो तो Gaming भाई बहुत knocking पावर on the लगा ये PlayStation 2 प्लेयर side. भी. Yeah, Forest. exactly. They are utilizing the box formation and बस really VGS trying to वाले get का into a हो good गया scam. situation for this one. But Damon Key on the high ground, they have the circle that are pushing away. Multiple of them is outside the circle currently, and that's a rough situation. We really want to see them come in. Circle is closing very shortly. We are going to see a new नीचे कौन सी circle टीम थी pop मॉर्फ just ना very soon. मॉर्फ And as you see हाँ on the map, they're on मॉर्फ the top ये right now outside the zone. They could move in through and towards Camp Alpha and get closer to Vivo Keat Stars. But they are पूरा setting up ruin a side really good जाएगा. bridge camp. I'm kind of hoping for this to go जहाँ तक north. मुझे That would be a लगता है. fantastic, really toxic one. That's the one you love. Yeah, I can just see it. Yes. Oh my as God. he goes Bridge down. का Oh my सब. God, send us up on Vivo Keat Stars. Cielo, Diego, and the boys, they are Oh. going to be really happy about this one. But I want to point this out here. Action is currently 1,000 damage ahead of third place. Lightning just close by for this one too. And while we're looking at that, I mean, if we look ये at लोग this bridge map, control look ले at लेंगे बढ़िया. Team Falcons. They're so far away from this, and it's gonna be very, very hard for them to actually. Falcon तो भाई देख कहाँ है बे? Slayer. Super impressive eliminations as well in their 30s. Action and Lightning is currently, and as you see on the minimap, so कितना प्लेस में आ सकते भाई पता नहीं अभी ये वाला मैच तो बहुत with a डिफिकल्ट हो गया huge अभी. macro transition from the northeast and trying to get onto the northern side of the island. Also, boats are going to be using Vampire. They're trying to pick तो up boat Bird by ले the रहे fluke. Picked up quite fastly. Shrebs is going to go across quickly, trying चाहिए to get some of compound this ले ले really, रहे really लोग. important real estate. Now, Enigma Galaxy sees them. They could potentially get some points out of this one. Shrebs does run out. It's really far distance shots here. Again, we could be talking देख लिया actually उसको above those 400 meters close to it that we currently have for the Eagle Eye reward. 5,000 ये लोग का comeback match है Vampire Sports का ये. Super impressive to be able to knock अच्छा, players zombie ले लिया 400 meters हाँ. away is absolutely insane. Yeah, and I think Enigma Galaxy decided, you know what, let's But not उन लोगों even को take a land में shot. He चढ़ने might have में been able to दिक्कत take a होगी. shot, but पत्थर it के was पीछे से चढ़ेंगे. just nothing was going to come out of it. And they हाँ, are ये going लोग to I take a guess. shot on that player that is Ooh, swimming. घर तक As जाने के लिए Raouf crazy है. almost बहुत getting बहुत knocked himself मुश्किल from है. Vampire Esports. They're far away, but I think they might actually want that extra 5K. Yeah, I really like what I'm seeing here from Schweppes in that situation, right? You are the one taking that first transition over the end on the boats to make sure that the other guys can RonaK across mod safety, भाई, so does no protect them. bro, I don't Shooting think a little so. bit here towards Neymar Galaxy. It's the Wildcats on screen. It's Lux taking some shots towards Stal, but action is hard. मार क्यों नहीं रहा? क्या पता क्या कर रहा है? XM4. He has 4 grenades. That's a lot of Oh my utility. God. We see a level 3 helmet on one of the players. इतना भी trigger discipline नहीं दिखाना था. 55% damage reduction rather than the 40 that the अरे level उसका 2 पीछे teammate खा लिया देख. offers, and a little bit more durability. Top finds
one of the Istanbul Wildcat players, and that's super unfortunate. We hear our colleagues from next door, the Turkish guys, go, ooh. Top खा सकते हैं. 3 vests onto Pika, 55% damage reduction rather than the 40 that the level 2 vest offers, and a little bit more durability. Top finds one of the Istanbul Wildcat players, and that's super unfortunate. We hear our colleagues from next door, the Turkish guys, go, ooh, that is not good. That could potentially mean that our top leader right now could be pushing them. Yeah, it could be, and you can see Wildcats, though, keeping a very close eye here on what Star Wars Esports is going to be doing. Virtual Gaming Squad having one player knocked. They are currently outside in the gas. And they are going to get knocked by blowing up the car. Gaddafi being able to get the knock. He's going to be able to secure that Ilum, I'm sure. But I think they are going to let the player that is down from BGS just... if I'm them, I'm going to say sorry. It's not gonna happen. I'm not going to be able to pick you up. Exactly. Next circle's popping. As you see on the map here, a lot of circles has gone west. So the वो team आगे चली गई. अच्छा नहीं वो राइट से अबे राइट क्यों गए B2B मेरे को समझा नहीं भाई. ट्रूथ ही है. Worship Gaming Squad on the other side. Also, TJB trying to move in. My God, that is the wildest northwestern shift I've seen in ages. We end up going to the North Island, the Camp Alpha Island here. Damwon Kia looking really good. Vampire looking really good. And Vivo Key Stars are looking really good here in this next circle. SouL को kill ही उठाने पड़ेंगे भाई. Happy with this, especially considering that Name Galaxy is going to be across the river. Zone तो impossible है बचना अभी. And also eliminate that team. Keep in mind, these are teams that are currently fighting within those top 5s. Vampire Esports is currently in 3rd place, and Name Galaxy is just knocking on the door of the top 5 there in 6th place. Falcon वाला एक मर गया. Trying to find a way वालों के लिए ये वाले B2B वाले भी free this. kills होंगे अगर Star Wars Esports players, they need to hurry because I do see some Team SouL players coming up behind them. And remember, we saw इनका B2B से होगा ना ST का fight. हो गया Make the push. Is back-to-back going to be able to capitalize on any of this? I do like that Molotov there from Action. भाई क्या मॉली डाली देखा? Left right. No, but they are closing off the potential peaks that he could be peeking around, right? So you're denying accessibility to go out and push that. Now smokes are being deployed to Stalwart, while we see in the elimination feed that Morph is taking a lot of hits in this situation. And something that I saw right there, as Action decided to move up, he did let go of his healing. He gave it to his What the fuck? So I think they might actually end up going with a heal up top. Gets knocked as well. भाई गलत सीन हो गया ST के हाथ में. 13 first aid है इसमें. 13. Best player. Yeah, I mean, that was a great play from them. But I think he wants these Ilums, and that's exactly what he's going to go for right now. There you go. If you can get the extra, just go for it. And I think at that point, he's going to decide to slow it down. And I was talking about... Oh, Goblin, nice! क्या मारा? Team SouL is going to do just that, and they're going to eliminate back-to-back from North America. And that's a really interesting one, right? Because he could potentially go up and take some more of those first aids that back-to-back had. So he could get even more of those 13 first aids that he has already. Potentially go all the way up to 20. Question is, how deep can he take this one? ST वाला तो first aid उठाएगा अभी sack वाले crates वहाँ से तो. There too. Now Morph here with a potential fight against 4 rivals. Frenzy takes some shots, really good shots to get. That is a nice finish off to another point secured for Morph. Currently on 7th place. ये heal battle कर रहा है one of these बंदा. chasing. They really need these points. Morph. I mean, wow, 16 first that aid. was some shots right there, and I think SouL का भाई गलत सीन हो गया ना अभी bridge पे. Trying to go for it. The player from 4 rivals does have 16. Hector Omega finish हो गए. You see Hector there from Team SouL getting knocked by Atani Esports, and you saw Atani Esports also getting knocked by Enigma Galaxy. वो देख zone कहाँ ही चला गया भाई North. Team SouL X-Shot, can he actually get knocked here? Oh, I think he's the one that's currently doing the heal off for Team SouL, and he needs to be careful because Choco knows exactly where he's at. Choco's not going to be able to heal himself up. But I think X-Shot is able to get the knock there on Team. Oh, he got the knock on Choco, and that's going to be another point if he's able to confirm that for Team SouL. Goblin last बचा है. Yes, fighting Istanbul Wildcats currently. कितना किल होगा? 5-6 किल हुआ शायद. 5 हुआ. Later they are across side of the roads, but they're going to be advancing in this situation. Virtual Gaming Squad. Oh, that's a little bit of damage coming through. Goblin last से रहा है. 6 किल हुआ. Damage on the level 3 in that situation. The UMP in hand. भाई Goblin का first aid दिखा दो बे. हाँ बोलना. But a lot of I see so many solos out. पता नहीं ओवेस था वो गया. उसको सर्दी हो गई बोलता आता हूँ थोड़ी देर. Snacks पता नहीं. Third game of the day here at PMWI in Riyadh. 16 stack damage, 6 finish in the match. Next आ गया. ओ भाई Goblin. यार. Snacks आए नहीं पता नहीं कहाँ है वो. Box Gaming.
Box Gaming trying to work their way up. They are currently in 11th place, trying to make it to the कोई top ना 6. गाइस And they are going to be going up NT against Vivo. जोन These जा are ही two नहीं teams सकते that थे बे actually need कुछ this नहीं हो points. सकता Vivo था is above Box Gaming in regards to the leaderboard. Can they actually do something here? Here comes the ओ shot. भाई नाइस Box नॉक Gaming, trust me, being able to knock down Gremlin Adrian, the MVP अबे of उसे that कितना squad. फटाक Can से he do क्रॉस anything? क्रॉस He's कर gonna लिया get बे spotted. वो Oh, just barely in time, and this saves him because a lot of the other teams are looking at this fight. Can this grenade connect आए with किधर anybody? फेंका And he's बे not going to be able to connect with anybody there. Overall, though, Cielo still alive from Vivo Kid Oh, as good well. shots. Adrian, can you get out of this alive? And he is going to be able to. McGrellan gone down too, and this is just Vivo Keed down to Cielo and Adrian. Adrian had a gross in hand, and now Box has to heal this off. The next circle did go north, so VGS looking good. They're taking a अबे fight right now with भाई Forrest got ग्रेड down से really क्या low. हेल्थ He's हुआ उसका 2 or 3 HP left after that grenade. Where का है Forrest चुप has to बैठा try है to बे heal this off. Virtual Games are still फोटा alive, but Daffy finds मुंह Cherish खोल के with बात that nade. करना That's super important. Pika going एसटी down का ही to मर first गया zone. That's impressive with the amount of first aid that he had. Oh, very nice. Yeah, and with that, even though Star Wars Esports was eliminated, they did end up with at least 6 points Down for one their gaming elimination. So versus that's going to be big for them because remember, Team अबे Falcon पीछे है क्या is तू definitely chasing them for second place. They end up getting 0 points. Here we go, Vampire Esports. Talking about the top 3. 2x कर Team दे that's 2x also trying to chase. If they पीछे can है win तुझे this game, it's going to be a massive change on the leaderboard. And I'm pretty sure they're going to be looking forward. Stone almost getting knocked by Vivo Cielo. अरे रे रे And रे he's रे 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 able to बाबा just barely get away. He needs to heal up, and he needs to be careful जो because बॉक्स Box के भी Gaming प्लेयर is बचे still behind them. Then one Kia, Omba, currently with the heal off too. So many teams currently trying out this heal off. And Virtual Gaming Squad, even though they have been a little bit quiet, guess what? They still have नहीं ये all कंपाउंड their वाले 4 players up. Stone trying to secure more दो points for बंदे Vampire. That is 4 for them so far. Chilla gone down. नॉक किया कि Crispy नहीं Fox किया advancing in that 7th place. अच्छा for मार Vivo दिया Keed. Stars and one elimination point only gone for them. Ooh, Wildcats अच्छा finds नहीं one. है Box goes down in 6th place with 5 eliminations, so now गया let's गया see नॉक what नॉक Wildcats can नॉक get out of this. Shots are coming in from Stone. गए Locks did नेट not डालने से realize गलत that it हो was गया that बे angle he was getting shot from. Yeah, no, Vampire Vampire Esports CD Esports, this as I mentioned match earlier, if they let's can see secure Kia. some extra points here too, that's going to be big. And then one Kia as well. Only 1 point for one elimination for Damo. भाई स्लेयर देख रहे हैं VGS कहाँ से कहाँ गई ऊपर से वहां से रोटेट करके जोन के बाहर से कहाँ आ गई भाई They have भाई 4 guys 3 on strong. 4 They have 8 इन्होंने भी eliminations survive कर currently. गई 4v3 up against हाँ Vampire इन पे that तो has अच्छा ही 6 था ना eliminations इन and पे तो only जोन 3 था players बटे strong. फिर Again, ऊपर आ like we're गए talking about so many ये times, टीम कहाँ से they आई have भाई this VGS 4-player वहाँ advantage. कसम The जोन question के is, बाहर से can पूरा Vampire Esports turn this one around here? Can the guys from इसको Thailand स्पॉट हो गया make the हो dream गया happen? And as you say that, Oh, Raven was able nice. to get the knock right there on Yafaz from Virtual Gaming Squad, and now it's even now. Here comes the Molotov. They're going to be trying to control बच गया for Virtual अबे Gaming दो Squad. knock Players हो are गए going to go, and guess what? Another knock. Faluji being able to get the knock. He lays down. He does get knocked by Stone. Can Vampire Esports भाई clutch this Vampire out? का They only do CD have the numbers. You अबे see Gaddafi right there, the only man standing for Virtual Gaming Squad, trying to clutch it up for them. Stone with the grenade cooking. फूटा फूट गया ओ भाई नाइस नेट ब्रो क्या बात है डेली शॉट्स भाई नाइस नाइस Vampire Esports, our last game that we're gonna be able to catch, and what a way! I cannot wait to see what damn bro the nice score's gonna look like, नेट because with that win, they just might have pushed a little bit closer. आजा एस्केलेशन खेलते आजा 25 पॉइंट मिले ओ भाई क्रेजी इसको एसटी को 6-7 पॉइंट मिले ना 57 162 पे है वेम्पायर स्पोर्ट्स और एसटी को 7 मिले 7 160 एसटी 160 अभी भी 4 पॉइंट का लीड है हाँ और फैल्कन को कितना मिले फैल्कन का देगा नहीं फैल्कन को ज्यादा नहीं मिले ठीक है तो थर्ड फैल्कन की आरएसजी भी थी ना आ रहा है क्या वैलो एस्केलेशन जल्दी बता वरना स्टार्ट करूं मैं अरे माँ कसम आधे घंटे का पेनल्टी लग गया बे मेरे को क्यों वो मैंने एस्केलेशन लीव किया तो हाँ खेलना एस्केलेशन क्या हुआ खेलना जाना भाई मैं खेल ही नहीं सकता कुछ भी लॉल शी यार दुख दर्द पीड़ा रोना आ रहा है मुझको यार मेरे को रुको एक सेकंड मेरे को कुछ चेक करना है एक सेकंड में जो
चलो आजो आजू गाइस आजू। क्या क्या हो गया तेरा वैलो? कहाँ बे, आधा घंटा अभी हट। तो और कोई गेम है? CS:GO? CS:GO अनइंस्टॉल कर दिया मैंने। क्यों? अरे स्पेस का मैंने बहुत सारी गेम्स अनइंस्टॉल कर दी। क्रैप गेम खेलूंगा, क्रैप गेम है क्या मेरे इसमें? 8 GB का है क्या तेरा? क्या? नहीं नहीं, अरे मैं अभी अपग्रेड करा रहा हूँ ना वैसे भी पीसी, तो जो भी था मैंने उसे डिलीट ही कर दिया। हाँ मैं क्रैप गेम खेल रहा हूँ, क्रैप गेम। अमंग अस खेलो, अमंग अस खेले यार, बंदे तो होने चाहिए। 52 या सोल रोनक भाई बताओ भाई। सोल ऑफकोर्स, और क्या? हाँ भाई क्या चल रहा है? हाँ जी क्या चल रहा है? कहाँ था? भाई क्या चल रहा है? मैं यार थोड़ा काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? झाड़ू मार रहा था? हाँ यार अच्छा काम वाम करते बस। रेस ने बताया। अबे इसलिए सुन, तू तो मुंह मत खोल, बुद्धि पकड़ लूंगा आके भाई। अरे क्या मार रहा है भाई? तुम्हारा बेटा बिगड़ गया कि 18 वो तो बिगड़ा भाई है भाई। ये अंग्रेजी दल्ला कुछ तो बोल रहा है, बस आवाज नहीं आ रही भाई। वाह मियां क्या हाल है भाई? क्या हाल है? या क्रैप ब्रो गेम ओपी, क्रैप गेम या भाई ब्रो मस्त खेलते थे पहले हम लोग रात में। चल ठीक है डन। कितने बजे? क्या क्रैप गेम खेला तूने? चल ट्राई करता कोई हूँ। और गेम नहीं है तुम पे? मैं तो क्रैप गेम खेल रहा। मस्त है भाई क्रैप गेम खेलना, को भी डाउनलोड का स्ट्रीम। क्या खेल रहे हो? डाउनलोड करना पड़ता है क्या? हाँ तो कौन सा गेम ऐसा है जो डाउनलोड नहीं करना पड़ता है रे? मेरे सफारी पे भी गेम क्या क्रोम में गेम खेल रहे हो भाई? ओ गाली दे भाई, गाली दे रहा है। गाली दे रहा है यार। बढ़िया सर सार्थक भाई क्या हाल है? नहीं ओवर स्मार्ट शेर भाई ने किया था BGMI प्लान पे। हाँ क्या मिलते कि नहीं मिलते हैं? ट्रिपल डॉट आयो डाउनलोड करके खेलता है तो क्या? तू स्मैश कार्स खेलो सारे। किसमें खेलते हैं ये? किस पर क्या कर रहे हैं रौनक? क्या हो गया? रुक जा रुक जा रुक जा। रौनक ये सब काम मत क्या कर भाई। ऑफ स्ट्रीम क्या कर? अरे ऑफ स्ट्रीम क्या कर भाई इस काम? बच गया मैं तो। ओवरऑल रैंकिंग क्या है? भाई बच गया मैं। चलेगा 17 पे है। 17 पे अभी देखते हैं कुछ हो तो। लेट्स मैप इन 3 मिनट्स। दैट्स नाइस। मैं एक चीज अच्छी लगी मेरे को क्योंकि मैच बैक टू बैक स्टार्ट करते जल्दी जल्दी। हाँ चालू हो गया मैच? स्टार्ट हो गया। 3 मिनट स्टार्ट हो जाएगा ब्रो। फुल टाइम ब्लॉगर बन जाओ तुम। जो कि बात तो सही है यार। लेट हुआ था ब्रो। मेरे को लग रहा है बनना चाहिए ब्लॉगर मेरे को। GTA 5 रेसेस खेलो। GTA 5 रेसेस यार। GTA 5 तो खेलेंगे। स्मैश कार्स ए बच गया बच गया। स्मैश कार्स खेलने का भाई। ओ बॉम्ब टैग वो ट्रेन पे। मैं ट्राई करता हूँ स्मैश कार्स पे। अब तुम भी ट्राई करो ना, आ जाओ। क्या? smashcars.io पे आ जाओ। रुक मैं तो क्रैप गेम खेल रहा हूँ। smashcars.io। cars CARS। हेलो गूगल पे लिखा हुआ आया। पता नहीं कार्ड्स इसमें मेरे में कार्ड्स आ रहा है। इधर एक मिनट पागल है। अबे हार्दिक पागल है क्या? No man, don't do it man. देख तो ले कौन सा गेम है। Of course हार्दिक बोल रहे हैं फ्लिप आग दिए भाई ये। लोड़े का मेरे लोड़े लगा है लोड़े लगा है। हट मर गया यार। मेरे को क्यों बॉम्ब हो गया? हाँ मेरा भी हो गया। हार्दिक क्या भाई? हार्दिक है किस पे स्मैश कार्ड्स और कार्ड्स की स्पेलिंग CARTS नहीं होती है, TARTS होती है। ARTS स्मैश क्रिएट कर दे। रुक मैं कर क्रिएट कर। प्लेयर का नाम क्या स्पेल करते हैं? प्लेयर टाइमर ये सब कुछ भी रैंडम ही रख देते हैं। स्मैश कार्ड्स। हाँ स्मैश कार्ड्स। शेयर रूम
IN 149896। चुप कर एक सेकंड, प्लेयर बना रहा हूँ मैं अपना। अबे जल्दी कर चूतिया, स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे। और रुक नाम जा बदलने मैं दो भी आ गया। बे। अबे रुक एक सेकंड रुक। IN 1498 मैं स्टार्ट कर दिया, लोग ज्वाइन कर लिया। भाई रुकना, मैं ज्वाइन कर रहा। अरे ये क्यों? IN 1498 कैपिटल में सब कुछ होगा। IN 149896। रूम नेम क्या है? IN 149896। सब स्मॉल में IN 149896। सब में IN ही है ना बस। आ रहा है तेरा भाई, आ गया। 149896। फ्री फॉर ऑल 3 मिनट्स ओनली। क्या करने का इसमें? WSD फायर स्पेस से मूव बैक हो, कम बैक टू हुआ। देखो ऐसी बात नहीं। पंजाब है, पंजाब से पंजाब। ये कौन है मेरे आगे? और एक्सीडेंट हो गया। ओए मैं किसको फोड़ा? कौन मरा? ये कौन मरा? मेरा नाम देख रहे हो? नाम भाई, नाम देख रहे हो? ये पे तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा स्लेयर, तो ये रहा स्लेयर। ओह अच्छा ये सांगवान है। ये कौन है? तुम्हारे प्लेयर कौन से ये? ओ फोड़ दिया। अरे फोड़ दिया मेरे को। I am so born here, bro. Oh! God, मेरा भाई 5 से 5 चलते हुए ब्लॉक कर दो भाई। अब बुलवेल ब्लॉक कर रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। अरे फोड़ डाला रे बाबा। मैच स्टार्ट हो गया? अबे मैच स्टार्ट हो गया। रुक बस ये लास्ट। सेकंड लेफ्ट। अरे यार मैं पड़ गया। अरे फोड़ दिया रे। हट बाद में खेलेंगे भाई। मैच स्टार्ट हो गया। चलो मैच स्टार्ट हो गया भाई, चलो छोड़ो इसको भाई। देख तो हर गेम में गॉड हूं मैं, ये तो ऐसे छोड़ते रहते हैं मेरे सामने। Small tournament PMWI. I say small. So let's go guys, let's go. Match started. The pride on the line here in terms of the glory, the prize pool itself. So all of these teams really are trying to bring absolutely everything they can from the back of their arsenal. Let's go. Or a fight zone the barrel there, trying to get anything they can. Pop it in the pocket. Oh, look at this. Plain path. Georgia pulled down to Milter. A lot of places open, but the circle. A hard northern shift. Yeah, up towards this northeast side. SouL might struggle with this one just slightly because they're dropping over towards Neuer. We've already explained this before, but with an 18-team lobby, it's very difficult to have those secondary spots, so SouL was almost forced to head down towards Neuer right now. And with this eastern side on the circle as well, and them always crossing on the east side, they're going to come into contact with a fair few teams. You can also come into contact with a fair few of these teams as well, as long as you are कैसा है मेरी जान? क्या हाल है? फाइनल अरे विक्की भाई, अपन एकदम मजा में भाई। तुम बताओ तुम कैसे हो? फुल मजा में पजामा। तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? अरे इंग्लिश पे देख, उर्दू पे पीछे पे थोड़ा। योरश थैंक यू भाई, थैंक्स फॉर द 100 मेरे भाई। योरश भाई आज तो फुल एकदम पैसे की बारिश हो गई है। कल आ रहे ठीक है, मैं ओवेस और स्लेयर काम पे। पैसे पे गुम्मती है। तो पता है सांगवान, मेरा स्लेयर और ओवेस का जॉब लग गया एक ही साथ, एक ही जगह। वो अभी जगह पता चलेगा कहाँ जाना है। स्लेयर शांत क्यों हो जाता है बे?
to draw देख रहा हूँ भाई अभी क्या हो रहा है मैच में अभी जरा बताना तो बस देख रहा हूँ वाह अभी तो लूट इंग्लिश रहे में हैं फील नहीं आ रहा इंग्लिश में फुल फील आ रहा है भाई आजा हाँ आ जाऊंगा तुम बताओ बस कहाँ पर आने का जगह बता देना आ जाएंगे माइक ऑफ करके आप कमेंट्री करो थोड़ा साथ में चलने तो हम भी ऐसा कंटिन्यू बोलते रहेंगे तो आप बोर हो जाओगे But we saw them have fantastic ये लोग क्या चिल्ला रहे हैं बे? yesterday, and now with a few games to go, and again, Falcon को all the root कर crowd रहे होंगे cheering, that mentality is going to be there for them. I don't know how you get down during this tournament. Feels like 2019 solo what? Falcons can certainly bring it back. They grab some vehicles from down south, going to bring those back up to Yes Naya, so they have a fair bit of rotational tools in their pocket. James Khan, bro, I don't know. No idea. Please do not spam, bro. Spam mat karo. Spam mat karo. Does the interstellar music? Hi, Smarty 23 Gaming, bro. सोन तुम भी कुछ चिल्लो इन्होंने अभी BGMI छोड़ के जॉब ढूंढ ली हाँ ब्रो सोच रहा हूँ मैं भी चलो यार स्पैम में हेट नहीं है यस सर ऑफ कोर्स नो हेट ऐसे गेम खेलता हूँ मैं और पूछ लो ऐसे गेम अरे हार्दिक पढ़ ले मैं हेलो साहब हेलो आकाश भाई ईगल बात कैसे भाई बहुत बढ़िया बताओ मेरा बेटा है साथ स्ट्रीम पे मेरा कटिश बेटा of getting in for the after party next week. Enigma Galaxy now just 6 points behind. आ गया बाफ लेके आ गया मेरे बेटे मेरा बेटा आ गया मेरा बेटा भी आ गया के लिए सब मेरा बेटा आ गया गाइस सर्दी बहुत ठंडी हो गई है बेटा कुछ नहीं होता चिल करो गरम पानी का कोई नहीं होवे यार अरे वो ऊपर नहीं हो रहा है वो पता है आज मैं तेरा आवाज ऐसा क्यों आ रहा है एकदम ऐसा अपरंपार कुछ लिया है तूने कुछ तो अभी लेके आया है कुछ तो लेके बैठा है अभी अभी बोलता अरे अच्छा छोड़ो स्ट्रीम पे हो वरना अच्छा नहीं लगेगा क्या लिया हो जरूर अभी बूट कैंप में है या घर मैं तो घर पे भाई मेरा घर है तुम लोग को अच्छा नहीं लगेगा सुनने में जब मैं बोलूंगा ना होम स्वीट चलेगा क्या बोलने वाला बता बोलना नहीं लगेगा कि सबको तेरी पता चल जाएगा असलियत बता कोई बात नहीं तुमको बहुत गंदा फील होगा तुमको खुद पे यहाँ पे तीन लोग बोलेंगे मिलके अबे 3 आ जा और 10 आ जा मेरे नहीं पहुंच पाएगा बेटे शायरी काम नहीं आएगी हमारे शायरी वायरी कुछ नहीं करेंगे नॉर्मल बोलेगा नॉर्मल संगवन को मैं देता हूँ जॉब वैसे भी वो भी हरियाणा का है ऊपर से मेरी तरह जट है अरे विक्की भाई दे दो सांगवान को जॉब दे दो तुम अरे मैच में ध्यान दो बे एक नॉक दे दिया उसने बट विक्की भाई तुम सांगवान के सामने आ जाओगे जवाब दो चूतिए तुम सांगवान के सामने आ जाओगे सांगवान डर जाएगा विक्की भाई तुमको देख के सांगवान को झाड़ बोलता है जॉब दो भाई स्ट्रीम प्लान कर कुलदीप भाई करते हैं BGS मोड्स नहीं है लग रहा है जॉब पर सांगवान ये BGS बेचारे तब तो वैसा को बोलो कनपट्टी डाल कर देंगे मार के ऐसी दिखी बॉल कभी रिपन मोडाल में ही जाएंगे जल्दी जाएंगे आवाज नहीं आई तेरी थोड़ा तेज बोल यार तू अरे आवाज नहीं आई तेरी जो बोल रहा है गला ठीक कर ठीक है मेरा गला चूतिए अरे मैं ये गेम देख रहा हूँ यार डिस्टर्ब मत करे वैसे तेरे से तो खेलने नहीं होता है सुन वो थोड़ा सीखना है औली दादा बोल रहे देखो आवाज ही कर रहा है सामने भी भाई सांगवान इतना बड़बड़ क्यों करता है पता नहीं भाई बचपन से ऐसा ही है गॉब्लिन भाग जा जल्दी अबे नहीं भाई गिराना दे बे ये गॉब्लिन को जल्दी निकल गॉब्लिन रात को अच्छा कवर देगा चल आ गया बच गया This is probably one of those points where वीपी ऊपर आ गई है मेरे को लग रहा है टीजे भी साला वीपी थर्ड पे ही अभी भी फर्स्ट पे कौन है एसटी हां वीपी आएगा सेकंड पे नहीं सेकंड पे सॉरी 4 पॉइंट का डिफरेंस है पता है एसटी और वीपी में
और फैल्कन का अच्छा कमबैक कर लिया अभी 2 गेम में। बताओ ना कौन जीतेगा पैंचो। सोल दिल से सोल। भाई यहाँ पे 3 राउंड सोल की स्ट्रीम कर देना। सॉरी चारों। चारों कैसे वे? चारों सोल में थे ना? ये सांगवान था ये कभी? अरे भाई भाई ऐसा मत बोलो, सोल की आन मान और शांति सांगवान। मेरा नहीं ये लैग हो रहा है। ये मैं प्लेबैक स्पीड करता हूँ ना इसके लिए। कोई और भी आया क्या वीसी में? ओवेस आया, ओवेस और सांगवान है। Definitely spotted the player there. अरे टीजे भी राइट लेफ्ट करके अरे सांप बन के भी सांप वाली हरकत। Not really getting the damage. टायर फोड़ दिया उसका। Playing around this wall, spotted by Oh no! It's a lick of damage in, but it's not going to be good enough as X-Ray takes that tumble. First aid on board. 14 scores. GK first echoes that result. भाई टीजेबी को मारो। ये मारी थी ना सोल को लास्ट में। मारो सालो। Right now, especially for Wildcats, and with this new circle heading right towards the northeast side. अगर सांगवान को बेचते पूरी लॉबी को डस्ट लेता। बराबर। क्या किए ये आईडब्ल्यू वाले? निकल गए तो निकल जाते ना भाई अभी चारों। अभी फाइट लेना है उनको भाई। Give it up right now alongside Boran, who is taking a couple of bullets himself. You know, this is one of those situations where you have 2 more games to go, and the Wildcats have to have unbelievable themselves into the after-party showdown. It looks like TJB wants to chase this one down potentially. लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर। सांगवान भी लाइक हम कोई मंदिर का घंटा है। Virtual game squad up towards Severny, their secondary spot, usually liking to drop towards the Kovka, but this time around drops from Severny nice and early, and it actually worked out surprisingly. Box Gaming looking up towards 52 esports, just trying to make themselves a little compound to share some light, trying to stay away from a lot of ओ भाई ये और जगह for these players, but don't want to get too ahead of themselves, knowing that there is a fair bit of the game left to go. Oh, ST versus NGX, ST का finish हो गया है। Pick up that flush. Nick McGalaxy. It's starting okay. This is finish को ये लोग flash बोलते हैं, flash हो गया। to jump up into the top 5. हाँ। Stalwart. NGX fans in the arena. Casters, मतलब वहाँ पर बाहर बोलते हैं। अरे भाई, नहीं बट playing yet again another title here over in the PMWI, but for Team Falcons, flash कर दो भाई। slightly with 3 players on Stalwart, whether the Stalwart भाई सांगवान पैसे चाहिए? सांगवान पैसे चाहिए तेरे को? नहीं भाई। नहीं? दे। पेटीएम नंबर बोल। सांगवान को फ्लश कैसे करोगे? वो तो ऑलरेडी नंबर बोल पड़ा है ऑलरेडी। नहीं बताऊंगा। अरे नंबर बोल ना, पेटीएम नंबर। क्या बोला स्लेयर? सुनना। हाँ बोला। पेटीएम नंबर नहीं है भाई। सांगवान को फ्लश कैसे करोगे? वो तो ऑलरेडी फ्लश हुआ नहीं चाहिए भाई। देवराज उसको पैसे नहीं चाहिए सांगवान को, छोड़ो। सब मत बोलो यार भाई। मेरा सिर्फ यूपीआई है यार। आई एम सॉरी। नो पेटीएम नंबर है तो दे। ओनली यूपीआई आई नो देन फक ऑफ। fairly deep into this circle. They've managed to find a lot of positions. We're still thank you so much भाई। 2 subscribe कर दिया, मैं फॉलो कर दिया। थैंक यू भाई। The most players lost on a single team. सांगवान को भेजो, लॉबी खत्म। भाई कॉमेडी कर रहे हो तुम तो। लॉबी खत्म हो जाएगी क्योंकि उन लोग सुसाइड कर लेंगे। भाई ऐसा प्लेयर कैसे आ गया यहाँ पे? रेड मार लेंगे क्या? खुद को पकड़ के बे हल्के में मत लो बे भाई। भूल रहे हो PMSMB भूल रहे हो तुम। भाई जोन आजा सेवर्नी साइड प्लीज। राइट शिफ्ट बॉक्स और साउथ शिफ्ट which may potentially not head up there, so don't head up the mountain too early. क्या उल्टा बोलो तो सीधा होगा, समझ रहा है?
हाँ अपना strategy बता रहे क्या It वैस? does sometimes give you a little bit of control over that terrain, right? But it can be. UPI बोलो अरे उसके chat में ले ले जाके रियो करते Not बढ़ाते हैं। सांगवान भी stream कर रहा है YouTube without पे its जा उसके chat troubles. में ले ले जाके Similarly, भाई for Wildcats with 2 डाउन players that हमेशा have really जोन में struggled रहती है को मैं लेफ्ट से जोन भाई मिल वो जाएगा रहती है ना, भाई मिल गया है शायद। बट अभी पीछे से 2 टीम आ रही है ना इनके नहीं अभी हाँ जोन तो वो में बैक क्लियर करनी पड़ेगी सोल को staircase where you can play on various levels एक टीम up पड़नी है towards बस Sauber. But right now it still seems to be a decent place है to ना be जोन निकल गई playing रॉक at भी the जोन है moment. आराम से खेल लेंगे। बट अभी एक और टीम है पीछे यहीं पे चिंता मत करो भाई hedging their bets at the इधर moment. की They गेम don't स्टाइल want to पूरी take अलग है it सब too एंड far में into पंगे the लेते हैं हां ब्रो circle, rather just that. hold strong on this southeast edge. More for the अभी देखो moment. कितने बंदे अभी 6 It's बंदे one of बचे the हैं games बस where we dropped in over towards Yasnaya and Morph want to stay in this one as long as possible. Show us exactly what. अबे 18 टीम से बहुत ये होता है बे फर्क पड़ता है भाई फर्क क्यों नहीं पड़ता है बहुत फर्क पड़ता है बहुत ये टीजे वाले अलग ही बंदे हैं भाई बाकी को आते रहते हैं 2 बंदों पे देखो ये तो घूम रहे हैं हाँ और एक नॉक हो गया मर गए गॉब्लिन पेल दे भाई दूसरे को भी नहीं अरे यार It is traded off. वही उतर के नॉक किया ना Will be able to get that answer. नहीं नहीं दूसरा बंदा नॉक किया अच्छा नहीं हाँ वो फिर बग्गी वाला चला गया आगे Needs a little bit of a rescue mission. बग्गी भी 2 थे ना पहले तो हाँ वो वापस चला गया पीछे Hector gets across towards Lynn's position. नहीं बे हेक्टर नहीं They did. They managed to land the shot. They managed to stop this push. And now it's all on यार Omega to push अपने और इन in लोगों and में get this फर्क result यही for है देख Hector. वो लोग Not only रिवाइव का that, नहीं there's सोच रहे another वो player लोग there as ट्रेड का well. सोच रहे हैं और हम TJP have रिवाइव का सोच rallied around Lynn's down position. समझ रहे GK first will scout this out. अबे ये सीधा पूरे इंडिया में यही The duo चलता है from the back, पूरे swing इंडिया around में the side. GK ओ first taken low, अरे नाइस taken out ट्रेड as भाई well. नहीं फूटा Astray बट over नहीं towards फूटा Akshat from Xiao behind the rock. एक And फूटा GK first will crawl for safety. Quick smoke coming through from Xiao, very, very concerned with his teammate's safety here. Akshat तू off in the देखा रहा ना distance. उन लोग Didn't ने get that nice एंगल on बनाया angle, but हेक्टर now को he has नॉक to के लिए leave. And ठीक like you है said, they रिवाइव के rallied लिए together so ये very अपने को well सीखना है in भाई इन that लोग से play. सब TJB able to hold strong यार for just a नहीं little bit बे longer. So far, कोई नहीं एंटी अब देख वो डॉट एचपी रिवाइव हो गया अक्षय पोजी नहीं खेल सकता है देखा वो डॉट एचपी रिवाइव हो गया The rest of the knocks coming through. Boran though coming back into action, takes down GK first from afar. But they know where he is, and he's not really got too much to work with here at the moment. Boran for the Wildcats. I got the last player 40 surviving. reverse gaming by Go down UPI first दो in भाई this देखो ना इसमें game. है मेरे डिस्क्रिप्शन में वो देखो ना Representatives from Turkey. इसको पैसा नहीं चाहिए सामान को समझ रहे हो पैसा ही जीतता है बेंचो जीत पे लेके घूमते हैं के पास अबे अक्षत अक्षय पोजी निकाल देगा मुझे लग रहा है अक्षय पोजी नहीं खेल सकता अरे बढ़िया अक्षय पोजी निकाल दे बस यार अरे क्या जोन गया है भाई but Vampire Esports एक नंबर जोन पोजी के लिए खेल ले भाई अक्षत भाई सरवाइव कर लो टॉप पे आ जाओ They've made a very good run up towards here, so you know. सोचना ये जोन में अभी भी 18 टीम सब बच्चे सब टीम बची है मां कसम 18 के 18 टीम बची है देखा ही नहीं भाई अच्छा नेट मारा था वो very, very well situated in this circle. थोड़ा और नीचे फेंकता ना तो at least. नेट सही था उसको गाड़ी ने बचा ली बे अरे उसका 1 HP और अक्षत ने नॉक किया उसको देखना Certainly think so. I mean, there's plenty of shrapnel in the bonnet. Won't run like it used to. Never will. एक सेकंड लेट भाई क्लोज चल रहा है सैंडविच का भाई फुट का 35 क्या क्लोज चल रहा है भाई और फायर करने पीछे ही है हल्के से ये क्यों चालू रखा है मैंने तभी लैग हो रहा है प्लेयर को बोल दुर्गा पूजाई कोलकाता जाबो आमी and wait for his reaction. Ingress from Donuts USG. Unfortunately, Modi takes a little bit of damage. Clear, From right? Buggy. Doesn't go down just yet. बोल रहे की बोलची नाही सांगवान भोका चोदी सांगवान भोका चोदू की बोलची ना सांगवान भोका चोदाई कैलकाटा अच्छा होता I think they're definitely learning from their mistakes as this tournament RNG has gaming gone में on. विशाल भाई चल ठीक है कोई ना रिलैक्स वो 3 लाख की गाड़ी डाल देंगे 3 लाख की गाड़ी डाल देंगे खेल रहे हैं भाई दोनों नॉक हो गए ना the off angle, has got the teammate next to him. GZ is there as well. They both made it through. It's treacherous hillsides now, as she said. Turn up the hill towards Nigma Galaxy's position as they swing out to the eastern side. On as well. RSG were right underneath Stalwart down towards the south side. So they were very, very far behind. Very typical RSG play. Just send it to the direct center of the circle and see what you can make do with it. But this time, RSG भाई sent straight into the barbed wires of all these Sombre players moment हो and गया got भाई put लोग up का in the तो process.
And that'll be RSG out. Check करने बोलो, check कर बे सांगवान तेरा. This gives them great opportunity to ladder those 6 points at the beginning of the game. पता नहीं. Falcons taking on Stalwart. This is good news for the top of the table race right now. If you're a Falcons fan here in Saudi Arabia, action. अरे अक्षत 2 kill लिया, बढ़िया. अरे BC. SouL eliminated. तीसरा मार दिया. Out now, ranked 16th on the game. No man, हाँ 2 kill, 2 finish किया, 2 finish किया. Yeah, out now, just top remaining. And Falcons, like they waited for point their turn in line, and now it seems that they'll be moving into the circle. And with SouL pushed out of the way, this is a real opportunity to start making up those points from before. Indian teams are the ऐसा कुछ नहीं है भाई. Still got top. Anyone mods the comments delete हो रही है. Difficult stuff. Falcons with 4, one a limb on the cards. Back to back, just over this ridge line. All looking to try and push into this compound. They will certainly see this UAS kill switch. Needs to be on the money for this. J-Way a little bit further down. Falcons yet to make that aggressive push. They're worried about the backstep. See the smoke drop by top. They assume it's from that final player from Stalwart. Top just dropping on the iron sights. A lot of these players do tend to feel like the iron sights gives them a better shot. भाई एंटिटी बोल के थक गए भाई तो जाओ आप खेल लो फिर एक काम करो भाई. Letting these teams go. At all. Morph though, also on the sidelines, and SouL still has to move in. And with the circle, ओए क्या सर्कल कटा. Down towards the southeast, Falcon. They've been thrown a bit of rope, and they're going to start clambering up it. Try and get to the top of that cliff. I mean, at the moment, भाई एसटी का लास्ट बचा है मां कसम. Pretty close. They did let it slip just that little bit. Started the game 12 points behind Vampire, 16 points behind Stalwart, who have just been eliminated now. So the further Falcons can go, the higher they'll fly. Back to back. Somehow got that chicken dinner early today doing Falcon का पोजी भी ठीक है, अच्छा है. Left side है, H पे right side है. हाँ Falcon पोजी बढ़िया है bro. VP कहाँ पे? Vampire Esports left side. बिल्कुल उस तरफ है. VP H पे है ना. VP ये पुश आएगा. Now they've got Raven caught out the circle. It looks like they're just Falcon का पोजी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. भाई इंटरनेशनल फर्क है क्या है, बहुत जमीन और आसमान का फर्क है भाई. उधर वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं, इंडिया में इंडिया के बेस्ट प्लेयर खेल रहे होते हैं, बट उधर सामान को लेकर जाना चाहिए था. घंटा कोई ढूंढ ही नहीं पाता किधर लेटा पड़ा है. सीधा हैशटैग टू आता है मैच. हां भाई विकी भाई सामान जान दो. सांगवान एक ही बार कभी सांप नहीं बना है पीएम. प्रॉपर गन फाइट पे खेलते थे ना. हां वहां पे फर्स्ट मैच सांप थे, बस फर्स्ट मैच उसका. अबे वो तो सांप बनना ही पड़ता है ना जब सबको लेटना पड़ता है भाई. वो तो वरना सांगवान की जिंदगी सांप बन के निकली है. हां विकी भाई ये तो सही बोले आप. What's this man been doing all his lonesome? Been providing so much team join करने वाले हो? ST or Falcon? Team Vampire Esports. मैं सोच रहा हूँ ST सोच रहा हूँ. Points for themselves. तो नेपाल जाऊँगा. Here's the nade earlier. ये नेपाल की थोड़ी है. हाँ पता फिर भी बोल रहा हूँ. On our angle. The judge is able to get that spray down. Spots the player in the bush. एसटी नेपाल की नहीं है तो तेरे को नेपाल जाने का एसटी ज्वाइन करके. वाह They are just sending bullets every which way and somehow finding their mark on pretty much everything there. Morph looking to engage. Rocky doesn't get the knock there. Back behind cover and has to push through back through the smoke. GK first spotted on the off angle there for Raven Claw. भाई वैम्पायर पूरा एज होल्ड कर रही है. Thinned down yet again. But कब तक? Actually goes down and that's the support from the rest of the team. वैम्पायर का एक बंदा मर गया बट just 3 players now, but they are racking up points slowly but surely. Box are on their north side with a little bit heavier firepower right now, a little bit more hefty as the Vampires soon do suffer down to 3. Lucas Stone and भाई वीडियोस व्लॉग्स डाला करो यार, डालेंगे भाई अभी. Still a formidable squad to be dealing with and it seems like they've turned back up, but unfortunately for भाई them, बॉक्स फेलम दे सकती है Vampire. A really beautiful spray from Break to Falcon पे जोन. It will slow them down. A southern shift comes through. A long nade, but not quite long enough here, and this might just give time. क्या लगता है Falcon और Morph का फाइट होगा? हाँ बॉक्स और पहले तो बॉक्स हो गया. Falcon और Morph का हो गया. पहले तो इसका होगा बॉक्स और VP का भी होगा. वैम्पायर का वो लोग का तो चालू ही है इन पे. Over on our angle. So far Falcons are controlling this. इन पे अच्छा पोजी भी है अभी भी Falcon पे. हाइट एडवांटेज भी है. Galaxy still with 3 players. They've been
able to pick up the pieces on the north side, and they are clearing that Oh, area. Empire's box. Very nicely Puta. found. I think that was down one Kia who did go down to them on the north side. Falcons, though, engaged with Morph right now, all very, very low. But they are looking to get those heals off, and they are succeeding for the most part here. Morph staying alive in those smoke covers. भाई Falcon CD ले लेगी, first आ जाएगी ये मैच में. Sending the smokes out as well. भाई मेरे को तो वही लग रहा है कि Falcon CD ले लेगी. ले लेगी. पोजी बढ़िया है उनकी भाई, बहुत बढ़िया पोजी है उनकी. Taken down on USG from break here. But VP भी 3 मैन इन्होंने 5-6 राउंड निकाल लिए और टॉप 3 आ गए. Top 3? हाँ. First is still. अच्छा आ सकते हैं, ऐसा बोल रहा तो. आ सकते हैं हाँ. Unless they. इधर भाई बॉक्स को पेल रहे हैं VP वाले, देखा भी तू. Yeah, maybe they did get no 52. Still there. Have their representative. Box फालतूगिरी किया ना, box को VP पे push करना With चाहिए that था. tiny little bit of cover. बेरो का वही left Out right fight open, चालू है. Empire Esports finally able to take that thorn out. VP ने उधर से वो कर दी, देख रहा है. Fires down yet again over onto break. Blade पता there है out the open. क्या Really कर able रहा to है survive that. ये क्या किया भाई? Their time. Only one player from box now down the hill. This is that deadly staircase I was talking about earlier. It's the staging. A missile just took it for an absolute advantage. Nick McGarity though with 3 players still up right now and 8 eliminations. भाई NG skills निकाल लेती है बे साला. Back into this one. Stepping back up to the plate now. Vampire Esports did a very good job to clear the rest of the side from not the most amazing positioning considering the circle. अरे Riverus, thank you भाई for another 100. Start making this work because पर हंस किस पे रहा है? किस बात पे हंसा? वही बात those things out of them. क्या बात कर रहे हो गाइस? दोस्त है वो, बहुत थोड़ी है. Bring it back into form. Only a friend. Donuts USG go down to a nade from Nigma Galaxy there as well, and the north side is starting to get swept. Vampire Esports will be their next obstacle if they want to push this way, but Falcons dominating the majority of this circle and not over onto Nigma Galaxy will slow their approach from the north side. That's from Vampire Esports as well. Currently have 6 eliminations. Falcons currently only with 3, but they have caused so much damage in this. VP वाले अभी इसको NGX को वाइप करने जाएंगे. अबे Morph क्या फाइट ले लिया लोग? Their ground in a very formidable position on the map at the moment. अबे Falcon से जोन हट गया पूरा. दूसरा फाइट ले लिया भाई ये. वो VP भी बोला गया. पूरा जोन हट गया Falcon. नाइस नेड ब्रो. एक और फाइट भाई. Circle north towards Vampire Esports. ये हैमरडीन के पीछे आएगा, बीटी देगा इनको भाई देख. अबे मर भी, उसको किल भी मिल गया वाह. हम हैमरडी पहले लेट के दादा आगे. Red bar health. लपेट लेगा इनको वो. Away. अमोदी. बस फैल्कन तो बनने वाली है, इसका वो लग रहा है. B2B Falcon को नहीं जान देगी जोन में, ऐसा हो जाएगा. वही बोल रहा हूँ मैं देखो. They've had probably some of their best results of the tournament so far today, but it might have been too little too late. Falcon Not को so ना for लेफ्ट the से other पूरा teams. पुश करते हुए जाना चाहिए. Falcon. वो भी खत्म हो गया Never Falcon. alone with the MK14 in If you hand. know, you know. player. Absolutely. अबे सीधा एंट्री है brutal उनकी, here in डायरेक्ट PUBG एंट्री भी है. Mobile. Speed of Still है bro. those shots. अरे वो ड्रॉप पे जोन है, There's ड्रॉप पे Ralph. जोन है देख. Nade at top side. Not easy hitting these nades from that kind of ये angle लेफ्ट से either. जाके मतलब थोड़ा But लेफ्ट they are in the trenches. आगे बढ़ बढ़ जाएंगे. boom bump कर दिया भाई इनका तो. Where to send these nades in. B2B को भाई पेलम दे दिए Absolutely on लोग. point. Polo shimmies out wide to the left. Low HP Polo तो spotted full behind the HP है smoke. भाई. Will be going down if it is going to be found out. भाई Vampire Esports still on full a knock frag. पे knock निकाल रही है Will भाई, be पूरा hunting. वाइप भी कर More दिया fun लोगों ने. Go चल down to it. We're down. और VP को पड़ी है to Falcon से. just Falcon के 2 knock. अबे Plenty of Vampire casualties क्या popping up माँ and चोद रही है Falcons भाई, unfortunately गलत. suffering 2 of them. Vampire three man- Esports three is man pulling payment out चल रही है. the dustpan because Three man they have payment चल absolutely रही है. swept this edge of एक absolutely मिनट फैक्ट्री anyone. बूम हो जाएगा that इनका. might अबे ये even finish हो dare गया to Falcon का. challenge them. एक Fluke अच्छा नहीं looking मोड़ for a रहा little है bit वो. more loot from downhill. They are कर रहा really है. limited on meds right now. You can see Stoned absolutely nothing on board to patch himself back up with. They'll be have to sharing those meds at some point, so they will have to group back together. But Vampire Esports. अभी पता है पर healing नहीं. अबे ये क्या loading हो गया बे बेंचोद. कितना मारेगी भाई? नाइस ब्रो, फाल्कन वाले अच्छा दिमाग लगा रहे हैं यार. फुल कमिट नहीं कर रहे हैं यार, क्या खेलते हैं. On board to patch himself back up with. They'll be have to sharing those meds at some point, so they will have to group back together. But Vampire Esports, they have been on a warpath. Hamodi really taking the fight to back at some point, so they will have to group back together. But Vampire Esports, they have been on a warpath. Hamodi really taking the fight to back as well. 2 players up and standing for them, but it's only 1 player now. Just Hamodi himself with a 1 versus 1 against kill switch. Finds some shots underneath the vehicle. Oh, Looking for boy. more, but spray down is there. And it's And J-Way Jake's and Fast wipe. back to back on the top of the hill. Can they get these reses and get back to 3? Swings out wide. Vampire Esports tries to take advantage of the situation, but Falcons, they're too fast. नाइस ब्रो. फक, फाल्कन वाले बहुत अच्छा खेलेंगे. Hey God, दो टीम को डाली, दो टीम ऊपर आ गई भाई. ये क्या है भाई? Knock finish, VP 3 on वाले 3. खेल रहे हैं भाई, देखना भाई.
Knock finish The fuck, be? Looking to get on that hunt. J-Way behind the buggy, taken down. 4 players for Falcons versus the Vampires. The wings are wide span right now, and this is where they start to block out the sun. But that's one going down already. So finding again, no meds whatsoever. This fight is one of attrition, and it absolutely is. Vampire guys Yusef's position behind this crate as well. If it finds it onto Stone, it looks like Stone has the info that there is a player there. What can be leveraged from this spot as the circle moves more towards Vampire? You could just barely see the glass of Yusef, but that's mainly because we've got the X-ray on right now. So very question is how much utility does Vampire Esports have left? And I think they've got absolutely nothing. Luckily, there was a loot crate on their side, but it's one apiece either side. Never made in hand. Stone actually finds Yusef. He can't quite hit the shots. That takes him down to 2. Vampire Esports are making this happen. 10 elimination up to 11 as Never Alone gets tagged. In they go with the push. भाई गलत पेल दिया वैम्पायर ने हाँ कसम. It's all down to powerful for Falcons, but the Vampires running up the hill will be able to. Oh भाई पागल हो गए भाई वो लोग भी. हाँ कसम. What a resurgence from this team. Damn bro, damn. In the back pockets, in the backpack whatsoever. पर क्या खेले बे, क्या खेले भाई. मस्त खेले. कोई भी जीतेगा ना वो इतना पागल हो जाएगा. Of course. हाँ बे. वो विनिंग सेलिब्रेशन भाई फिर माँ कसम. दोनों टीम ऊपर आ गई भाई, दोनों टीम. दोनों मैंने कहा था कि ये भी अच्छा कर सकती है, किल निकाल सकते हैं इसकी वाले भी, किल निकाल गए भाई. इसने बट फैल्कन के किल कितने थे? अच्छे थे. हाँ मतलब ये लोग 16 पॉइंट्स बिहाइंड थे फैल्कन फर्स्ट से. फर्स्ट 166 थी और ये 150 पे थे. अभी जो कास्टर लगता है ना जैसे वो मैस्टर खेला था, ये राइट वाला जॉन. ओए आजा वो गेम खेलते वे. स्मैश कार्ट. ओए जल्दी आ. क्या स्मैश कार्ड क्या होता है? अरे गूगल पे स्मैश कार्ड डाल डाल बस. अरे नहीं यार, मिच भी सुन था. मेरा नेक पेन हो रहा है, मैं लेटा पड़ा. स्लेयर बना तो. हाँ बना रहा. अबे नाम किधर से चेंज करने का? अच्छा यहाँ से ऊपर लिखा होगा. हाँ अबे बहुत अच्छा खेले बे, दोनों टीम बहुत अच्छा खेली बे. हाँ क्या नाम रखा है मैंने? आजा बोल. कोई IN154885. IN154885. अरे ये तो नया है कोई. क्या स्टेप से बोलियो? IN मेरा स्टार्ट हो गया है. मतलब मैंने भी स्टार्ट कर दिया. फीडबैक कर दी देख. The fuck? अरे बहुत ना वापस क्या बात करो ना वापस. अभी क्या वापस स्टार्ट करो. बैक करके सुनना स्ट्रीम में. IN154885 इतना याद नहीं रह सकता तेरे को पहले. आ गया. नहीं कोई और है. हाँ मैन. अबे ये गंदा मैप है लेकिन. लो 8 लोगों में तो मजा आएगा. अरे भाई ये क्या था? कैसे मर गया वो? क्या हो गया? अरे कब था? क्या हो गया? कैसा भागा है मैं अरे हट
क्या मारा है वे? माँ कसम। यार ये आओ भाई कौन आ रहा है? यार ये आ गया। अरे मैं 2 को मारा। कौन है ये? हाँ बे ऐड आ जाता है बे। चल न्यू राउंड स्टार्टिंग हो रहा है। कौन जीतेगा भाई? भाई क्या बोल रहा है तू? गाली किसे पकड़ा है? आजा पैसे नहीं की तू जॉइन। तुम्हारी जी फाड़ूंगा। हो गया चालू? अजी ये दूसरा मैप लगा ना कोई। भी सकता है भाई, बहुत अच्छे मैच चल रहे हैं। गाड़ी चला रहे। और बच गया तू। अबे ये ऐड का बहुत गंदा है यार। कौन सा ऐड? तो ऐड ही है ना। हाँ काल काल। और फुकरा के हो गया मेरे साथ। चल काल काल। दिया करे। अरे ज्यादा लोग आए तो उस टाइम मजा आया था। नया बनाओ क्या? हाँ नया बना तो बोल रहा हूँ। ये सांगवान अभी आया। अबे तो क्या है? ओह अबे भाई ये कैनन से तो बहुत गंदा मरता है वे। आया 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 ये ओवेस आया है। नहीं मैंने आया। हाँ 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 अरे बच गया। गॉड हो गया गेम में। मेरे व्लॉग देख लो, देखने बोलो ऐसे देखते हैं। मर गया। मस्त गया। चल साले याडू ऐसा बोलता है याडू तेरी गांड काटू तेरे पूरी दुनिया को काटू तेरी गांड काटू। अरे दूर से क्या मार रहा है? अच्छा मैप लगाते हैं। इसका साउंड बहुत ज्यादा है वे। मैं तो म्यूट कर दिया इसका साउंड ही गेम का। लंड कहीं का। ये खेलते चलो आ जाओ ज्वाइन करो। क्या बोल रहा है मारो वो? बेंचोद को फांग। बता। IN 197640 एक से नुक। IN 197640 एक और वर्डिंग पड़ेगा। इन दो सागवान को बेंचोद को 7640। अरे फिर चली गई गांड मरा फिर। IN 46 IN 1967546043। IN नहीं है बे अब कितनी बार बोलूं भाई? IN 4760 4760 IN 194760 चल। प्यार से समझ में आ जाएगा ना भाई, प्यार से बोलता ही नहीं है। क्यों बोले तेरे को प्यार से चिल्लाया क्या प्यार से बोलने के? लोलू कौन है वे? तू है स्लेयर? नहीं तुम लोग नहीं है, तुम लोग गलत वाले में ज्वाइन किए हो। मैं क्या पूरी ओवर ज्वाइन किया भाई हमने। मैं और ये आ गया। देख वही तो सोल फैन है मेरे में। तूने गलत बताया हमको फिर। अबे शील्ड है तेरे पे?
और क्या ब्रो? क्विट कर कर रहे हैं। उठिया ये बोल। अरे रुक जरा 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 रुक जा अभी एक सेकंड क्विट रुक जा करना जरा। ओए। कर दिया मैं नया बना दिया। बोल बोल। अभी संग में ज्वाइन कर लेना। मैप भी ये लगाता हूँ, ये अच्छा बोल था। जल्दी बोल। मुंह से बोलना सही से। हाँ गांड से बोलते रहते IN1336699। इतना बड़ा रॉन्ग है। अभी इतना ही तो था। गलत है भाई। गांड से बोलता 1IN1366699। नहीं है इतना बड़ा स्लेयर। नहीं है अरे यार रॉन्ग। यहाँ आ गया मैं आ गया। बट तुम लोग मेरे संग में नहीं आ रहा। एक और बार बनाता हूँ। आया ना आ मैं। गया ना। अरे आ तो तू छोड़ कर आ तो रहे हम लोग मेरे में नहीं दिखा रहा था। वाह अबे यार बता रहा ना, रुक वापस से बना के। IN भाई 129843 6 नंबर दे ब्रो। IN129843। हाँ अब आया लोलू। आ गया। क्या हो रहा है? अरे यार ओह स्कैम हो गया मेरे साथ। रे साइप्रस आया तो मैं आपको अच्छा भाई वेम्पायर वेम्पायर 21 पॉइंट की लीड पे। क्या बात है। मैं बहुत चुकी थी मतलब। और प्लेयर्स भी आ रहे हैं, मजा आ रहा है। आओ हाँ लोलू लोलू। अरे नहीं भाई क्या हेल्थ बची थी इसकी। अबे यार बस प्लेयर्स आ रहे हैं भाई मजा आ रहा है मजा आ रहा है अभी मजा आ रहा है। मजा आ रहा है मजा आ रहा है बढ़िया। यू स्मैश बोल दूंगा सारे। अरे यार अरे ये क्या था? फेक लूप था भाई, किसी ने फेक लूप लगाया था। नहीं स्पाइक पे भाई स्पाइक पे फूट जाते हैं। अरे यार अरे पोपो पोपो भोपू बसता है। यंग से God is the winner man. God. सेम मैप लगाना जल्दी। God न्यू राउंड नेक्स्ट राउंड करना। स्टार्ट हो रहा है। रुक मैं एक और खेलते हैं ना, 1.5 मिनट का ही तो होता है। इसी में स्टार्ट हो रहा है ये। इसी में स्टार्ट कर। टाइम है चलो इसी में स्टार्ट करो। न्यू राउंड स्टार्टिंग इन 1 0। लेट्स गो। चलो भाई बच गया। हाँ चल सारे। अरे भाई उसके माइंड में चला गया मैं तो माँ कसम। अबे यार ऑलमोस्ट अरे
अबे भाई रॉकेट से उड़ा दिया वहां कैसे थोड़े लोग गेम स्टार्ट हो गई कहाँ हो? अरे बस आ जाओ भाई आ जाओ जल्दी आओ। अरे मजा आ अरे भाई स्टार्टेड हाँ बस जा रहे अरे नहीं मर गया स्लेयर मरा क्या मस्त हो जाता नहीं बच गया ये जीत गया भाई सोल की फाइट हो गई बॉक्स से हाँ सोल से बॉक्स सोल मार रही है सोल ने मार दिया एक नॉक दे दिया झूठ बोल रहा है अरे हो रही इज्जत से हो रही है दो नॉक है दोनों के सोल के भी दोनों बॉक्स के भी दोनों ओह नाइस कर रहे हैं यार गॉब्लिन अंदर घुस दोनों फिनिश कर दिया Akshat and Omega, last two standing now. भाई रिवाइव नहीं होना चाहिए यार अभी भी एक भी नहीं किया इन्होंने मिनट आएगा इस पे The two players from SouL have been knocked and also भाई वो रेस हो जाएगा बे यार no chance of getting those two guys. ये भी रेस हो जाएगा will be able to get up to a full हो गया ना हाँ बे हट split from these two teams to make this one happen. Vampire Esports over towards Minas Generales at the moment, just to the north of Morph. Morph kind of a Omega go and top 5. It is Omega who's trying to do the do-si-do with these two players. Can't quite make it happen. Giving them the fancy feet, finds one, gets the reload, but goes. Oh my God! बेंचोद finds two on box. अबे क्या मारा है ओमेगा ने बेंचोद? They are gonna try and take the fight. भाई God क्या मारा है? अभी 2v2 मजा आएगा ना भाई? ओमेगा ओपी और what? मेरे को डर लग रहा था 1v2 हो जाएगा बट उसने निकाल लिया। ओवेस कमेंट्स पढ़ो यार और मेरे को तो आया ही नहीं। ओवेस को पेटीएम चेक करने बोल भाई चेक कर ले भाई। Come on fight निकालो बस come on 2-2 Let's go ओमेगा अच्छा डू है भाई। Picardo right now bathed in bullets. पेटीएम करो ओवेस को। Going back and forth, losing two players early. भाई ओमेगा क्या मारा है बे मजा आ गया वहाँ। See, especially if you're looking to just try and put as many points on the board as you can, try and ladder up to those higher earning placements. ये लैग क्यों होता है बे बीच में मेरे को समझता नहीं है विशेष पतोड़िया थैंक यू मेरी जान थैंक यू सो मच थैंक यू भाई विशेष पतोड़िया भाई भड़क गए यार शुक्रिया विशेष पतोड़िया भाई बड़ा पेटीएम कर रहे हो ना पैसे मेरे निकलते नहीं है मत करो भाई भाई के पैसे डुबा दिए नहीं डुबा नहीं दिए वैसे यूज हो जाता है पता है इसमें यूज हो जाता है दुकान मेरी तरफ से हाँ भाई रौनक मोड ठीक है भाई
Lots of money to be had here in the PMWI as well as the पेटीएम का after-party नंबर 2 showdown. फिर Which will be a little bit more क्यों fun. Getting a load of क्या prizes हो there. गया We'll find out more about that बैलेंस on Thursday. किया So गया just भाई we'll be पेटीएम very मत happy to लो fill in भाई all the तुम details मेरा when it comes to them. But right now, उसमें all about these final मत moments करो of मेरे the को पेमेंट PMWI. मेरे कुछ So काम many का नहीं races आता है गूगल पे लो तुम गूगल पे लो भाई to try नहीं and claim that top spot at the थैंक moment. यू विशेष भाई बहुत हो गया On बस the top, Vampire Esports, who started off the कर tournament. लेंगे वो गाइस ओमिया के क्लच पे लाइक और 24 सब्सक्राइब कर दो elimination फटाक game. से As ओमेगा James said on the क्लच desk, तेरे को we लाइक didn't think they were going to be able to क्या get था back ये up to that average ओमेगा day one ओमेगा के average क्लच पे elimination. यार They've nearly भाई done अपना it क्लच so किया far. है अपने But को भी of लाइक course, और something on सब्सक्राइब that करो अच्छा समझ गया ये सही edge. पैदल है तुम्हारा Which is not a Cause method nam we nam use nam most nim often, nam but I feel ni it fits nam in. nam 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 nim Fair nam enough. nam Well, I mean, तेरा you गला know, ठीक हो क्या हुआ था तेरा गला ठीक हो एकदम से क्या क्या लेके आया तू अरे the night बताया नहीं तेरे को गया क्या गरम लेके पानी आए अभी तो भी गला खराब था came इसका up day 2 गरम and पानी पी के अब Vampire गाने छोटे गा made रहा it है away, but अच्छा 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 इंडिया में गरम गन पावर पानी की कमी भैया नहीं इंटरनेशनल एक्सपेंसी here कमी है in ड्यू day टू बैन 3, सीन it's यस time for ब्रो Vampires गौतम to जोगी भाई reign गन पावर तो supreme, है अपने पास see थोड़ा exactly what they can एक्सपीरियंस का get इशू है done, but there is still थोड़ा नहीं those बहुत 2 games and 21 points. It हम may बहुत put अच्छा you अच्छा मारते हैं भाई just ahead of teams, but at this point in गन the पावर tournament, भर भर he's के बट वो miles यूटिलाइज नहीं ahead हो and पाता ना can सही look से quite daunting. But Falcons and Stalwart, we know these are 2 teams. आरएसजी Daunting. भाई ये दो गेम में Just कौन another चैंपियन word बनेगा in the भाई ये तीन vocabulary टीम to का ही them. है ना जो भी है जो They'll make तीन it happen तीन चार regardless टीम or है not. आरएसजी अगर दोनों मैच चिकन ले ली तो आरएसजी हो Not too जाएगी many फर्स्ट teams outside of Picardo आरएसजी तो कुछ भी struggling कर right now. सकती है भाई हाँ भाई लोग का Fairly कोई भरोसा disparate नहीं positioning. No one तुम really अब पैसे clashing वाले हो just इसलिए yet. ऐसे बोल रहे हैशटैग बड़े लोग नहीं भाई RSG, पैसे वाले लोग TJB, नहीं भाई बहुत गरीबी Evo चल Key रही from है the अभी north side, फिलहाल all तो बहुत चल रही है starting भाई to eke their way more दो central. सुपर चैट See की more जगह fair as कुछ well क्या as गेम अच्छा भी भेज देखी रहा side है मैं on the north अरे end of भाई Los विकी भाई Leones. क्या भेज रहे हो तुम Potentially ऐसा looking for a central position as well. 190 North having, 169 you ओ know, भाई वैम्पायर में बहुत अच्छा slow बट comeback लीड है from पता है day 1 and making it बोल onto तो the रहा हूँ first 21 page पॉइंट की लीड है of the सेकंड से leaderboard और today is actually थर्ड somewhat से of an 23 achievement in my opinion. You know, starting day 1 in firm 18th place, start crawling अभी यार इन लोग दोनों फॉल बैक कर लेंगे मुझे ऐसा क्यों लग their रहा है way back up to here, बॉक्सर भाग देंगे talking फ्रॉम रोनक one of मॉड the अरे अरे coach थैंक of यू that भाई team, and you know, रिवर्स it's थैंक यू 18 फॉर द out of 40 मेरे 5. भाई थैंक यू I mean, I was Thank you so रोनक much. को 6 out of 5. क्लासिक That खेलना was चालू rough करना to say पड़ेगा the यार least, but खेलते हैं भाई मैं तो बोलता it हूँ did रात get में delayed. खेलते हैं That is क्लासिक correct, but guys, you know, it's coming स्लेयर here भी to खेल लेगा compete at स्लेयर the highest level. That's क्या रात को रात लेट नाइट क्लासिक्स मैन हाँ यू bro, रिमेम्बर भाई ब्रो मैं तो खेलता ही हूँ ब्रो भाई क्या तेरे मजा को आता बट था हम खिलाना नहीं चाहते ना अरे भाई यार सागवान को बुला रहा गाइस सागवान इंपॉर्टेंट है सांप कौन बनेगा बता सांप कौन बनेगा भाई तुम्हारा भाई एमवीपी बनेगा देखो सीधा अरे क्लासिक का हर भी मैच बनेगा में चूतिए क्लासिक एमवीपी हर मैच क्लासिक एमवीपी हर मैच The gap between Yeah, first अरे and अरे fifth right रौनक now मोड भाई is इतनी खुशी fairly प्लेयर बोल रहा है बहन significant, जो sitting at क्लासिक में ही 54, I बनता है believe. गेम में Between the खेलता two, नहीं if है my maths is कहीं तो if my बने maths वहाँ is भी नहीं बनता correct. क्लासिक में भी नहीं यस यस नमन अरे गुप्ता भाई चल करेंगे कल से ए But कल से खेलते हैं मेरा that मैं तो gap, बोलता हूँ whilst it seems daunting right now, हाँ it just मैं requires the यूट्यूब team स्ट्रीम at the top, करूँगा मैं भी Vampire यूट्यूब Esports, करूँगा to have a bad game, and that gap can close कल से very डन ना quickly if फिर you're one of those प्लेयर teams that संगवान have a very, very Yeah, good man. game, as all of लेट्स these गो मैं top तो आ players जाऊंगा are. भाई मेरा कोई But टेंशन the नहीं है gap तुमको between पता है fifth ना and sixth place, it's मेरा भी so कोई टेंशन closer. ही नहीं है मैं भाई तो मैं ऐसा खेलूंगा भाई मारता रात हूँ में ना क्लासिक राइट में शिफ्ट तो ड्रॉप आप इधर लॉट Seventh क्या is नहीं नहीं really अभी still नहीं to अभी play चुम्मा for. साइड में को लग रहा है लॉट के एल के तरफ चुम्मा के ऊपर अभी सीधा आरएसजी के पास अभी सीधा एसटी जाएगा डीडब्ल्यूजी डीडब्ल्यूजी के ऊपर आरएसजी के पास सीधा एसटी जाएगा देखो top spot with डीडब्ल्यूजी 35 डीडब्ल्यूजी Check that out. सीधा Stone एसटी actually made नहीं his way onto this leaderboard again with और 31 फाल्कन जोन में आ जाएगी eliminations. तू And we देख ले thought, like डीडब्ल्यूजी और they एनजीएक्स भी were जोन में आ very good, जाएगी but looks like इजीली
जल्दी। अरे और राइट फिर USG भी आ लॉस जाएगी। लॉस वाला disappear and with the back-to-back क्या chicken बोला dinner, स्लेयर वाला राइट finding STH पे बोलता है बोला ना अरे ST में सुन ये जाएगा थोड़ी चूतिया अरे लौड़े ने ये थोड़ी बोला ST में सेंटर बनेगा, ये तो बोला ST में जाएगा तो मैं भी आता रात को समझता फिर आ नहीं है जाना यार यार भाव भाव previously भाव in the tournament before. आज नहीं कल से Very खेलेंगे rough to play. Graveyard may as well be a सागवान literal की term फुल for the मजे position ली of the जाती map, है considering क्योंकि that वो it बचता is है ना, very, वो भी very सागवान मेरे बचता सामने है मैं बचता हूँ people सबके to सामने get यार, very पूछ on रहे हो? that map because it's just very, एक्चुअली इसको very बचपन में difficult इतना to get बजाया था through ना that कि ये अभी भी बचपन small क्यों हिला डाला ना सागवान सागवान तो मेरा प्यार है, इसको कोई कुछ तूने नहीं लेनी बोला। पड़ेगी स्लेयर की, स्लेयर भूल रहा है वो कहाँ जाके बंगाल जाके
स्लेयर भाई ओल्ड टीममेट्स को ही साथ देगा, टेंशन Yes bro. नवे टीममेट को अभी नहीं तो देगा। फेस का रिएक्शन देखना है जब which is still very much in the ये तो zone, सैड right? सा So we've फेस हो got a जाएगा। lot बट of सांगवार different अच्छा है, potential. इसको कितनी भी मस्ती करते रहो कुछ नहीं बोलता है पता। A literal term at the moment. इसलिए अब और Sat करेंगे। करो भाई in that area. मैं तो काम कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ यार। They have a lot of ओहो to play फुल with, पेमेंट but बाजी they don't चालू take है the वाह। opportunity, भाई इतना potentially लो could prove परफॉर्मेंस troublesome. का रीजन It's क्या the है question तुम of where बताओ this next circle भाई। goes, ऐसा right? कुछ If we मतलब get रीजन गलत यही है दे कि रहे हैं, अपन राहुल बहुत भाई, टाइम कुछ से करना खेले पड़ेगा। नहीं है, Then ठीक है। second, Fernandes भाई। हरियाणा वाले थोड़ा में पीछे हरियाणा अभी वाले अभी अब और आप साल का बुड्ढा। मारते टीम्स को नहीं बहुत है खेलना है, कूद हमें देते बहुत अरे अरे खेलना है। विकी भाई snipe कूद down, कूद हमको ही बहुत देते हैं headshot क्या before अभी। they take the knock. So एक साल छोटा है this मेरे is से, the high हीरो ground और advantage इंडिया here. में 26 साल लोगों का को बुड्ढा है, 26 साल का और लोग की तरह बुड्ढा। अलावा भी ये ओह, स्पेशल क्या हेड एडवांटेज खाया? डालनी पड़ेगी। स्ट्रीम्स वीम्स ऐसे खेलते हैं जैसे में जो फर्क ही नहीं पड़ता है, घुसो मारो ऐसे नहीं भाई। कहाँ हमारी से आ गया बे? हमारी प्रैक्टिस इतनी कम है इसलिए क्योंकि हम टूर्नामेंट्स ही खेलते हैं वो भी ढंग से। बाकी कोई भी मतलब स्क्रीम्स का भी खेलते हो तो ढंग वो से ढंग से खेलना नहीं खेलते चाहिए। हैं। वो समझ रहे तो हो? वो है सब भाई, भी ऐड और करना तुम मेरे को चाइना में मेरे जाओगे आईडी ना को लोग क्लासिक भी कर इतना दूंगा सीरियस खेलते हैं On बहन the चोद। ceiling currently and have his समझ head रहे हो? out वैसा of view प्रैक्टिस underneath होनी the चाहिए window अच्छे से and his पूरा vest on show. जोरदार Just trying to keep him जोरदार। very जोरजार टूर्नामेंट में भी कैसा है कि जो टीम नीचे है वो Yeah, फुल if बूम obviously बाम didn't करती exist, रहेगी। of course. वैसे in नहीं, a सब gravity-less सीरियस खेलो vacuum, then वैसा yeah, तो absolutely. थोड़ा Assuming he's धीरे point धीरे guard. सब सही हो Look at जाएगा। that. देख फाल्कन को रूट कर रहे FLC for the फाल्कन Falcons. फाल्कन कान Goodness me. The कान turnout has been absolutely incredible, कान John. फाल्कन Falcons on stream right फाल्कन now. कुछ याद आएगा देखो बस Giving him देखो some love. देखो वहाँ बिठाना चाहिए था रौनक। Dear me, बस कुछ don't याद even आया do कि नहीं that. लेकिन Very mean to you fellow player. क्या? Virtual Gaming will take us on. आवाज सुन के हाँ। Over from अरीना Aton की Esports. अरे They're down towards the southeast बहुत side, टाइम trying हो to make गया their हमको way through यार। Los Leones. याद but it's the आया कि Wildcats नहीं? who नहीं। hold a very good अरे position up towards the north side of Los Leones. They hold साला out both Aton as well as सपोर्ट तो Virtual है Gaming, मानना but पड़ेगा, hopefully pick सपोर्ट तो a वो भी couple of करती points थी। here. अरे चलते यार रौनक वो मेरे डोर पे कोई आया है। अरे यार भूख लग गई। रौनक हाँ गोवा चलते हैं। गोवा भाई मैं तो गरीब हूँ यार, नो मेरे मनी। संग नहीं गया ना तू कभी? नहीं वैसे गया है ना? एक ही बार गया हूँ, एक ही बार गया हूँ जिंदगी में भाई बस। एक ही बार गया है? हाँ सच्ची। लॉस के ऊपर ही देखना जो लिखा हुआ है लॉस उसके ऊपर ही वो वाली सर्कल वाली चल चल अभी ऊपर है टी पे भाई सन मारती। ओविस चला गया ना, अभी बचता था बचता था। अच्छा गेम खेलते ओविस बजेगा आके, मैंने बोला था ना ऊपर जाएगा। क्या बोला था? ये देख आ गया। क्या बोला था रौनक? कुछ नहीं बोला था, तू क्या बोला था? एस्टिमेट किया था तूने मेरे को। क्या बोला था? एसटी पे जोन जाएगा। गया ठीक है गया ना बस ठीक है गया। लास्ट बंदा मरे ना ब्रो, पहुंचते बस पहुंच जा भाई। रुक जा भूख वाले, बस थोड़ी देर रुक जा। 16 मिनट। अरे क्या भेज दिए विक्की भाई ऐसा तू? हाँ ठीक है भाई। हाँ ओए उड़ा दिया। क्या उड़ा है? अरे देख पब्लिक भी पागल हो रही है, क्या उड़ा है गाड़ी। बट इन लोग सेंटर ऑफ द जोन ले लिए भाई। अब किधर भी जोन बने, इस हिल पे उस हिल पे इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग को बैठे रहने का बस चुपचाप अंदर। He popped a tiny little bend in the knee. Yeah, kept it in. Springs. ओह क्या चिपका है भाई। आय भाई क्या मारा है भाई, पुच्ची दिया पुच्ची। That's a good pucci for you. Headshot of the game coming through. मेरे को लगा मेरा वाईफाई चला गया भाई, डर लग जाता है यार। Okay. Give the guy a sniper. Damn. Nice, and he'll find as many players as you need here. RSG शांत हो गई है अभी, पता है आज का दिन। RSG. A little bit of a scuffle. पता नहीं क्या हो गया इन लोग को। अरे इनका फाइट हो गया। There's a team just in front of them that they're going to have. Vampire Esports. That's just over the hill. As we get a little ये देखिए रिप्ले दिखा रहे इसका। Sends in on up and over. स्टंट बाजी चालू है भाई। वैम्पायर का एक फिनिश हो गया, प्लस हो गया। With Enigma Galaxy and not having the best of time of it right now. Enigma Galaxy have been absolutely on a tear today so far. ये देखा ये लोग ये मैच में भी Enigma Galaxy ना अराउंड 8 से 10 किल निकाल लेंगे।
this is the same Still team. tournament में top 5 वगैरह Well, does go low, but अरे भाई वो फुटा नहीं taking a fair amount of shots from Freak here. अबे उसका हेल्थ देख गाड़ी का मां का सही That vehicle is not going any Daring longer guys. there. I'll have to Full take daring. it on foot now, but still there are shots ringing out towards them. फुल गवाव लूट रहा था वो गाड़ी का जोन है 52 नहीं 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 slinking their way across the hillsides. RSG trying to have some oversight. भाई क्या इतना स्पैम कर रहा था Under pressure from Lightning, one of our MVP Futa. candidates, and taking out the vehicle. That's going to do the job. Boom goes the dynamite. Thus takes a knee. टैप टैप भाई 3x टैप टैप On this player. iPhone के संग नहीं खेल रहा And he's going to go for another here. नॉक नॉक हो जाएगा राइट Takes a lot of बचेगा damage, but they get a second knock on these vehicles. I don't know what's going on. नीचे आ गया जोन ओएस बोलता है Out in the open. Daku here looks at the buggy and just doesn't know whether it's his savior. डाकू भाई तो बहुत डैमेज ले रहे हैं जोन से Every single vehicle that 52 esports has sent through, RSG have torn apart. Honestly, he's just कौन से फोन पे खेल रहा है मेरे को जानना है बे Lightning down towards Picardo, more on the road side, but his virtual gaming squad dropping in on down one Kia. They look like they didn't expect. तेरे को बताया था क्या फोन करके down Junie Nathan hand. Dope OG, thank you bro, thank you bro, thank you. Get a little angle there and be able to get a flush. देख flash बोला flush never alone up in the elimination field flush again, कर by दिया the भाई way. This guy's a madman with this sniper, looking for the eagle eye prize there, but seeing what they can get done in terms of eliminations first. Down one gaming. SouL arena में Team बैठी SouL, है remember they are down to 2 from earlier engagements on their south side. Box similarly hampered. They are down to 1 now as 52 finally get eliminated. Down one here, not looking to go for this full push just yet. अबे क्या नॉक अक्षत क्या बढ़िया नॉक क्या southwest edge. Sung does get knocked by Team SouL, or at least the remnants of them, over towards Picardo. Looks like Akshat does have eyes on from that area. Not from Nepal. Thank you, bro. Thanks a lot. Should be able to get that one back up, hopefully. So, Stalwart under fire, action close. The Vivo keyed. RSG. Took a knock earlier from the barrel of Where's your favorite player knock ho gaya re? But now they're engaged with one of our top fraggers in the tournament action, trying to get some intel. Pika swings out wide. Might be able to get this player on the wall. Looking for that engagement action. Looks good, and there's the 1-2 punch from Stalwart. Nice coordination coming through on that aggression. The oversight from Adrian, not going to happen there. Not going to work for them. Diego takes a lot of damage from Pika. This is coordination from Stalwart. This is why they are one of the top teams in this tournament. Really well done. सांगवान इतना शांत बैठा है कैसे? I've been able to put a dent into them. Stalwart holding it down towards San Martin. Move down to a little bit along the right side to the. कैसे हो अरे हुसैन भाई एकदम बढ़िया भाई बस स्पैम मत करो तुम बस प्लीज यार आई लव फ्रॉम राजस्थान थैंक यू थैंक यू ना फ्रॉम कश्मीर अरे थैंक यू भाई कहाँ से लव आ रहा है हमें बहुत खुशी हो रही है धन्यवाद भाई कॉम्पी में कमबैक करोगे आप भाई पहले गेम तो आ जाए गेम का था बता ओह फाल्कन It looks like Team Falcons, they are not done yet. No, they are just going to keep on going. 2 elimination points now found. Although that's probably not the story that you tell having watched this game. It feels like they've had much Omega 3 kill ले लिया तीसरे बॉक्स वाले को भी Omega ने मार दिया था क्या? With the highest elimination count at the moment, bar Team SouL, who have had 4, but RSG, all 4 of them alive as well. Vivo keyed. अरे भाई ST suffering here, but it seems like क्यों पुश किए मेरे को समझा नहीं लोग अभी. Their own medicine. Adrian from the top rope sends it in. Splashdown. MG. Falcon पे जोर है पूरा भाई हिल वालों के तो लग गए भाई हिल वाले ऊपर बेचारे VP का भी एक गेम अच्छा जा सकता है VP टॉप 3 आएगी अरे नॉक हो गया Falcon भाई क्या मार रहा है वे लेकिन वो M24 बड़े जब कर रहा है तीन नॉक कर दिया अभी तक तो भाई बहुत फाइट्स होंगे अब तो भाई थैंक यू गाइस थैंक यू बहुत सारी जगह से मैं प्यार आ गया थैंक यू सो मच a lot of open ground पूरा लेवल की फाइट होगी 87 से
in disbelief. I don't think I've seen स्टोन रेज नहीं हुआ, देखो देख किल भी चला गया उसका. ever. Now Wildcats are coming in. Take down a player from Vampire. तेरा आवाज बहुत These कम आ guys रहा are now है. just down to 2 players. This really opens things up now for Falcon. मैं बोल रहा ना, मैं बोल रहा VP थोड़ा They फंस need to जाएगी. look for themselves for an मुझे लगा हिल end पे होगी. game VP finish. 2 मैन ही है ना अभी. और हाँ आगे जाना भी ideal. IW वाले This is where they need to see पीछे themselves. से That much players. Question on how फाल्कन long वाले can they सब live here? परेशान करेंगे. 15 teams alive. 20 ओहो minutes. ओमेगा, अरे माँ चूत दिया अभी ओमेगा. दो फोड़ दिया मॉर्फ के. भाई फाइट दिखा दो यार. अक्षत ने भी नॉक कर दिया. 2v4 लेट्स गो गाइस. मॉर्फ भाई दिखाते नहीं है वे लोग फाइट हट सोल का. भाई देख अब भी दिखाया जाके हट पेन चूत. अब तुम मर गया, दिखाया नहीं. बट एलिमिनेटेड हो गए. हाँ उससे ही मर गए गाइस. उन्होंने टीम मार दी. नहीं मॉर्फ का लास्ट प्लेयर रह गया बे. बच गया वो. अच्छा थर्ड पार्टी हो गए ना ये लोग पीछे से. और अक्षर जोन से मर गया. बट सही किया ये लोग को बढ़िया मारा मॉर्फ वालों को भी. नेड से 2 फोड़ा. काफी अच्छा डुओ यार. इसका नेड का एटलीस्ट रिप्ले तो दिखाना चाहिए भाई. हाँ बे. Just रौनक का मस्त डे क्या. वाह एकदम बढ़िया. Sinan telling me that, you know, Boran on those final days, in those final matches, that's where he really starts to pop off. Enigma Galaxy take a knock over towards Ralph. ये बेस्ट जोन है पता देखने के लिए. Jousting up the hill, TJB. बहुत हिल है. इंटेंस फाइट होता है भाई. 3-way fight right now over on the western edge. Lin spotted. Yeah, you're not going to win that one, Lord. Able to do the work. देख NGX कितना 6 किल निकाल दी अभी. अब और निकाल देगी. अभी इनके बेस्टी है नीचे सामने डिडनी. नहीं बट अभी लौड़े लगेंगे NGX के. NGX मरेगी भाई अब. I think रोड के राइट साइड ही जोन बनना चाहिए ब्रो. अबे मौली लगा दिया अपने आप को पागल. मुक्का मारते मारते आते आते. फाल्कन से भी जोन चला गया अभी. हाँ वही तो बोला मैंने. VP का बंदा है वहाँ पे बैठा हुआ. बट वो नहीं आ पाएगा जोन. नहीं आ पाएगा. इजी एंट्री है उसकी. इजी नहीं है. देख लेना नहीं आ पाएगा वो जोन. मर जाएगा वो. लिख के ले ले वो जोन नहीं आ पाएगा. अभी फाल्कन वाले क्योंकि लेफ्ट ब्रिज पे जाएंगे ठीक है. या तो फाल्कन वाले को दिखेंगे या तो अब वो उनके ऊपर जो उनको दिखेंगे. IW इसको भी मार देगी RSG को लास्ट प्लेयर को उसके. फाल्कन वालों को किल्स यहां के लेके लेफ्ट ही जाना. विनीत बिलवानी भाई क्या लग के. Someone here, sorry, coming in from the behind. ये के बोलो डोबा. TWG वर्सेस ST वर्सेस फाल्कन. कम ऑन मजा आएगा ये फाइट देखने को. I have no doubt. फाल्कन निकल जाएंगे. फाइट लेंगे ही नहीं. उन पे गाड़ियां नहीं है क्या भाई. आई होप फाल्कन पे गाड़ियां हो भाई. नहीं होगी. आई डोंट थिंक सो. Finding the time. ओले फोड़ा 2 फोड़े. Comes through Damar, able to open things up, but in the meantime, Damwon Kia have descended away from this engagement. फिनिश हुआ. 2 फिनिश कर दिए. चल बढ़िया. फाल्कन को किल भी मिल गए. 9 किल ले लिया भाई. 4 में ना रही भाई. बस बच जाए लोग यहाँ से आगे. बच जाएंगे इजी ब्रो. They're looking to take themselves somewhere safer. इजी बच जाएंगे. हाँ देखो चला भी गया रोड के रिच के लिए. पावरफुल ले लिया जगह. हाँ ले लेगा. उनके पास और भी गाड़ी है. सो क्योंकि अकेला है ना. ओबे और भी गाड़ियां. अरे मादर चूत ये कहाँ से आ गया. ये कहाँ से आया. That's what we're talking about. Could be Trixie. Vivo Keyed still in the fight. What the fuck bro. मैं तो मेरा मैप पे ध्यान था. मैं देख भी नहीं रहा था. A lone survivor. How far can Team Falcons push to try and catch up to that gap? 3 players remain. Wildcats with 3. Kia suffering. क्या फटाक से स्कोप स्विच कर दिया. इनको मर गया वो विल. ये भाई ये लास्ट में क्यों होता है. ST भी बची है. VP भी बची है. फाल्कन भी हाँ भाई. VP का जस्ट हाँ पे मरा. 4 वो देख फाल्कन भी अच्छी एंट्री थर्ड आ जाएगी. अरे यार क्या कुछ हो सकता है ब्रो. अगर इन्होंने नॉक ट्रेड और ST का अकेला बच गया वो कुछ कर सकते हैं जोन में भाई. क्योंकि 3v1 है. इनमें ट्रेड तो होगा. अगर किसी ने वन साइड वाइप कर दिया तो अलग बात है. भाई क्यों लैग हो रहा है इतना बे. They did make their way across. Now the Wildcats. It's here. सुपर कितने का आया है. Right at the final hurdle. मेरे को पता नहीं है. Turkish team looking to make up some of the points right at the final hurdle. नहीं गया तो आईडिया नहीं है. Right now sat behind the leaders. Oh भाई.
They're going to need, well, if they get a chicken dinner, they'll be able to get 15 points from that, so they need 5 more points to draw level. And at the moment, there's not that much in the lobby, so Falcons right now... ये ST वाले को देख रहा है ना बट but they can put themselves right at the door of victory for the final game. अबे वो फोकट मर गया पता है फैल्कन वाला वहाँ पर 198 पे VP 178 पे Falcon bullets from Wildcats 8 पॉइंट तो लेकर गई है ruin the days of Falcons at the moment. He wants to be the one and his team just behind. Talbot 168 ST वाला क्या कर रहा था जोन भी नहीं था teams right now, but Tops find himself a safe position at IW में पूरा जोन है पे बापा मौलिक हाय ब्रो भाई 1 HP बचा है वो टॉप मर गया सी फैल्कन को मिलना चाहिए था भाई किल इसका ये चिकन मिल जाए फैल्कन जोन अभी जोन का बट पूरा जोन इन पे है पूरा हाइट एडवांटेज भी है पूरा राइट से आगे भेजेगा और नॉक देगा ऐसे ही कुछ करना होगा. Now it's time to go to the checkout. Well, that won't come till their angle. We'll see if they can get there first. Yusuf though. Smokes नहीं है बे smoke utilities नहीं है इन पे. Biding his time. Circle dead center. Oh, nice try bro. देखते हैं कैसा है. Make the first move. Never alone has been absolutely unbelievable this match. 4 headshots so far. With the hand. Powerful drop to nade over. If you can get that opening, oh, that's क्या नेट डाला है भाई. Down. He was their point man as well. If Never Alone can find a snipe, it's going to bring him into a 1 versus 3, but they push in instead. Rifles in hand. UMP to lead the charge. M4 to back it up. खत्म चिकन है फैल्कन का. Easy. भाई 12 kill chicken 27 points. भाई बट वो नेट क्या बढ़िया डाला. 1 versus 3. The Falcons challenging for these top spots. They want to take this one. Falcon OP भाई. बारिश हो रहा है क्या उधर पता नहीं शायद से. Falcon OP और भाई क्या ही इंटेंस लोग का चालू है वे माँ कसम भाई. What a fantastic way to बट अभी भी ये फर्स्ट पे ही है ना क्या नाम है. This is going to be exactly what they पता नहीं भाई कितना होगा देखना होगा. चलो मैं आया 2-5 मिनट. मैं भी आया. Where we at right now is going to be okay. कुछ खा के आया भाई. Guys be right back. तब तक आप लोग थोड़ा मैच देखो. मैं आया फटाक से ठीक है. कुछ खाने का देख के आया मैं. Who are staying neck and neck with them. And do not count Stalwart out just yet as well, Blank. They were in that game in 3rd place, right? Yeah. They came all the way in late. And that was phenomenal for them to be able to jump on up. Yeah, I just cannot believe what we're seeing here today because one more game left right now. I just don't believe that there are 2 teams at the top that are just so neck and neck at the moment. I can't wait to see how it turns out. And the race for the top 5 as well. It is all heating up and it is right to the last game. Do not go anywhere. We'll go to a short break. We'll be back soon with the desk. Instinct, a mind sharpened with attuned senses, awakened by what we're known for, but legacies are meant to be left behind. Why play to your limits when you can break them? Hear only victory. Forget what you know. Unleash what's next. ये रौनक और एक गेम बची है क्या? बची है ब्रो बस. एक बची है ना और एक.
welcome back, everyone, to PMWI 2022. We did get to see Falcons take home a victory, get themselves one step closer to that $500,000 prize. And well, speaking of prizes, you guys at home still have prizes you can win by changing your profile picture when it comes to your social media platforms to the team you are supporting, and making sure to comment over on the official social media channels. Make sure you guys check that out. Also, make sure to check out Savvy Gaming Group, as they've been able to help support and put this event on for us. A big thank you to them to make sure that we can make this possible for all the players, for all the talent, and of course for all of you viewers over at home. But ladies and gentlemen, let's actually jump into our SDC match rankings to see how many points Falcons did get, and then obviously get eventually into the point of seeing have they been able to take first place away. We're going to find out in just a few moments here, but 27 points is massive. It's going to be super close. It is going to be, wow, I'm getting ahead of myself. Oi, But yeah, for Team Falcons here, the circles were wild in this game. Constant hard shifts. Yeah, these past two games especially, so many hard shifts. So Falcons able to capitalize on that. And then they had a crate drop on them, but I can understand all the concerns that they had about those high ground positions overlooking the roads. You have to deal with all of those teams before you then come back to the circle. So that in itself causes so many trials. It's like a walk into a fire. It's a gauntlet. Even if you don't like eliminate the entire squad, if you just reduce the numbers and regroup on the other side of the road, you have a very clear chance of denying that win away from the Wildcats, which is exactly what they did. 27 points, that's huge. And I'm not gonna lie, you have some tournaments that become a little bit boring towards the end because you know which team is going to be taking the trophy, which team is going to be taking that first place. Not here. Like we have no idea who's going to take it home here. I think it might be a 3 or 4 point difference up at the top. Something like that. Probably something like that, yeah. Well, you know what, gentlemen? We're going to be getting to that in just a few seconds. We're trying to rush through here because you can see 3 minutes and 50 seconds until we get into our final match of the event. But really quickly, big thank you to Aramco as well for supporting this event for G8. You guys at home, many things for you to win. Not $500,000, but you can win some more prizes if you post your favorite memes and make sure to tag the official channels as well. I would love to see some memes at Max. I don't know if Stalwart Esports can actually win because they had a great meme of telling you to get away. That's true. From talking about John had to hold me back. Yeah, he did have to hold you back. We'll see if Stalwart Esports can come back here into the final match. But here is our highlights, our Sony highlights here from this last match. Yeah. Honestly, this is, you know, Falcons, the zone starting up on top of them. It was perfect. It was exactly what they needed to get this big game under their belts. But obviously, if everything goes your way, that's great, but you have to be able to capitalize off of it. There were moments at the start of today where I thought Falcons were playing a little bit defensive, a little bit almost scared to a certain degree to try and hold on to the lead that they initially had out of day 2. Right. However, in these last couple of games, not the case. They're coming out blasting. I think they look more controlled in some of these last games compared to the start of the day, and it bodes well for them maybe grabbing that championship. I really don't think the scared team would have done what they just did in that game. Like, we need to clear all of the western side, get rid of all the teams that are on that high ground position. Like, if they were playing scared, they would have never done that 100%. But man, you said it was like 2-3 points, 2-point difference between first and second right now. Team Falcons hot on their heel, but don't want to forget about Stalwart. There's still a chance they can contest that. I mean, well, let's focus on Falcons really quickly. They won match 5 on day 1. They won match 6 on day 2. They've now won match 5 on day 3. They have the home crowd behind them. They have the final match coming up here. They already have the cheers. The offline buff must be real. 2 points is very doable. The thing is, to me, Lars, Vampire Falcons have to play, in my head, almost a little bit differently to avoid as many fights as possible because you don't want to be that team between the two to go out first. Try stay stable. And again, you know, I think both teams are very capable of playing that kind of style you're alluding to here. But I'm going to go, you know what, Jason? I'm going to go with it. I think it's Team Falcons' time. I think, considering they've got the crowd behind them, a win on home turf, it might be happening. Top 5 नहीं आने चाहिए Empire को इसको Falcon को top 6 नहीं आने चाहिए. They're an amazing team. Okay, I'm gonna cut you guys off here really quickly. I apologize. We still need to focus on top 5, right? Dennis Bank Wildcats, they are within 13 points of Digba Galaxy, so another team. Exactly. Another team that cannot afford to go out early. RSG as well, who have fallen out of top 5. It is getting so tense in here. I can imagine if Ningma Galaxy can qualify in top 5 with Falcons for the after party and the R8 joining up there, like the crowd is going to go wild. 3 local teams playing in a 12-team event on local home turf, like that is insane. Like the domination from the region is absolutely huge. Look at Vampires here, getting ready, getting underway. They know they have the game currently in their hands. $500,000 in their pocket if they can hold on to this lead. But our commentators are going to have to come in here, and hopefully they're hyped up because I'm hyped up. We're seconds away from our final match here of the PUBG Mobile World Invitational 2022. First place $500,000, top 5 advance into the after party showdown next week. John Allen and Blank, take us away.
One more ride, once more into the breach. In 30 seconds, we're going to be taken to the skies over Erangel for the final time here at the PMWI to crown our champions. It is all coming down to this 2-point difference between Vampire Esports and Team Falcons, and that 5th place chase still on the cards. It is real scary at the moment. RSG, 137 points. Enigma Galaxy, 148. Definitely possible if Enigma Galaxy has a bad game here for Regans to get back into that top 5. But it's the Denny's Bank Wildcats who have been really pumping stuff out in that last game to try and push into that top 5. For the Turkish team, you know, this would be absolutely monumental for them. But stalwart, 178, 20 points exactly behind Vampire Esports. We cannot count them out yet. From day to day, they have been our most consistent team. Certainly have. One more chance to prove that consistency here as the playing path comes on in for the last time. From Novo up to Stel, but this time around it's a little east leaning. So Gakka, a little bit late drop. अरे विक्की भाई थैंक यू यार मिसल पाव भेजे हो तुम हमारे लिए थैंक यू मिसल पाव खाएंगे ये मैच के बाद बढ़िया फुल खाना खाएंगे मस्त थैंक यू यार विक्की भाई थैंक यू सो मच भूख लगी थी वैसे मेरे को धन्यवाद विक्की भाई Stone there with 31 eliminations, Lightning. चलो आ गया मैं आ गया लास्ट मैच लेट्स गो Who really has been man of action for our tournament so far. भाई लास्ट मैच चिकन आ जाए अपना मजा आ जाएगा ना आना चाहिए इससे will be able to get themselves onto North Sosnovka. अपना चिकन आ जाए बस बढ़िया मजा आ जाएगा Even may be down towards military base, and Vampire Esports will have to drop very long here. दोनों रेड कर खुद ही मन में क्या रेड कर रहा भाई So that does make things difficult for लास्ट मैच लेट्स गो SouL. I think he got all those headshots last match. I mean, I wouldn't be surprised. That was quite car fight होगा mostly. Just about holding on to the knock record, 31 to 30 to 30. Sugar पे होगी इस fight right now. The MVP race must be absolutely spiced out the wazoo right now. Player आया नहीं क्या अभी तक? Honestly, we've had so many good individual players. Always भी नहीं है. From practically Always है क्या? मैं हूँ. नहीं आ गया मैं भी आ गया. अबे दोनों 198. अरे माँ चुजी zone. दोनों 198 पे भाई 198 नहीं 196 है वैम्पायर का दोनों का 196 है नहीं वैम्पायर 196 और स्टॉलवर ये 198 क्या नाम है Falcon 196 Vampire 198 Eastern plane as well. This is really gonna clump those teams up to that eastern side, right? To clear all of the western side, get rid of really quickly. नहीं ओ Vampire 198 है Falcon 196 Vampire ऊपर है वही तो Vampire first चल रहा है भाई What a shift on an eastern plane as well. This is really going to clump those teams up to that eastern side, right? Not a lot of teams are going to want to go all the way out to Georgia Pole, so that's TJB who could potentially be hit here. Yeah, left side TJB versus they are on that north side. I'm going to try, well, we can see that they are on that north side, still trying to go for that sort of area. But do they wrap back? Try and go somewhere else. That's the difficulty. I mean, they want to get looted there. Straight away. AJ Gaming जाओ भाई तुम जाओ AJ Gaming भाई जीतने वाले पता है ट्रॉफी तुम लोगों को पता है गाइस AJ Gaming Diego, nothing but a pistol in hand. TJB have got looted up just a little bit faster. Yeah, even that shotty, that UMP, there's no way you could stand up to that with a pistol against two. I mean, miracle shots would be necessary, but it's just not going to happen. Nice high nade there to scare Cielo if nothing else. Lin gets the spray down. Okay. There is potential here with that shotgun in hand. That's 12k. To shut down a stairway push. With the K9 for Lin ready to bark. Just want to leave him alone here. Don't even bother with it. My K9 लेके बैठा है नीचे ना. Real struggle now for Vivo, Keed, TJB, but these are not the teams in the story that we are telling today between Falcons, SouL, as well as Vampire Esports. I've really stamped a place in our memories, and hopefully yours too. Certainly, SouL. certainly mine. This will be an event to remember for sure. Oh, come on! There we go. That was the bark I was talking about. He's ready. no scope. With Lin heads up top side. Now it's one last player. अरे नेट पे फोड़ दिया दोनों ही एक से नॉक कर रहे हैं to send it in there like he said. Cannot close the jaws around the target. I sent some UMP shots. भाई बट वो K9 का शॉट बहुत बढ़िया मारा. अरे पिस्टल वाले गन ले ले उससे. वो भी गाड़ी से चेज कर रहा है.
over these last couple of days. Following that race for the top spot, then of course you have जा been जा watching पिस्तौल with वाले us and चला चला trying to चला earn तेज those तेज daily medals तेज to earn points. Once you earn enough points, once you've accumulated those, you can tap on the rewards icon in game to claim the corresponding. You can participate in that event solo or team up with other players. Both ways is absolutely okay, and teaming up could help Last you game get कितना that खराब reward बेचारा even one man easier. खेलेगा. There's also another reward Most here for annoying. everyone at home. PMWI ये guns week get वाला. benefits through from the 4th Solo खेलना of पड़ेगा August through to the भाई ये 13th देख of देख August. देख It's देख 50% of Oh, PMWI भाई क्या packs. knock दिया ये. Get a set straight away and Body 5 shot chances दिया to draw but the PMWI नहीं. treasure. Okay, head बॉडी से नॉक head नहीं हो looks सकता so good वो. on screen. वेस्ट नहीं पहना होगा ना. But still, aren't gonna हाँ jump in for बिना those वेस्ट के तो sales, भाई no, so अपर I नेक wouldn't. वेस्ट पे The मार. 14th हेड का मार्क नहीं आया of पता नहीं हेड भी हो August, सकता है. so but head tomorrow का that हेड starts, मारा है bro. until the 15th of September. There will be 16% rather of PMWI packs where you get 6 chances to draw PMWI treasure. भाई मॉर्फ पुश कर दी तो फैल्कन में. And from 4th of August all the way through to the 13th, which is Today. ending soon. All users मुझे and भी regions आंसर of करो top भाई 30 बताओ teams with a बताओ chance to बीजेएमआई win a चल prize रहा with है a या सर्वर maximum डेड one है. award per बीजेएमआई user. चल तो रहा है. And you know, talking about बट अपडेट getting ही नहीं things है. done, कब तक चलेगा celebrating, पता you नहीं. know, if you tune into the PMWI live stream and we reach 100 million live watching, then everyone पैनल will में get कौन items है in the पैनल में 2022 कौन से PMWI पैनल में Lucky नहीं तो Crate. That is अपने also पैनल के a बात maximum of करते 1 award per user. Some panel discussion is going Panel on, man. discussion man. PMWI watch अच्छा ये together पैनल area डिस्कशन है every क्या? day. So from the 11th ऐसा है क्या? onwards for OPS more players of information. community. पैनल Looking the back at the game, we Slayer come bold with Slayer Vampire Gauna Old Pauna soul S players. Gauna Pauna Korean S Primos. है. Pauna yes RonaK है. Anything too fancy Yes here, और especially in last VSG game, Sangwan. and honestly, I don't VSG blame them. Sangwan. This is the Damn. smart thing to do. I am ES RonaK bro. Assault ES esports RonaK down towards Milton and Tower. NSOS. A drop that Yeah, they're very and familiar NSOS. with. Back to back, Jord they'll move NSOS, the slightly Clash across Master. from Milton. And it's Regans who actually moved down towards that shelter area. Noob Stalker. Just taking up a little bit Octovis. room on the southern एक side. टाइम पे Octovis नाम रखा था Progressing इसने. quite quickly. Some blue here. color thumbnail. Yes. TJB did strike out towards that North Georgia position. No teams in अरे टोक दिया. very close conflict right now, which is really what we're looking for. Oh, Wildcats bridge fight. potentially coming into a scrap, a scramble, a scrabble for bridge control. भाई, दिख गया उसको गाड़ी. कौन सी गाड़ी दिखी उसको भाई? ऊपर ऊपर. Island. ऊपर Ridge तो पे. गाड़ी नहीं लगाई. अरे देखना यूएसजी वाला स्पॉट हो गया उसको एक्शन को. अच्छा यूएसजी वाला स्पॉट हो गया. यूएसजी वालों को ये स्पॉट नहीं हुआ होगा मैं ये बोल रहा हाँ. हूँ. Moving very, very close, like you said, John. एक गाड़ी नीचे रखी है. आ रहा है घूम के नीचे आ रहा है. वो नीचे आके दिख के आ रहा है. बट वो लोग को पता रहेगा एसटी Playing रहेगी pretty यहाँ slow. I think they पर. kind of भाई क्या लैग to भाई पीसी अपग्रेड with करना पड़ेगा. ओएस पैसा Circle भेजना being यार. so much towards the ये east. This is one of the few खुद times that Wildcats टाइम were से team both पेनल्टी teams वाला crossing यूज way कर with रहा. benefit. Stalwart, हाँ also भाई looks एल में like ज़्यादा getting पैसे close मिल to रहे the हैं east. या फिर आर में ज़्यादा है. We haven't seen really any bridge अरे camps भाई. up until now. Back-to-back tries. एफ हो Takes गया some sort ब्रो. of भाई. towards Red Atom dot लगी होती है esports, M4 very पे. close to L तो हो में गया. Power and Milter. एल Looking at where this circle is, I mean, you've got भाई to मैं भी imagine that चर्बी Milter बहुत is है. gonna be आऊंगा a मैं strong मारने को. position, हाँ to इन be लोग तो holding बॉटम में around चले ना भी क्या ही करेंगे. in these coming minutes. So getting that claim early आगे टीम है could बैक टू prove बैक to be यूएस. good, or could prove to be a downfall if a lot of teams decide the same, right? If they decide everybody wants to go in there, उस टाइम में everybody तुम wants भी a ऐसे piece of that टाइमिंग pie, करते थे it कुछ could be टाइम just पहले too much भाई. pressure to bear. तो and भाई nobody यूएस आना becomes पड़ेगा मेरे को a खेलने के लिए. winner जा chicken जा wing जा from जल्दी that जा भाग region. इधर से चल भाग. Just उनको have to जरूरत है wait and मेरी भाई see, यूएस Blank. वालों को. That's the beauty of it. Play That's the like me. beauty of PUBG बुलाया Mobile. तेरे को वो लोग. And we do love PUBG Mobile. Hell yeah. 100%. Fair few teams out inside of the blue at the 52 moment. और सोल Vampire में कौन Esports ऊपर is आएगा gonna be बताओ भाई. एक overtaken, पॉइंट का especially going डिफरेंस down है. towards Primos Quarry Soul. and Yes, Ferry sir. Pier. They are now starting to make their move, and make their move they will have to. Soul It's not one of those forever. games where they can just sit pretty and wait kill this ले out लिया and take the streaming. first place prize. Flower C looks over towards Yusuf. ये Not क्या a good था? भाई start बच for गया Falcons, but फैल्कन luckily वाला. they do get that यार player नसीब out है of भाई. dodge. Look how damaged he is. Going into this game with 3 players would have been horrendous. क्या हाल Look है?
be able to make it out alive. But like I said, you know, Vampire Esports, they cannot sit on their laurels here. Only 2 points behind them is Team Falcons. So they will need to put up some points, or at least Falcons will need to go down early in this game, which I'm sure everyone here in Saudi Arabia does not want. No, certainly not. And you've got to remember that chase for 5th place spot as well. भाई ST के लिए तो क्या difficult हो जाएगा ये फैन शो राइट शिफ्ट ही होगा बॉक्स देख फुल भाई कैंप लगाई है
नहीं I feel कैंप like they नहीं would है, वो घर deserve में that top बैठे हैं, 5 एसटी का spot, पूरा but they खाली है, have राइट to से be निकल जाएंगे। able to come through. That's a brutal shift, Blank. That's a lot of water. That's a lot. This actually is ऊपर RSG साइड पे भी जा सकता है, पता है ये स्नाइपर टावर ऊपर। नहीं ये B2B के थोड़ा ऊपर जाएगा, chill out. And take this The game max a वाला little खींच bit गया ना more तो। slow, particularly with the circle heading out down towards them. So there's no urgency for them. So they can अगर ये गेम चिकन तो आज रोना भाई के 500 पक्के। वाह भाई भाई, बढ़िया बढ़िया। RSG का बंदा देखा, drives on past, बोल but ऐसा उड़ता हो गया in that direction. क्या ड्राइव कर रहा है ब्रो? खुद उसको बोल रहा क्या चुप ड्राइवर जाके खुद भी ठोक दिया। Teams going back to back and stalwart. It's far from ideal. Bad for business. Box versus B2B. We'll get Stalwart भी आ जानी चाहिए पीछे से। अगर उनको a little bit too आ far गई ST आ गई। recouping that one. You'll pardon the pun. Stalwart going to push in from the अरे knock किया box वाले को। Shots over towards Bensu. The firing line is established. Box. भाई कैसे लेटे हैं तीनों भाई, चौथा भी आया। A couple of these knocks and a couple of these eliminations as well. In fact, actually one knock over towards back to back and a couple of knocks over towards box. So this is a great time to come in and try and third party. Top even throwing the nade out the vehicle. Goodness me, the moving grenade. पूरा red zone बना देंगे उधर। Started and underway. They want to finish it quick. तो उनको पड़ी टॉप Can take that aggression. अबे kill चला गया भाई इसका है। At the same time as well. They could prove to be useful. लोड़े लग गया ठीक है, लोड़े लग गया। SouL rocked up on the back as well. Goodness me, everybody's moving along the south coast. And SouL will take heavy fire. Pika trying to suppress this line as Top takes a tumble. This is not good right now. Stalwart down to 3 players. They're taking this game very, very fast. मार दो भाई and swift with it because they know they need those eliminations, but it's SouL who comes in right at a very crucial moment for STE. You can see Vampire Esports just behind them right now. Everyone on this coastal line. TJB का अलग ही चालू है जोन के बाद। Team SouL spraying भाई down किल्ले अक्षत किल्ले। They have just had such a terrible time on this Kill लो भाई, I think kill लो। about 4 teams have been shooting at them. Come on, one more, एक ये भी kill मिल जा। अरे बढ़िया They are just not चल। gonna survive this one out. Kill ले लिए It's दोनों। unfortunate OP end to their last game, although they're not completely out just now. 52 के ऊपर आ गए। 10th place at the start of this game. हाँ। To get much more done with just I believe break क्या left बात for बढ़िया the भाई। squad. Yeah, there इसके he is. ऊपर तो आने He's था। full HP. इधर डिस्कशन में 1 पॉइंट। Goblin has been spotted. Action. Contending for that MVP spot as Yeah, well. bhai. Remember, there's money on the line here as well for Action alone. gaming So or even if what? Stalwart don't have the best of performances, if Action can get a बस couple of मार रहा है links bro, on, get a lot of damage तगड़े in, would you get it? ट्रेनिंग में जो करते हैं ना वो कर रहे हैं आप। Cheeky peek coming through from Action. Action बहुत This is अच्छा one मारता है of पता our है। top ओ भाई fraggers. ये ग्रेनेड। Vampire Esports, you can see them on the map right now. बे Starting to NGX तो rotate आधा टाइम over जोन the के top बाहर ही side of रहती है। all of these teams. Their shots ringing out, and they just want to find a के ऊपर वाला ही position. जोन है। SouL का एक knock हुआ। Too much वो fire. नेट से I guess knock हुआ Stop होगा। just towards the north side of Milter, waiting हाँ, for knock this हुआ। next circle to pop. हाँ, देखना। Now down 1. Oh my अरे goodness. भाई क्या जोन This बना है। is a circle to end the PMWI on. I mean, it's certainly a circle, that is for sure. Aton पानी में Esports घुस जाओ, मजाक USG नहीं कर both रहा। pretty happy भाई with this. They Falcon were के लिए backed भी into a corner, tough but now है it ये looks like game, they're backed बहुत। into the last नहीं available नहीं space एंट्री तो on the उनको map. ऊपर ले लेंगे। आई थिंक शेल्टर के ऊपर Okay, जाना all चाहिए right. उनको। फोर राइवल को Circles मारना चाहिए पहले is- उनको, is मतलब currently ऑफ कोर्स water पहले right पीछे now. I feel like it's मार a के good फिर ही guess आगे at जाना। 60% मेरे ख्याल से तो at VP least. This peninsula मैं तो VP far बोलूंगा भाई, from VP कहाँ kind. पहुंचे ये देख लो Can the तुम। Wildcats get across as well? अरे Of इसकी course, बग्गी they're पलट still in गई। that race for 5th place. करके मारेगा क्या? मार दिया उसको। Down one Kia, rocking on Bhai. gas. SouL gets One tossed down out of भी the है ना? vehicle on the rotate. They lose one here. Doubtful that they'll be able to get Stone back up again. We'll see if नहीं लिया there's any अलग-अलग। camaraderie here for the Vampire अबे ठोक Esports दिया team फिर। to get गाली them दे रहा back है, up, bench back in action as a full 4. देख DWG का फाइट हो गया वैम्पायर का। Staying alive though. दो They knock are कर दिए भाई। answering and answering in Oh, force. Vampire Esports finds गाड़ी क्यों नहीं फोड़ा? Uni. And they are absolutely furious that they've lost their teammate there. One but across the way for down one Kia. With Goblin 2 ने players next को remaining now. कहाँ हो गए They're SouL in की 4th fight? place and with good performances from other teams are at risk of dropping from those top 5 as well.
इनका स्टोन्ड भाई बेचारा वहां पर नॉक हो रखा है। नॉक पड़ा है बट रिवाइव हो सकता है। Central, but they've only made it in with Omba and Forest now. At this point in time, you know, they've बोले एक मैच चलेगा 3 मैन खेलेंगे जोन के सेंटर में दे सकते बट रिवाइव तेरे को पता है वो एकदम गड्ढे में मिल जाएगा भाई। हाँ मिल जाएगा भाई। मतलब उन लोग ये वेजर करने तैयार है 3 मैन खेलने को भाई। अब 3 मैन चेंज कर सकते हैं इसलिए ना वही बात है बस। टॉप में सेंटर ऑफ द जोन है कभी घर पे कोई स्लैम भी नहीं आएगा। Change. 4 rivals swinging in past the back of Milton अंदर Power आ सकता है उसे उन पे along that cliff अबे side. अंदर स्लैम वो घर पे आया कहां से पड़ेगी for them उनको specifically. ओह अरे Really treacherous. अरे मॉल लोड लग गया इसके Box बॉक्स Gaming's last player break against Stalwart with 3. It's not going to last long. Action picks up another one in the race for MVP. Oh, उसका to hold this. Pika knows that a nade gets thrown out, sees a little underhand as देख 4 राइवल हो गया ना फैल्कन पे। underhanded play. कर दिया भाई। वो पत्थर वाला ही नॉक हुआ है जो रुका था ना। ओपन में रुका था। Falcons right on the northeastern edge. One player on the floor. It's Damar here. दोनों one player down है Most ना likely अभी। will lose him. Appy searching the smoke for that player. बट अभी तक उसका किल फिनिश हुआ क्या? किल फीड में को दिखा नहीं। On the drive. दो मिनट हो गया फिनिश कर दिया फिनिश। Just stay safe in. It's those 2 points they're behind him. अबे वैम्पायर ने बचा लिया अपना प्लेयर। बचाना था ब्रो, बचाना ही था उसको, वो सेफ था बंदा ब्रो। Falcons kind of let that one happen, allowed 4 rivals to descend from their cliffside position and now are potentially on the back foot in their race to try and challenge Vampire Esports for the top spot. ऊपर आएगा तो ऊपर आएगा अभी पूरा ऊपर आएगा। 4 हाउस है जोन में भाई। 4 हाउस वीपी वाला भाई सोल और एनजेक्स का फाइट होगा 4 हाउस के वहां पर। सोल भी वहीं जाएगी, सोल भी वहीं जाएगी। एनजेक्स मेरे पहुंच जाएगी, बात ये है। नहीं लोग नीचे गए, नीचे है। It does not matter. They were in quarry, Primos. Now they're in the dead central of the circle now, despite even the incredible hardships that have kept coming out here. Now Falcons smokes are down. Falcon के लिए तो बहुत difficult है भाई, नहीं जा सकते। And hopefully find their way into this circle, but USG are all looking over towards them. Donuts USG taking those pot shots, but they can swing around the north side here. Zone 4, so the zone won't be super hardcore right now, but if they get knocked outside too far, they will not be able to get that res. Making it to these buildings is really, really good news, but they're going to really expend a lot of their vehicle utility. Enigma Galaxy looking on down towards them. They see Morph off in the distance. Falcons pretty close by, if not a little bit closer to them. On the other side, action. Takes a couple of hits from Team SouL. Pika just sending it in, has to get immediately out. But Pika का kill ले ले, Pika का kill ले ले, Pika का kill ले ले. He was looking for the Wizard Tower. Wasn't able to find it. Boom. Nevada Kadavra kill switch to find the rest of the team. The teams that were the downfall of Box Gaming now duking it out with one another, back-to-back, Stalwart and SouL. All in a line, still on that western side. Pushing in from Milta. They're on that eastern side. At the moment, Stalwart with the worst of it, crunched in the middle. That's not a sandwich you want to be the filling of. Well, they are suffering. You know, that's that thick bread. It's like soda bread. It's some hefty, hefty stuff. It is difficult to muscle through, but I'm not sure if even क्या जोन भी है इन पे फुल क्रेजी जोन है भाई। Vampire Esports though ये रेजिस्ट भी है ब्रो, राइट में जे पीछे में बंदे हैं वहां से उनको आ सकते हैं। बहुत बढ़िया जोन है इनके पास। बढ़िया खेल सकते हैं भाई, यहां से बहुत quite decent here। ये फ्री के जाएंगे पता है, स्मोक हटते मरेंगे बंदे, स्मोक हटते मरेंगे बंदे पूरे could be all that matters if one of them takes a tumble early on. You do not want to be taking massive risks here with the score so close. You know you just need to outlast the other team. Sure, there's the possibility that Vampire Esports get a 500 million kill game, right? Elimination game. But Team Falcons, do they take that bet? Probably not. Stalwart. Boy. 178 the start of this game. Trying to pick up as many points as they can to solidify that third place position that they started the game. Take the nade. बहुत difficult है यहाँ से chicken. Action with a nade on the top. Sorry, I've just noticed something. The Vampire Esports currently on 4 players. So Stone actually was able to just crawl his way all the way across the map and get picked back up again. I mean, ये भी बच जाएगा इसका, ये भी बच जाएगा. Player. Just turned into a bat and flew on over. You know, his wing was a bit wounded, but spooky. It was absolutely fine for them.
Vampire though, goodness me, no God, man left भाई behind. Falcon का आइजल गॉड है। हाँ ये तो बढ़िया है भाई। Falcon का बस तो उनके पास ले गया। It is their run. It is their chance. Stalwart eliminated now. So third place. Omega को kill मिला. Grabs if one of those SouL के इधर Omega तो कहाँ से खा गया? Only on 2 players or Nick McGalaxy. अभी rev हो जाएगा A वैसे little तो bit more likely to be able to take that. Could jump up and maybe steal that position away. But with both of those teams still alive, it's the Wildcats chase. Slam क्यों करेंगे? Gatekeep करेंगे भाई. Slam क्यों करेंगे? Right now, they're taking So shots over towards back to back. Vampire Esports, Tani was saying that, you know, they're positionally heavy base. B2B से बचना है बस. इनका पुश डिफेंड करना है B2B का बस. Players to make it happen as well. And even ये Falcon वाले अगर कुछ कर दिए ये गेम में पागल हो जाऊंगा ब्रो. नहीं पहुंच ये नहीं कर सकते भाई. ये गेम VP ले गई. To hit this compound in this specific spot, knowing the circle is going to have to come back up towards them. हाँ यहाँ से तो लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट है बस. तीन लोग को क्लियर करना है ब्रो. अभी TJ भी उसके आगे 2 टीम और है. अरे Omega फिर no. Really rough terrain and so many teams will be sweeping. Omega I guess पीछे है ना. Omega वो साइड से. अरे रोटा के लिए जा रहे हैं. Seeing the pickup mechanic in action. Pickup mechanic. The 2-letter synergy. Working out at the moment. Pick up Ooh, Daku, if he gets the angle, he's a free broadside. Gets another knock. Looks for the fuck, bro. Pick up करके open में लेकर आया बेचारे को. Sorry, the only remaining player of 52 looking for the challenge, but can't get it done. RSG staying alive under pressure. This is अबे पूरा गंदा हक दिया 52 का गेम. This chase for fifth. मतलब गेम मतलब यहाँ पर तो मार देते थे RSG को. It's not the best position in the world, but they've only got Umber and Forest away aside चल SouL 5 किल 4 मैन लाइव है. बस मेरे को देखना बाकी दोनों जोन में पहुंचे कि नहीं. The entirety of USG Falcons though, TJB versus them. Never alone hits the deck, takes a fair amount of bullets. Yusuf, look at a strikeout. No way that you get that teammate back up. Powerful, hot on the heels. The smoke cover is there. TJB, look at a cut down this crossing, but their attention is turned as well away to Nick McGalaxy. Yusuf on the floor, spotted. Powerful, could be taken here, and it could be all over. For Falcons on their race, out in the blue, and they're gone. And that is it. The Falcons with one hell of a run here in the PMWI. It was VP का ही बंदा kill लिया उसका. I think it was one of the players from Vampire Esports. अब celebrate कर रहे होंगे. Yeah, you got that final knock. You got that final point. The blue zone claimed the final victim. And Vampire Esports looking set. SouL का पोजी दिखा दो यार. This one home, looking to try and stay at that top. हाँ वो तो पता है. NGX को मारना है अभी next. It's going to be so difficult. Come on यार चिकन के तो एंड कर दे मजा. भाई बहुत मजा आएगा चिकन मिल जाए ना. ओ SouL अपने में भाई बस NGX को मारने का. Could be their last hurrah here. भाई अगर NGX में trying to make it happen, but it's still looking over towards Anthony Sports. Trying to hit some of those shots. NGX का एक ही प्लेयर बचा है बे लास्ट. Towards that western side अब भाई तो बोल रहा है अगर लास्ट बंदा टॉप 3 में आ जाता है वो एक दो टीम से ऊपर आ जाएगी रैंक्स में. नहीं ये मार देंगे. The circle moving out westward, right? एक बंदा रखता अपन 52 से ऊपर. So now the main challenge on the cards is that race. भाई ये गेम चिकन ले लिया काफी अच्छा ऊपर. हाँ. 2-3 रैंक का पहुंचा. Who can hold on to it? RSG 100 plus point हो जाने चाहिए इनके मजा आ जाएगा. Eliminations and points total rather. 100 plus on this game. So अगर kills अच्छे निकाल लिए अभी तो. Jump on up. Nick McGalaxy. SouL पे TJ में only on 2 eliminations with 1 player left as well. Lucas picks it up there to the 4 rivals. Well, they've done the work already. Nades towards the back though, going to do plenty more. चल Goblin ने Morph को knock किया. Left down to 1, the push comes through. They'll spot it out the open. एक ही बचा है Morph का. Nice one, VP खेल रही है भाई. VP बहुत बढ़िया खेली bro ये टूर्नामेंट. 11 किल है जो. Fluke though, if we know Vampire Esports, चल कोई मार दिया. अरे भाई. TJB off in the distance here. तीनों पहले स्मोक पे और अब खेलेंगे. Tink Skirt takes a heavy bit of damage. TJ first slinking in from the background. नेड़ा. Cross his way in. If Vampire Esports could end the day with a chicken dinner, it's a second, a first, a fourth, and let's go SouL, let's go. Another chicken dinner on the day. It will be the most incredible bump up of points to finish this tournament. PMWI, Aton goes down, and Vampire's taking everyone on. Unfortunately, Ravenclaw hits the floor.
sorted out himself. It's Ravenclaw to take the knee, but back into the smoke. Vampire still with 11 eliminations. They started on Erangel with a strong chicken dinner. Yeah, it would be such providence to take this one home as well, but they still have to fight through the rest of this lobby. Make that another elimination point to rack on up. Team SouL though still with a central position. Nades back in. Senatexa is finish bhi kar diya usko. gonna go down, and the forces holding them out are going to wane, but it's only Schweppes now left standing for the top squad. Nahi. Goes for res on. Chalo, बढ़िया. Goblin भी res हो जाएगा. Fast. Aton Esports now have different things to worry about. It's back to back. Who just nail them down? Bhai SouL chicken, let's go. Go boys, let's go easy. 4 men strong है. Esports will get all 3 players back up. अबे ये NGX वाले को मार दे बस. NGX वाले को मार देंगे. They are pinned that Molotov position really solid to stop their push over towards the Vampire Esports position. ये दोनों की fight होगी ना start to win their way in, but SouL have 4 players alive. This zone team from India who have not had the best of times would love to close it out here strong. भाई मजा आ जाएगा. But it's Vampire Esports. You just cannot take your eyes off at this current moment. Back to back, they fought against them on Miramar. पूरा zone है वे अपने पे ही है, बाकी कोई भी zone में नहीं है. Yeah, looking to toss some nades over the top. Nick McGarry. दो दफे नहीं पड़नी चाहिए और तो कोई दिक्कत This नहीं है. nade could prove absolutely disastrous. Doesn't hit anyone luckily, but they might have seen the arc and stoned. Just slowly strafes over. Luckily, he'll live to see another day there. A little bit of damage from Ravenclaw. क्या godly खेल रहे बंदे random net पे के मार दे रहे भाई. Stoned is found as back-to-back ride on in. भाई इनका fight जल्दी हो जाए. Polo चल इनका sends fight out. होगा. Schweppes wants to find the shots but takes a lot of damage. Vampire Esports might have their run cut down here, but they have done enough. Only Ravenclaw left. 4v3. चलो भाई, let's go. Chicken है अपना, chicken है. But it is now back-to-back. मजा आ जाएगा भाई. Going head-to-head. Go on, Goblin. 4 players alive. Yeah, bench. अबे. Find the final. चल SouL का ही चिकन है ना, बट SouL का ही चिकन है ना भाई. यस चलेगा भाई. अच्छा खेले लास्ट मैच, बढ़िया खेले भाई. मैंने बोला लास्ट मैच चिकन लेंगे भाई, मजा आ जाएगा. मजा आ गया. इंडिया का ट्रेडिशन है भाई ये. भाई लास्ट मैच चिकन इंडिया में होता ही है ब्रो. पता नहीं क्यों हर बार देखा मैंने, हर बार. जी भाई डैम ब्रो डैम. बिकॉज़ लास्ट गेम हम उस तरीके से खेलते हैं जब हमारा नेचुरल गेम होता है. क्योंकि हमको पता होता है we have nothing to lose. Yes bro. And that's how you should play पूरा tournament, that you have nothing to lose. Come here to win. Crazy bro. बट खुशी हो गई भाई, खुशी हो गई. SouL ने मस्त चिकन निकाला लास्ट मैच. 10-11 किल चिकन निकाला. मजा आ गया. 12-13 किल थे. 12 किल चिकन है. तेरे कितने किल थे? ज्यादा ही थे, 12-13. इनके 3 किल भी लास्ट में मिले ना, 10. भाई वीपी ने ट्रॉफी उठा ली भाई. बंदों ने फर्स्ट डे इतना अच्छा खेला, सेकंड डे पूरा चोक किया. 10 फिनिश कर गई ब्रो. हाँ ये SouL क्या हो गई? टॉप 10 10th 10th आ गई पक्का. गेमिंग 102 पे थी, #10 और वीवो वाले 109 पे थे. SouL बिना पॉइंट्स के ऐड के 82 पे थी. 82 पे आई थिंक ये 7 किल जोड़ के कि 7 किल नहीं 7 किल जोड़ के नहीं थे वो लोग. 82 पे 78 थे कुछ. हाँ तो फिर 82 पे है अभी और 7 किल है और चिकन अभी और भी 3-4 किल ऐड भी होंगे और चिकन भी आएगा. मतलब अगर कितने किल थे इनके 12 पकड़ना, 12 पकड़. यस 12 पकड़ना तो 27 पॉइंट्स आए. तो 27 पॉइंट्स में इन लोग 82 प्लस कितना हो गया 92 102 109 हो गए. तो 9th या तो 10th होंगे. चल भाई टॉप 10 क्रेजी अच्छा खेले हैं. लाइफ है लास्ट मैच. अरे मेरी स्ट्रीम बंद हो गई यार. ट्रॉफी है भाई. क्या ट्रॉफी है भाई. गाइस जो इनकी स्ट्रीम पे रियली सॉरी, मेरी स्ट्रीम बंद हो गई. अपने आप बंद हो गई मेरी स्ट्रीम. नाइस. ओ भाई ट्रॉफी देख. हां कसम क्या ट्रॉफी है भाई, क्या लग रही है. और ये स्टोन बंदा कब से ट्राई कर रहा है ब्रो. हाँ स्टोन. यस कितने टाइम से ट्राई कर रहा है, उसको कभी इतना चाहिए.
Vampire Esports. उसने वो रैंगल वाले मैच में भी क्या खेला था बे। World Invitational Champions here at भारी ये ट्रॉफी देख के समझ आ रहा है ब्रो। ओ भाई देख दो ओ भाई कितनी भारी है ब्रो। गले मिल के उठाना पड़ रहा है उसको। We are mad right now because we are just living in a dream. Because before we come here, we think, okay, we are the champion, but now we get it. So that's why it's a really incredible moment right now for our team. Thank you. فريق فامباير اي سبورت قدروا يحصلون على البطوله. حبينا نسالهم السؤال الاول ايش شعورهم بعد الفوز، وكان شعورهم انه احنا الان جالسين نعيش الحلم حقنا، وهذا الشيء اللي احنا كنا نتمناه من اول ما جينا البطوله، والحلم هذا صار واقع واخيرا. Well, you came into this tournament incredibly aggressive play style. चल भाई मेरे को तो पोज ही देखना है भाई अपना क्या पोज है। Opening the tournament with 24 elimination chicken dinner. Was that the plan the whole time? Just aggressive, aggressive. अरे गगन क्या हाल है? कांग्रेस भाई तेरे घर के लिए।ก็ทีมพวกผมเป็นทีมไฟอยู่แล้วผมเป็นทีมที่เล่นขอบวงครับผมไม่ได้ห่วงโพซิชั่นเยอะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หน้าเกมแล้วก็วงแต่ละวงเลย So our team in the play style we play like aggressive all the all time because my player have the confidence and the shooting skill. So we are playing with the circle very slow and looking to position to fight. And also we are vampire. We are very hungry the blood. فريق فامباير اي سبورت كان يتكلم عن طريقه البلاي ستايل حقته وكيف قدروا انه يفوز وكيف كانت خطته داخل اللعبه. يقول تركيزنا احنا نلعب اجريسيف لانه احنا واثقين من انفسنا في ادائنا. زياده على كذا في اي شيء نركز عليه هو الايم حقنا والشوتنج حقنا دائما يكون في محله، وهذا الشيء اللي احنا ركزنا عليه وهذا الشيء اللي خلانا نفوز بالبطوله. Well, I have to ask you one final question before I let you go and before I let you celebrate with the rest of your team. Is there anything that you would like to say to your fans who've been supporting you throughout this entire year? हाँ भाई लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है गाइस। लाइक और सब्सक्राइब कर दो फटाफट। लाइक एंड सब्सक्राइब। भाई मजा तो आ गया तुम्हारे भाई ने बोला था लास्ट में चिकन आ गया भाई। พวกผมได้เป็นแชมป์ของ PMWI लक तो है भाई लक तो है देख रहे हो बैठे बैठे यहाँ से लक पहुँचा दिया अपन ने 100% for this tournament and नहीं we बट are glad to become a champion. अच्छा भी खेले भाई thank you और जोन ने भी साथ दे दिया सही for warming welcome us and also support all the tournament. Thank you so much. Thank you so much. And thank you for the fan. Hope you enjoy this moment. Thank you. You guys have been absolutely incredible. But yes, we confirm you are the winners of the lion's share of $2 million. The PMWI Gamers 8 trophy is yours. Congratulations, everyone in the Gamers 8 arena. Please give it up one more time for Vampire Thank you so much. Thank you so much. You guys have been absolutely incredible. We're going to hand back over to the analyst desk where they can break everything down and round out the tournament. يعطيكم العافيه اعزائي المشاهدين والحضور. احنا نتوجه الان لاستديو التحليل نتكلم عن الشيء الرهيب اللي شفناه قبل شوي وكيف قدروا فريق فامباير اي سبورتس انهم ياخذون البطوله بالكامل. على طول مع الاستديو التحليلي. Good to see Sertania there with this team as well after we had done. You can see what it means to them. They're out of words, they're out of breath. They're so excited to take home that $500,000, not to mention that spot over in the after party showdown. Last game always reserved for India. Down here that the post show brought to you by VOV. What a run feeling out of Empire Esports. Day 1 looked fantastic. Day 2 looked grim, but they didn't let it get to them. They bounced back hard in Day 3. I mean, they had a game plan, right? In this lobby, they knew exactly what their game plan was. Getting good positions when we're in a good position. The eliminations, they come on their own. They played to that down to a T, and it clearly worked out. They got first place, right? It's been a spectacular run from them. I mean, from the very word go all the way to this last match as well. I think that when you look at their performance across, as an average even across all these 3 days, they have stood out above the rest here. So absolutely spectacular. I've just finished doing a tournament in Thailand as well. The fans are going to be going absolutely radio for everything that they've just been able to accomplish here. They should be very, very proud of this team. I mean, on that note, Seven Worlds Gaming was actually watching the finals live in the arena, and he told us that when Falcon Esports got knocked out, the entire arena was silent, except for Sertani, who was screaming because he knew with them being eliminated, they got themselves $500,000 and they got themselves the title. Let's actually take a look at the overall standings from bottom to top here so you get an idea of where all the other teams did place. So 11th Esports rounding things out with 7 points, 18th place team coming in from Pakistan. But hey,
A lot of experience for them. They still get a decent amount of money. Let's be perfectly clear about this one. But they get a lot of experience. They can take for themselves nice back-to-back nice instead. अच्छा They चिकन can ले take लिया it लास्ट and में really get बढ़िया themselves भाई into देखा 100 पॉइंट क्रॉस कर That was दिए it. Team SouL इसलिए got that यार last chicken बोला ना dinner right there, huge for the Hindi fans, and also able to push himself up in 11th position. That's a huge prize for increase they just got with that final game. So, man, Team SouL feeling good, and can't wait to see them getting more and more integrated. 17 to 11 ठीक है भाई The nice game kind of jump came to them, but I mean it was a strong holdout, and I love the way in which they pushed out towards the end to make sure back-to-back had absolutely no room to play. They really strangleholded that position and took it nicely. अबे प्लेसमेंट पॉइंट्स नहीं है अपने पता है kills फिर भी ठीक है 64 निकाले बे top 5, right? Because obviously we know who our winner is, and we're gonna have Damwon Kia. Enigma Galaxy has made their way through. Enigma Galaxy 4th आ गई भाई SouL RSG भाई ड्रॉप हो गई बहुत Let's give them a नीचे little bit of credit. They started the day off in last place. बहुत खराब दिन गया ना इनका लास्ट Really good performance today, and if they were able to maintain that performance in the prior days, we potentially could have seen them top 5. Yeah, unfortunately, like 2 days where they tended to struggle. Really well played SouL, well played. Still good comeback towards the end of the tournament as a whole, but man, the fact that we can think now we can have 3 local teams in the 64 eliminations, yes bro. Yeah, just to touch on back-to-back as well here for a moment. The day one, I actually asked you guys, where are they at the end of the day? Because quite honestly, they look non-existent. Kills तो है भाई, kills तो लिए लॉन्डो ने भाई. They really actually came to play here in this last day, so kudos to them. Yeah, J7 as well. We saw quite a few plays out of him and J-Way. But as you look up into the leaderboards, RSG unfortunately after सोचना Slayer performance at day 2, 38 में से अब भी 15 अपने को मिले प्लेसमेंट पॉइंट बाकी वहाँ कसम and Vampire Esports will be participating next week and the after party show. Welcome Chesty. Hard luck, GG's to them. It feels like a mini PMGC the after party. चलो भाई GG फाइनली बढ़िया हो रहा आज तो खेलते कुछ और खेलेगा तो ठीक है ओके भाई ओके बाय मिलते हैं चल बाय ब्रो चलो गाइस इट्स टाइम टू रैप अप वेल प्लेड टीम सोल बढ़िया चिकन निकाले आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम जीजीस तुम्हारा भाई बोला था चिकन निकालेगा चिकन आ गया लेट्स गो चलो बढ़िया लाज रख ली भाई लोग ने अपनी नेवर माइंड गाइस अगर गेम का थोड़ा सही सीन हो जाए तो इंटरनेशनल स्टेज पे भी हम लोग आ सकते हैं ऊपर बट देन अभी हमारा ऊपर नीचे ऐसा डामो ऐसा होता है फिर ऐसा हो जाता है तो हमारा को फिर चढ़ने को थोड़ा टाइम लगता है समझ रहे हो अभी भी सेम सिनेरियो है गेम बैन का सीन चालू है पता नहीं क्या होगा पता ही नहीं मुझे भी बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड एनीवेज वेल प्लेड सोल बढ़िया भाई बढ़िया 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 भाई लोग चलो गाइस इट्स टाइम टू टर्न ऑफ द स्ट्रीम मिलेंगे कल रात में आई गेस हाँ कल रात को क्लासिक स्ट्रीम करेंगे अराउंड 7-8 बजे के आसपास हम लोग खेलेंगे मैच लेयर ओवेस सांगवान जो भी अवेलेबल होगा तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस जो भी आए हैं मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखो तुम्हारे भाई को अब से तुम्हारा भाई रोज स्ट्रीम करेगा रेगुलर और आज के लिए इतना ही बस अब अगले वॉच पार्टी में धमाका होगा लव यू रौनक ओवेस अरे थैंक यू रियोरिस्ट भाई थैंक्स अ लॉट फॉर द 100 एंड दैट लवली मैसेज थैंक यू मेरे भाई थैंक्स अ लॉट चलो guys it's time to turn off the stream bye bye take care stay safe and have a nice Saturday night bye bye guys good night have fun tata